area while upholding the legacy of this great system. We are also honored to have with us today our esteemed guest of honor, Dr. Subna Rai ji, who currently serves as the Scientist G and Director of the ICMR National Institute of Traditional Medicine. Dr. Rai is a microbiologist by training, working as the intersection of multidisciplinary health sciences. His work connects basic research with applied sciences, laboratory studies with field of epidemiology, traditional knowledge with informatics and big data biology, and integrate IU system with modern sciences. Dr. Rai played a key role during the formative year of ICMR Regional Medical Research Center in Belgavi, facilitating it upgrade the National Institute of Traditional Medicine. Despite initial challenges, he established several laboratories in vacant staff quarters, expanding research discipline. He was instrumental in designing the blueprint for the research building and infrastructure. His scientific contributions are noteworthy, including the identification of the potential traditional medicinal lead to the treatment of SARS-CoV-2 and the discovery of an elite clone of Gymnema sylvester, a medicinal plant, is widely used in the diabetes treatment. As we commence the seminar, support that you have been extending to us that inspires all of us to tirelessly pursue excellence and motivates us to reach our highest potential. Next, it's a great honor to introduce Dr. Subarna Roy, sir, Director and Scientist G, ICMR, National Institute of Traditional Medicine, Belgavi, to our audience. Dr. Subarna Roy is a renowned microbiologist and molecular epidemiologist who prefers to be seen as an ordinary citizen of India. He has made significant contributions to health research, bridging gaps and applied sciences in the field of epidemiology, traditional and modern medical practices. Sir has over 150 published papers with 5 patents to his name. Dr. Roy has mentored 14 PhD scholars. He notably helped to prevent infectious disease outbreaks during 2000 Rural Health Research Unit in Raichur and is working on another in North Goa. His accolades includes the Major General Sahib Singh Soke Award and SS Misra Memorial Award and Karnataka State Fellowship. Currently serves as an executive committee of ICMR Delhi. So please join me in welcoming our guest of honor, Dr. Subarna Roy, sir. Sir, kindly come for the address. A very good morning. Namaskar. Salam alaikum. Respected Director, Professor Syed Shah Alam sir, the chief guest of today's program, Dr. Wasimur Rahman sir, Professor Ansari, the nodal officer for this program, my friends and colleagues, the faculty of NIUM, the hospital staff, the students. Let me first tell that it is an honor for me to come and speak to you today, especially when we mark today as a part of the celebration of the Unani Day, which took place on the 11th of February this year. And I extend my greetings to you for these celebrations. Our institute, the one that I hail from, is one of the 27 institutes of the Indian Council of Medical Research, which comes under the Department of Health Research, Ministry of Health, Government of India. And among these 27 institutes, our institute is one that is mandated to work on the areas of traditional systems of medicine. And it was more than 30 years ago when this institute, at that time envisioned as a regional medical research center, was conceived to work on the leads that we have
from our Indian systems of medicine. At that time, even the Ministry of Ayush, the Department of Ayush was also not born. But unfortunately, nothing moved, and it remained only on papers. There was no staff, there was no building, only a few staff quarters were made. Then the Department of Ayush was created in the ministry. Subsequently, the Ministry of Ayush took its own position. But this institute remained just like that, but it was 30 years back. It was only since 2006-7 that the first staff was started to being transferred to Belgaum, not for doing the research, but it was mostly to meet audit objections. So that is how things started. We were only 2-3 scientists at that time. I came later. I came in 2009 from Port Blair. I was in Port Blair at that time. And then slowly we started working on the rich biodiversity that we have in these Western Ghats. And we concentrated more on the non-codified practices, the folk healers who are using these systems in communities, and tried to bring them into laboratory and see whether we could validate them following the reverse pharmacology approach. And then we got some hints and leads, and by virtue of the work that we did in the first 7, 8, 10 years, that in 2017 we were given the status of a national institute, and we started expanding our horizons. As an ICMR institute, we work in modern medicine because we are basically all people from the modern health sciences background. But we started working on the leads that we have from our indigenous systems of medicine. Of course, our thrust was more on the non-codified traditional practitioners and their medications that are used for various ailments. And of course, we started working with some of the Ayurvedic formulations as well through partnerships with the local KLE Ayurveda college that we have there. We also used to work with the state Ayush department. We started working with the Karnataka state government for the other health problems as well, other than the traditional medicine side. And slowly we made a journey, and in the last 3-4 years had been excellent for us, where we have got a state-of-the-art research building with all infrastructure. Some of the faculty from NIUM has visited us, and they have seen for themselves. And we are trying to build a team of very efficient researchers for taking the leads that we have in our traditional systems ahead. Last year, I'm happy that we actually established a OPD for Siddha medicine. So we expanded our foray from non-codified systems to Ayurveda to Siddha, and I'm extremely happy to be here today for signing off the MOU between NIUM and NITM. So this will be a feather in our cap to include now Unani medicine, and that is perhaps what the government also envisions for us. So the pluralistic health systems, and we have tremendous value in the medicines that we all have. The team that we have in our institute are from various backgrounds. We have people from the medical background, where we have community medicine people, we have MD in pharmacology, we have MD in community medicine, we have MD in microbiology. So basically the community medicine people, they will go to the field or to the hospitals and then see which are the kind of traditional medicines which seem to be effective for certain conditions for which we do not have a proper answer in allopathic systems, and then try to do some very quick assessment through questionnaires, mostly from both sides, the patient side and the practitioner side. And where we find there seems to be something very good, we generally take them into the field, into the laboratory part. While saying that, I forgot to mention, we have a social scientist as well. So he
takes care of the social aspects. So mostly some of the medications are used by tribal communities and very vulnerable groups. So we need to be very ethically and socially aware of these issues. So once we bring to the laboratory, then we do a battery of various kinds of laboratory work, including the ethnopharmacology. We have taxonomists, botanists who identify the plant correctly, vouchering of the specimens, they're stored, and then uh, the extractions are done. Then we do all the chemistry of it, the HPLC profiles and even separations and all if required, bioactivity guided fractionations. And then we do the safety studies in zebrafish models. My colleague, Dr. Banappa is here. He does that. We also have small animals where we do the safety studies. So once these are found to be safe, we do further workout with the immunological studies. We have a molecular biologist who does the molecular biology of it. We have people from immunology. We have people from microbiology. If they are infectious diseases, we have two MD microbiologists. So they do the laboratory part of these infectious diseases. We do a lot of bioinformatics as well, and that is one of the most sought after disciplines in our institute. Uh, Very ultra modern technology and very classical drugs, put them together and we have something excellent. Now you add AI to it, so perhaps our own requirement will not be there. So that is the kind of things that are happening and very exciting times that we are doing research on. And then once that is done, then we do the preclinical efficacy studies again in animal models. And once those are successful, we take them forward into the clinical trial. So we have a network of hospitals and institutions with us who carry out these clinical trials. And so once the clinical trials, we have very good results, or we expect or we get results, then they are published. And then they are likely to come into, or we can say that the validation cycle is completed. If we have added value to it, say something was used just as a jari buti, and also we make some kind of paste or some kind of a tablet or some kind of thing which we add value, that can also be taken up for commercialization as well. We are not too much into that stage. So as of now, we have quite a number of leads that we are doing clinical trials on. So that stage will come only when we get some very good results out of at least one or two of them. So that is the kind of domain of work that we do. As I said, that we are veterinary scientists as well. I am a microbiologist, so mostly working in public health. So we have a very large number of, very large disciplines of expertise with us. But then that is as one institute. What I have learned over the years is that however or whatever you do, we are never complete until we collaborate. The national health policy has talked about pluralism in healthcare, the availability of multiple systems of medicines. Now we are going one step ahead for integrative health, where it will be merger of systems together. And as you all know, that the biggest challenge perhaps in integration is to get the people from both sides together and sit and talk. So that is more in the head. Our beliefs, our egos, our concepts. So those are the biggest challenges. The challenge is not in the medicine, it is in the mindset. There are people who do not even want to speak to the others, not even willing to listen to the other side from both sides. So once we cross that, then a big paradise exists and a lot of opportunities open up. I tell you, there are so many conditions and diseases that we don't have an answer in the allopathic system of medicine. The non-communicable diseases, cancers, mental health, one of the biggest areas that
the government is now focusing on: aging, geriatrics, and to an extent viral infections and other infectious diseases as well. These are areas where we can actually tell the allopathic practitioners is that we do not have an answer, so why don't you try this? The first thing that we will show is that these are safe and these have been used over centuries, and then they will also agree to it. So integrative medicine is now, what we are doing is that we are taking a graded approach. We are not taking up those research there where there might be some kind of conflict or controversy. There are so many areas where there will be no controversy, no conflicts. Take them up first. So that is what we are trying to do. Take them up, generate evidence, make them all together. Now, when you see as doctors, you may have your own perceptions and feelings. But you think when you are a patient, are we concerned which discipline the medication is coming from? As long as the medicine is safe and as long as it is curing me or it is effective, it is medicine for me. To hell with whether it is coming from one system or the other or whatsoever. So that is what we want. And perhaps we are actually progressing towards that. So there are many very important niche areas that each of our indigenous systems of medicines have. And those kind of areas can be an excellent opportunity for us to establish as doctors, as researchers, as students, as practitioners, and publish, show the results to the world, and use them in practice. One of the misconceptions that most of you clinicians have is that research is something very alien and that it requires a lot of thinking, lot of time and all. No, we are all researchers. Everybody is a researcher. When you come to the institute, you do research that today this program is there. I may have some traffic jam between this part and that part. So I will leave, say, around 8 minutes earlier so I can manage that time. I have to reach at that time. What is this? This is research only. You have a target, you have an objective, and to meet those objectives, you will do this, you will come out at this time. That is research. So that happens in every day life. And for those clinicians who are excellent, who don't have time to write down, I tell you, all their things happen inside their head. Only thing, whatever happens inside the head, that if you have somebody to help you write them up, you will be able to publish them methodically. Good doctors, you will feel, that they will have an algorithm inside their mind. The moment you are taking them and actually publishing it and using your algorithm, letting your algorithm be used by others, that is what research and dissemination of research is all about. So we want and we urge all of you to kind of keep that in mind and contribute in whatever way possible so that we can join hands and do things together. If Haldiram had only one shop, they would have made money. But will it be able to make that much money if it did not have this entire chain across the country? So the same thing happens with us. Sir was talking about the Ghaziabad unit. So that is how we function. So we try to extend our arms to every place. ICMR is not ICMR in Delhi alone. ICMR is not about the 27 institutions. You are ICMR. I am ICMR. Every person is ICMR who is involved in research, because we all work together. We work together for the benefit of the people of our country. So once we are doing that, we have one intention, one plan, and one mission. So I am very happy that we are formally linking up with NIUM, and I was here with a couple of my colleagues a month back,
And we are very excited to see the number of patients that we have, which is your strength. And I'm sure that together we can do a lot of things which can benefit our people at large. And we can only think about strengthening this bond from time to time. Thank you. Thank you. Thank you for this opportunity. Thank you so much, sir. We are extremely grateful to have you here today. Thanks for your insightful message and emphasizing the importance of integrative and collaborative research. We look forward to it. Now, it's my privilege to formally introduce our guest of honor for today's program, Dr. Wasimur Rahman, Sir, IRS, Additional Commissioner of Income Tax, Hyderabad, Ministry of Finance, Government of India. Sir has completed BUMS from Jamia Hamdard University in 2001 and pursued MD from Ajmal Khan Tibia College, Aligarh Muslim University in 2004. He commenced his tenure in the Indian Revenue Service in 2008 and is presently holding the position of Additional Commissioner of Income Tax in Hyderabad. In his capacity, he leverages his dual expertise in both medical and financial domains. Sir has established role within IRS and has played a pivotal role in optimizing the tax-related administration and enhancement of tax complaints mechanism. I request our chief guest, Dr. Wasimur Rahman, sir, to address the gathering. अस्सलामु अलैकुम। जनाब डायरेक्टर साहब, डॉक्टर सुवर्णा राय, साइंटिस्ट जी एंड डायरेक्टर ICMR, NITM, नोडल ऑफिसर साहब, रिसर्च ऑफिसर्स, असातिज़ा, तलबा और दीगर हजरात, सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ इंस्टीट्यूशन का जिसने मुझे ये मौका दिया आप लोगों से बातचीत करने का, कुछ अपने ऑब्जर्वेशंस, कुछ अपने ख्यालात आपके सामने रखने का। तो मैं अपनी बात शुरू करूंगा कि 2000 में हमारा BUMS कंप्लीट हुआ जामिया हमदर्द से। उस वक्त MD की सीटें भी बहुत महदूद थीं और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए एज ए BUMS और कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था, तो MD की कोशिश किया और अल्लाह ने कबूल किया और अलीगढ़ में MD करने का मौका मिला। लेकिन MD के एक साल को तो स्टाइपेंड को बहुत ही एंजॉय किया, बहुत खुशी खुशी। लेकिन दूसरे साल से ये फिक्र सताने लगी कि MD कंप्लीट होने के बाद में क्या होगा। तो फिर एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए तलाशते तलाशते एक मैदान नज़र आया जिसको हम सिविल सर्विसेज कहते हैं, और ये पता चला कि एज ए ग्रेजुएट सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे सकते हैं और वो क्वालिफाई होने के बाद में एक अच्छी ज़िंदगी की गारंटी हो जाती है। तो इस कोशिश में लग गए और अल्लाह ने कामयाब किया। 2008 में सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ और मुझे जो सर्विस अलॉट हुई वो इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इनकम टैक्स। अभी फ़िलहाल मैं हैदराबाद में हूँ। हमारे बाद हमारे ही कॉलेज से एक मुनव्वर ख़ान, उन्होंने भी क्वालिफाई किया और उनको रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स IRPF उसमें जगह मिली।
एक और थे डॉक्टर अफसर, वो भी जामिया हमदर्द से बीएमएस करने के बाद अलीगढ़ से एमडी किया, और वो भी सिविल सर्विसेज क्वालिफाई हुए, और अभी दिल्ली के किसी इलाके में ये कारपोरेट सर्विस जो कंपनीज की ऑडिटिंग वगैरह की जॉब होती, सिविल सर्विस की ही जॉब है, उसमें कर रहे हैं। तो ये बात बताने का मकसद ये है कि एज ए BUMS ये भी किया जा सकता है, सिविल सर्विस का एग्ज़ाम भी दिया जा सकता है। और अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट की तरफ से जो सुनने को मिला है, बल्कि मीटिंग्स भी हुई हैं, कि आयुष के हर सब्जेक्ट को सिविल सर्विसेज का एक सब्जेक्ट बनाने की कोशिश चल रही है। उसमें तिब्बे यूनानी भी एक सब्जेक्ट रहेगा, इसकी मीटिंग्स हो चुकी हैं, सिलेबस तैयार हो रहा है। इसका दो फायदा होगा। एक तो ये है कि एज ए BUMS ग्रेजुएट हमें सिविल सर्विस क्वालिफाई करने का मौका मिलेगा, आसान होगा। और दूसरा ये है कि जब सिविल सर्विस के सिलेबस में आ जाएगा, तो इस सिलेबस को या इस टॉपिक को, इस सब्जेक्ट को और भी बहुत सारे लोग पढ़ेंगे, और इससे इसकी शोहरत और मकबूलियत में इजाफा होगा। 2010 के बाद हम भी अपनी सर्विस में मसरूफ़ रहे, लेकिन मुंबई के दौरान 2014-15 की बात है तकरीबन, फिर ये ख्याल आया कि हमारा सिस्टम तो भले सोशली मकबूल तो नहीं है, यूनानी सिस्टम बहुत अच्छी, भले ज़िंदगी गुजारी ना जा सकती हो, लेकिन अपने आप में तो ये बहुत ही मजबूत सिस्टम है। तिब्बी यूनानी अपने आप में लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और लोगों के लिए बहुत मुफीद है। एज ए ह्यूमन, एज ए इंडियन सिटीज़न, सबको इसकी ज़रूरत है। तो इस निज़ाम को तो बहुत मजबूत होना चाहिए, इस सिस्टम को सबको बहुत मजबूत होना चाहिए। और अगर जस्टी इंसाफ की बात तो यह है कि इंडिया के आबादी के जितने लोग हैं, 140 करोड़ लोग, सबको अच्छे तरीके से ये इलाज दस्तयाब होना चाहिए, लेकिन ये तो कहीं है नहीं। तो फिर उसके बाद में जब से 2014-15 के बाद से मैं यूनानी सिस्टम को सोचने लगा, गौर करने लगा, जहाँ मौका मिलता है वहाँ समझने भी लगा। और उसकी ही ये दिन है कि यहाँ जब बुलाया गया, तो यहाँ आने का भी मकसद है कि हमें करीब से फिर से उसको समझने का मौका मिलेगा कि इस वक्त क्या तब्दीलियाँ आई हैं और क्या मौक़े हमारे सामने आए हैं। तो मैं अपना ऑब्जर्वेशन आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ, ख़ास तौर से तलबा के सामने। और उसकी वजह यह है कि वो बताने का मकसद ये है कि जब हमारा ग्रेजुएशन या हमारे जितने सीनियर्स हैं, 2001 कह लीजिए, 2005-10 कह लीजिए, तब तक ये कि BUMS करने के बाद भी क्या करेंगे, ये एक सवाल होता था। लेकिन आज के टाइम पर जो लोग अभी तलबा हैं, वो अगर BUMS और MD करने के बाद में क्या करेंगे, इसके बहुत सारे जवाब हैं। मेरे कहने का मतलब ये कि मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आप लोगों को तो ज़्यादा मालूम होगा, मैं इसलिए अपने ख्यालात, कोई फैक्ट गलत हो सकता है, मैं अपने ख्यालात आपको बताऊंगा और अपना ऑब्जर्वेशन आपको बताऊंगा कि बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई है। और बहुत ज़्यादा तब्दीली ख़ास तौर से मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बनने के बाद में। मिनिस्ट्री बनने के बाद में जैसे कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं, मिनिस्ट्री के बाद में इसमें फंड ज़्यादा आए हैं, मिनिस्ट्री के बाद में कॉलेजेस में इजाफा हुआ है, और मिनिस्ट्री के बाद में फिर वैकेंसीज और जॉब्स बहुत सारी हैं। और 2000 और 2001 में MD की सीट्स बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन अभी तो बहुत ज्यादा है, मेरे ख्याल 100 से भी ज्यादा हर साल MD में लोगों का सिलेक्शन होता है। और मेरा तो नहीं है। अच्छा, यहाँ से, अच्छा ये है पूरा सिस्टम में तो, ओहो, चलिए अच्छा है, जितना बोर हुए थे उतना फ्रेश हो गए। तो मैं ये कह रहा था कि अभी बहुत सारी तब्दीली आ गई है, और तब्दीली मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बनने के बाद में बहुत सारा गवर्नमेंट की तवज्जो हुई है पूरे सिस्टम पर, और बहुत से इंस्टीट्यूट, बहुत से कॉलेजेस, बहुत सी वैकेंसीज,
और इसका ये फायदा होता है कि अब ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि एमडी के बाद में क्या करेंगे। आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, रिसर्च की सीटें बढ़ गई हैं, वैकेंसीज जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है। और एक चीज़ जो अपने हाथ में है वो ये है कि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। डिमांड सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबल। और इस वक्त तकरीबन 2023 की बात का रिकॉर्ड है कि हर्बल ट्रेडिशन तकरीबन 2023 में $70 बिलियन का हुआ है, और 2023-30 तक इसमें 20% इजाफा होने की का अंदाज़ा लगाया गया है। तो ये पूरी दुनिया में हर्बल मेडिसिन की डिमांड बढ़ रही है, और इंडिया में भी इसका बिजनेस बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एलोपैथी के अलावा हर्बल मेडिसिन और ट्रेडिशनल मेडिसिन की डिमांड बढ़ रही है। अब क्या है कि लोग इसको अपने अपने तरीके से पूरा कर रहे हैं। हर सिस्टम के लोग, कोई देसी के नाम से, कोई ट्रेडिशन के नाम से, कोई आयुर्वेद के नाम से, कोई योगा के नाम से, कोई नेचुरोपैथी के नाम से, और कोई इसको कंपनीज क्या करने लगी हैं कि वो अपनी दवाओं को ऐसा ऐसा नाम दे रही हैं कि मरीज को डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, ये क्योर, वो क्योर, किडनी क्योर, लीवर क्योर, और बहुत सारी ऐसी दवाएं। वो मार्केट की ज़रूरत है, क्योंकि डिमांड है। अब उस डिमांड को पूरा करना है किसी न किसी को, तो लोग अपने अपने तरीके से पूरा कर रहे हैं। मेरा अपना जो मानना यह है कि हमारे पास जो सिस्टम है तिब्बे यूनानी, ये बहुत ही मजबूत सिस्टम है, जिसमें जो पूरा उसूल इलाज है, उसूल तशखीस है, और बाज़ाब्ता हम किसी भी बीमारी का यूनानी उसूलों के हिसाब से इलाज कर सकते हैं, और हमें करना चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो वो डिमांड तो लोग पूरी कर रहे हैं, बस ये कि वही दवाएं ले रहे हैं, लेकिन अपने मन से कोई ले रहा है, कोई पड़ोसी के बताने से ले रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि हर शख्स किसी न किसी हकीम से राब्ता करके, कंसल्ट करके वही दवा खाए। अच्छा, हमारा तिब्बी यूनानी एक दो चीज़ों में आप ये सोच सकते हैं कि डिमांड तो पूरी हो रही है, फिर हमें क्या करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है। तिब्बी यूनानी दो चीज़ों से जो मुमताज़ है, एक तो नज़रिया अखलाक और मिजाज का नज़रिया। और जो मिजाज के नज़रिए की वजह से तिब्बी यूनानी दूसरे तमाम तिब से मुमताज़ है, इवन आयुर्वेद से भी अलग है। इसलिए कोई भी यूनानी का बदल नहीं दे सकता है 100%। अच्छा, वही दवा एक जड़ी बूटी है, अगर आयुर्वेद का डॉक्टर वेद दे दे तो आयुर्वेद हो गई, अगर सिद्धा वाला दे दे तो सिद्धा हो गई, और अगर नेचुरोपैथी वाला दे दे तो नेचुरोपैथी हो गई, अगर यूनानी हकीम उसी दवा को दे दे तो वो यूनानी हो गई। वही हर्बल मेडिसिन है। लेकिन इसकी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत इसलिए है कि दूसरे कोई भी लोग, अभी तो मॉडर्न के लोग भी बहुत सारी हर्बल मेडिसिन दवा दवा दे रहे हैं। मॉडर्न वालों में बल्कि मेरे ख्याल से यूनानी से ज़्यादा मॉडर्न के लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं यूनानी में, लेकिन उनके पास नज़रिए मिजाज नहीं है, उनके पास नज़रिए अखलाक नहीं है। तो जो तिब्बे यूनानी की जो ज़रूरत है, उस ज़रूरत को कोई नहीं पूरा कर पा रहा है। ये खाली पड़ा है पूरा मैदान, और पूरा मैदान खाली पड़ा है। और मैं बताऊं कि ये जितने जो ज़रूरत है, पब्लिक की जो ज़रूरत है, उसमें यह है कि हर शख्स को एक हकीम दस्तयाब होना चाहिए, हर शख्स को यूनानी दवाएं इलाज होना चाहिए, हर शख्स को इलाज, एक अच्छा इलाज मुहैया होना चाहिए। बाकी रिसर्चेस, अच्छा जो हमारा लिटरेचर है वो ये सब करने के लिए बहुत काफ़ी है, प्रैक्टिकल यूनानी करने के लिए बहुत काफ़ी है। रिसर्च, किसी मरीज को वैलिडेशन और रिसर्च की ज़रूरत नहीं है, उसको उसको सिर्फ रिजल्ट की ज़रूरत है। और रिजल्ट हमारे जो लिटरेचर हैं, जो 3000 सालों से जो प्रैक्टिस है, उसमें काफ़ी है, उसमें मौजूद है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये जो सारी चीज़ें हैं, दुनिया को सिर्फ दिखाने के लिए इसकी ज़रूरत है, यकीन दिलाने के लिए इसकी ज़रूरत है, वरना प्रैक्टिकल मैदान में जाने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे लिटरेचर में जो चीज़ें हैं, उससे हम इस खला को पुर कर सकते हैं। ये जो इलाज का खला है, इसको पुर कर सकते हैं। ये बात कहने का मेरा मकसद ये है कि इस वक्त मैं तलबा से ख़ास तौर से ये बात कहना चाहूँगा कि डिमांड जहाँ है, उसकी आपकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, और ज़रूरत है तो आपके पास स्कोप बहुत ज़्यादा है। स्कोप जैसे हम बताएं कि अब डिमांड बढ़ने की वजह से आप हर्बल मेडिसिन की ट्रेडिंग में जाएं, बहुत पैसे कमा सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में जाएं तो भी बहुत पैसे कमा सकते हैं। क्लिनिकल उसमें जाएं तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं, यूनानी क्लिनिक कर सकते हैं। हर चीज़ में इसकी ज़रूरत है, और इसके ज़रिए से
पैसे कमाए जा सकते हैं, इसके ज़रिए खिदमत की जा सकती है, इसके ज़रिए से एक अच्छी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। और इसके अलावा जो सिविल सर्विसेज वगैरह का मैदान है वो तो हमारे सामने है। अभी इन दिनों जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ 2000 यूनानी डे, पहला यूनानी डे मुझे याद है और इस बार का भी यूनानी डे मुझे याद है। आप लोगों ने खुद भी देखा होगा कि कितनी तेज़ी से मकबूलियत बढ़ रही है। इस बार तो राष्ट्रपति भी वहाँ पर आई यूनानी डे के मौके पर। ये यूनानी की मकबूलियत की बात है। पहला यूनानी डे भी आप लोगों को याद होगा, कोई कहीं दो चार लोग खड़े होकर मना लिए, कोई कहीं दो चार लोग खड़े होकर मना लिए। तो 7-8 सालों में इतनी ज़्यादा तब्दीली आई है कि ये अच्छी बात है। मकबूलियत बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, हमारे स्कोप बढ़ रहे हैं, हमारे मौके बढ़ रहे हैं, हमें उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। अब ये सवाल की ज़रूरत नहीं है कि यूनानी करके हम क्या करेंगे। तिब्बी यूनानी के ज़रिए से बहुत ज़्यादा कुछ किया जा सकता है और गवर्नमेंट इस पर बहुत ही ज़्यादा तवज्जो दे रही है। अभी इंश्योरेंस को भी मकबूलियत मिल गई है, इंश्योरेंस का क्लेम भी मिलने लगा है। उसके जो शराइत हैं वो शराइत हैं अपनी जगह पर। और जॉब्स तो अभी बहुत कुछ बदल गया है और हमें चाहिए कि हम इस सिस्टम को और मजबूत करें और मैदान में जा कर के स्किन के। हाँ, एक चीज़ और जो जहन से निकल गई थी अभी याद आई, तलबा के सामने ख़ास शेयर करना चाहता हूँ। आजकल एक चलन है हेल्थ कोच बनने का, हेल्थ कंसल्टेंट बनने का। आप ये समझिए कि जो आपके तिब्बी यूनानी में इलाज बिल ग़िज़ा है, यानी कि डाइटोथेरेपी, ग़िज़ा से इलाज, इसके लिए लोग 1-1 लाख 2-2 लाख रुपया फीस ले रहे हैं और अपॉइंटमेंट भी 3-3 महीना 4-4 महीना 5-5 महीने के बाद में दे रहे हैं। एक साहब के बारे में मालूम है, भोपाल में वो 2.5 लाख रुपया ले रहे हैं एक बार कंसल्टेशन करने का और वो इलाज बिल ग़िज़ा करते हैं। तो हमारे सामने, और अगर एक हकीम तिब्बे यूनानी के उसूल के मुताबिक इलाज बिल ग़िज़ा करेगा तो मेरा ये मानना है कि उन तमाम लोगों से बहुत ही बेहतर करेगा। तो एक स्कोप है इलाज बिल ग़िज़ा करने का, हेल्थ कोच बनने का। आजकल यूट्यूब पर बहुत सारे लोग हेल्थ कोच बने हुए हैं। अगर एक तिब का एक तालिब इल्म तिब्बे यूनानी का जानकार हेल्थ कोच बनेगा तो उम्मीद है बहुत ही अच्छा हेल्थ कोच बनेगा, क्योंकि उसके सामने उसूल व ज़वाबित हैं। हेल्थ कोच बनने का, हेल्थ कंसल्टेंट बनने का बहुत सारा स्कोप है। मेरी नज़र में तो ये तिब्बी यूनानी का पूरा मैदान खाली पड़ा है। आप जहाँ चाहें अपने घोड़े दौड़ा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। Thank you. Thank you so much, sir, for inspiring us with your encouraging words. We are grateful to you. Ladies and gentlemen, we are now moving forward with the signing of Memorandum of Understanding. I'm glad to announce that NIM Bangalore has entered into a collaboration with the National Institute of Traditional Medicine, ICMR NITM in Belgavi. This partnership aims to enhance our efforts in research and healthcare related to Unani medicine. To begin the process, I kindly invite one of the member from NITM Belgavi, Dr. Banappa Ugar. As a witness, kindly come onto the stage. We welcome you. May I now invite respected Professor Abdul Nasir Ansari, sir, to kindly come onto the stage as a witness from NIUM. I would also like to invite the members of NIUM cell of members of MOU cell of NIUM, Professor Abdul Nasir Ansari, sir, Dr. Malik Ikhtar, sir, and Dr. Muhammad Nayab, sir. Sir, kindly come onto the dais. May I also request Dr. Sufi, sir, to kindly come onto this dais. So we now proceed with the signing of the MOU. The NIUM Bangalore was established in 1984 as an autonomous body under the Department of Ayush and Ministry of Health and Family Welfare, now under Ministry of Ayush, Government of India, and registered under Karnataka Society Act 1960.
This institute is affiliated to IGHS Bangalore and follows NCISM curriculum. The ICMR Institute of Traditional Medicine is an institute of ICMR family dedicated to harness knowledge and in traditional medicine, established in 20th May 2006. It is a regional center. The key areas of collaboration are neurodegenerative disorders, non-healing ulcer, metabolic disorders, public health research. This MOU will facilitate in advancement of knowledge on the basis of reciprocity, best effort, mutual benefits, and frequent interactions.
Thank you so much, sir. Thank you to the witness and the team members, respected director, sir. Thank you. We look forward for more collaborative work in research very shortly. Thank you, sir. We now move on to the NABH certificate ceremony. I am excited to share that our hospital has once again achieved NABH accreditation. This accomplishment reflects our unwavering commitment to providing highest standard of care and safety to our patients. We now proceed with the NABH certificate ceremony. I would like to invite Dr. Asam Sir, NABH coordinator at NIM Hospital, to kindly come to the stage and hand over the NABH certificate to the director NIUM. क्योंकि बाकी टीम है, डॉक्टर नयाब, डॉक्टर असजद और आरएमओ, वो भी आ जाए ऊपर। आ जाओ। कमेटी है पूरी टीम, कोऑर्डिनेशन कमेटी। I request all the committee members to kindly come to the dais. And DMS also, I kindly request DMS sir to kindly come to the dais. Please give a big round of applause to the NABH team. Please join me in offering a heartfelt round of applause to the dedicated team who has offered so much efforts and have made this achievement possible. I request Malik Idrat sir to kindly come on to stage, please. Congratulations. We now move on to a special moment, the unveiling of our newly published books. Ladies and gentlemen, it's my great pleasure to introduce the latest edition in the world of Unani medicine. The book by the name Asul Dawa Saji. This book is authored by esteemed Professor Gufran Ahmad Masdood sir. This is a comprehensive guide in culmination of lifetime dedication and expertise. Sir, may I request you to come on stage? May I request the Professor Gufran Ahmad bin Masood sir to kindly come on stage? Sir has not. I request Hasib sir to do the honors. Oh, sorry. I kindly request the library in charge to kindly come on the stage. So this book will be released in the memory of Professor Gufran Ahmad ibn Masdood sir. Sir was the former deputy director and head of the Department of Ilm al-Adwiya. This work provides meticulous details on the pharmacopoeial preparation of various Unani formulations, serving as a treasure trove for practitioners, researchers, and students alike. We are honored to do this in this stage as a memory and tribute.
it's a pleasure to introduce the second book of the day, Kitabul Hayatin. The author of the book is Professor Abid Ali Ansari, sir. Sir, kindly request you to come onto the stage for unveiling the book. This is an invaluable resource. Professor Abid Ali Ansari, sir, sheds light on vitamins in food and health. Recognizing the significance of these micronutrients in Unani medicine, the author has meticulously compiled essential information on vitamins, making this book an indispensable guide for students and practitioners alike. As a leading expert in Unani medicine, Professor Ansari's expertise and passion for this subject shine through the comprehensive work. Please join us in congratulating Professor Abdul Ansari, sir, for outstanding contribution to the world of Unani medicine. Thank you, sir. Our next program is Inauguration of Research, Innovation and Entrepreneurs Development Cell. As a part of National Commission of Indian System of Medicine Regulation 2024, the National Institute of Unani Medicine has established the Research, Innovation and Entrepreneurship Development Cell, which will be officially inaugurated now. I request Dr. Hamiduddin, Associate Professor and Head of Ilmul Saidlas, sir, to kindly come onto the stage. Sir is the coordinator. So we will be doing the inauguration virtually now. I also invite all the committee members, innovation committee members, to kindly join us on stage. Dr. Malik Itrat sir, Dr. Firdos sir, myself. I kindly request the respected dignitaries to kindly come here and do the honors. Thank you, sir. The RIEDC cell will coordinate the activities relating to patenting, commercialization, technology, and technology transfer. So the physical inauguration of this will be conducted in the academic block after this session. We move on to the next program. So before we officially conclude the session, our students will be presenting a vibrant Tarana performance, infusing the program with lively song and rhythmic harmony. Over to the students.
अस्सलाम वालेकुम। ए मेरे शहरे वफा, शहरे तरफ, शहरे निगार। ए मेरे शहरे वफा, शहरे तरफ, शहरे निगार। तेरी तौकीर पे नाज़ा, तेरी अजमत पे निसार। तेरी तौकीर पे नाज़ा, तेरी अजमत पे निसार। ए मेरे शहरे वफा, शहरे तरफ, शहरे निगार। बाम पर तेरे फरोजा है उखुवत के चराग। तुझ में सरगर्म है तालीमो ताअल्लुम को दिमाग। बाइसे फैज है प्यासों के लिए तेरे आया, बेकरारों के लिए है तेरे दामन में करार। ए मेरे शहरे वफा, शहरे तरफ, शहरे निगार। ए मेरे शहरे वफा, शहरे तरफ, शहरे निगार। तेरे फूलों में बसी महरो वफा की खुशबू, मुश्कबू तुझ में फिरा करते हैं तेरे आहो। किस तयक्कुन से चमकते हैं ये तेरे जुगनू, क्या कहें कैसे दरख्शां हैं तेरे लैलो नहार। ए मेरे शहरे वफा, शहरे तरफ, शहरे निगार। ए मेरे शहरे वफा, शहरे तरफ, शहरे निगार। अहले फन अहले कलम हल्के हम दोष में हैं, कई राजी कई सीना तेरे मैनोश में है। खेलते आजमो अजमल तेरी आगोश में है, फिर बढ़े क्यों ना दो आलम में तेरा इज्जो वकार। मेरे शहरे वफा, शहरे तरफ, शहरे निगार। ए मेरे शहरे वफा, शहरे तरफ, शहरे निगार। फलक इल्मो हुनर के लिए जीना तू है, जायरे तिब के लिए शहर मदीना तू है। बहरे अमराज में सेहत का सफीना तू है। सरो कद है तेरी हिकमत की इमारत का मीनार। ए मेरे शहरे वफा, शहरे तरफ, शहरे निगार। ए मेरे शहरे वफा, शहरे तरफ, शहरे निगार। आसमां पर तेरे छाया हुआ रहमत का सहाब, तेरे गुलशन में ये खिलते हुए शोहरत के गुलाब। हर घड़ी तेरी तबीयत में महकता ये शबाब, जहाँ फिजा रक्स कुनाए तेरे आंगन में बहार। ए मेरे शहरे वफा, शहरे तरफ, शहरे निगार। ए मेरे शहरे वफा, शहरे तरफ, शहरे निगार।
तेरी तौकीर पे नाज़ो, तेरी अजमत पे निसार। तेरी तौकीर पे नाज़ो, तेरी अजमत पे निसार। है मेरे शहरे वफा, शहरे तरफ, शहरे निगाह। ए मेरे शहरे वफा, शहरे तरफ, शहरे निगाह। Thank you. I would like to invite Professor Ismat Shamim Madam, Professor and Head, Department of Ilmul Kabalat wa Amrez Niswan, to deliver the vote of thanks. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning to one and all, honorable dignitaries on the dais, of the dais, and dear students. I, Professor Ismat Shamim, head of the Department of Ilmul Khabalat wa Amraz and Niswan, on the behalf of the entire fraternity of the National Institute of Unani Medicine, I take this privilege to propose a vote of thanks at this August gathering for the National Seminar on Innovations in Unani Medicine for Integrative Health Solution, a way forward, on the occasion of the Unani Day celebration 2025. At the outset, I thank Almighty Allah for His blessing and guidance in making this event possible. I extend my deepest gratitude to our chief guest, Dr. Wasimur Rahman, Indian Revenue Service, Additional Commissioner of Income Tax, Hyderabad, Ministry of Finance, Government of India. Sir, we are truly honored to have a personality of your stature grace this occasion. Your presence adds immense value to this event, and your insight inspire us greatly. We deeply appreciate your time and support. With utmost respect, we sincerely thank you, sir. I also extend my sincere gratitude to our guest of honor, Dr. Subarna Roy, Scientist G and Director, Indian Council of Medical Research, National Institute of Traditional Medicine, Belagavi. Sir, your profound insight have not only enriched our understanding, but have also paved the way for new research opportunities in Unani system of medicine. We deeply appreciate your invaluable contributions and extend our sincere gratitude. Thank you, sir. I sincerely thank Professor Sayyid Shah Alam, the esteemed director of NIUM, for his constant guidance and unwavering support. Sir, your leadership and encouragement have been instrumental in making this event a success. We truly appreciate your contribution. Thank you, sir. I sincerely thank Professor Abdul Hasib Ansari from the Department of Tahaffuzi wa Samajitab and the Nodal Officer of Unani Day Celebration 2025 for his exceptional dedication, persistent efforts, and invaluable contribution in this event. A special thanks to NABS team members for the invaluable support during the certificate ceremony. I would like to extend my heartfelt contributions to the faculty members who have released their books today, making a valuable contribution to the advancement of the knowledge in Unani system of medicine. My heartfelt thanks to go to all the head of the departments, faculty members, PhD and PG scholars, hospital staff, administrative staff for the participation in today's event. Your presence and involvement have played a key role in making this event a grand success. I would like to extend my sincere thanks to the team members who work behind the scenes to ensure the seamless execution of this event. Our technical support team, the stage management team, the maintenance staff, and the support and the housekeeping staff, your dedications and hard work have been essential in organizing and ensuring the success of this event. Ladies and gentlemen,
Such an event does not happen overnight. It requires meticulous planning, seamless coordinations, and the dedication of a committed team. We have been fortunate to be supported by an exceptional team from our institute who have gone above and beyond the comfort zone to ensure the success of this event. Finally, I extend my sincere appreciation to each one of you for your participation and a valuable contribution, which have played a key role in making this program a remarkable success. Your presence today has added immense significance to this event. Thanks once again, and may Allah bless all of us. Thank you. Thank you, madam. Now I request everyone to rise for the national anthem. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा शुभ नामे जागे अब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे With this, we conclude the inaugural session. Now we will break for tea.
today. As we gather not only to celebrate the rich heritage of Unani medicine, but also to reflect on its future and the incredible potential it holds for improving global healthcare. The theme of today's celebration, Innovation in Unani Medicine for Integrative Health Solution, A Way Forward, is a call to action. We at NIUM believe in inculcating Unani's time-honored principles with modern scientific knowledge to create a more holistic, sustainable, and effective healthcare system. We at NIUM are working for a present and a future where Unani medicine works hand in hand with other healthcare modalities, creating a more unified approach to health and well being. For the very same purpose, the organizing committee, under the supervision of the nodal officer, Professor Hasib Ansari, Sir, Department of Department of Tahaffuzi wa Samajitib, have collaborated with renowned experts all over from India and abroad to unite under this very roof of NIM today. Without further ado, let me introduce you all to our esteemed guest. Ladies and gentlemen, it's a distinct privilege to welcome Dr. M. Moshahid Alam Rizvi today. Dr. Rizvi is a distinguished professor in Department of Biosciences at Jamia Millia Islamia, New Delhi, and the honorary director of the Center for Distance and Online Education. He also served as the head of Department of Biosciences at JMI. As a scientist in charge for the Genome Biology Lab, Dr. Rizvi spearheads pioneering researches in genomic and epigenomic studies of human cancers. His focus on the therapeutic potential of herbal extracts and bioactive compounds offers a promising frontier in cancer treatment. His lab, equipped with state-of-art tissue culture facilities, investigates innovative molecular interactions to develop novel therapeutic strategies. With over 300 published work and more than 7,800 citations, Dr. Rizvi is a leading authority in molecular oncology. It is an honor to have Dr. Rizvi with us to share his insights on harnessing traditional medicine for cancer management. Please join me in extending a very warm welcome to Dr. Rizvi. Stage is all yours, sir. My dear students and colleagues, Assalamu alaikum, and very good afternoon to all of you. And thanks for the introduction. Today we had a beautiful beginning with the interaction of the two medicinal approach in the field of therapeutics, the Unani system and ICMR coming together. With this connection, my talk will be a little more interesting in that sense. So it is harnessing traditional medicine for cancer management, a prospective approach. This is what closely we are working in this domain for quite some time. Under this building, which is shown in the background, our lab lies on 4th floor, Genome Biology Lab. So we have been deciphering the molecular events in cancer biology.
and definitely some therapeutic components. So before I actually go to the component of drug development, I would like to briefly introduce, because of the kind of students gathering here, we'll go a little into the background of cancer. So what is cancer? Cancer is caused due to combined genetic and epigenetic changes, normally induced by environmental factors. It triggers inappropriate activation or inactivation of specific genes, leading to the abnormal cell growth. Cancer cells divide, grow, and invade adjacent tissues, organs, and spread via lymph or blood to distant organs or tissues. Cancer can develop at any stage in the life. Normally, the higher we grow, the chances are more that we develop cancer because of certain other environmental factors. The global cancer statistics, which is available till now till 2022, we can imagine that how dangerous this disease is. That 20 million new cancer cases were diagnosed in 2022 globally, with 9.7 million deaths. The lifetime risk of cancer is growing day by day, very rapidly. So it's one of the most or highest growing disease. The rate of growth is highest. Around 1 in every 5 individuals globally has potential to develop cancer, and 1 in every 9 men or 1 in every 12 women succumb to this disease. Most common cancer globally is lung cancer, with 12.4% total, leading cause of cancer death with 1.8 million deaths, that is 18% deaths. Among women, breast cancer has 2.3 million deaths, the highest 11.16, with 670,000 deaths annually at the rate of 6.9%. Colorectal cancer is again coming up in a big way, 1.9 million cases with 9,000 deaths annually. This is the same data shown on the pie chart. So overall, then male and female ratios are shown here. Comparatively, female have lesser chances to die because of the cancer. Male have comparatively little more higher risk of cancer death. In India, the oral cancer has got highest 15.6%, with the lung at 8.5% chances. And in female, it is breast cancer, which is 26.6% female cancer death. Cervical cancer is gradually coming down. Otherwise, in India, it used to be #1 cancer. So now, due to certain environmental or cleanliness factors, many of the antiviral vaccine also have come. So as a result of which, we have partially overcome on the incidence of cervical cancer rate, but still breast cancer is rising. Ovary is third among female. This is completely older data. So the two North Indian districts are most high and are the highest manifested with the cancer. The cancer manifestation is 269.4 in Aizawl district and 219.8
as the highest age-adjusted incidence rate among the male and female respectively. The Papampare district, again in district in the northeast region. So northeastern region has got two districts of both male and female incidence cancer rate. This is per lakh, 269.4 in 1 lakh population. This is highest, male and female. Probably because in those areas, females or male both eat one specific kind of the raw betel net. This could be one reason behind this pathogenesis. Now, how the genesis of cancer at molecular level occurs, briefly I'll discuss it. So, as the cancer grows because of two broad spectrum gene classified into oncogenes and tumor suppressor genes. The oncogenes examples are CRAS, FOS, gene. This is more prevalent in sporadic cancer, oncogene. Involvement of oncogenes, because all of a sudden, anything can happen wrong, which was very normal. If the gene normally at the age of 20 or 22, something like, keep on silence, go on in silence mode. So when the genes go on in silent mode, it remains inactive throughout the life. But because of certain specific event or certain abnormal event, certain mutagens, certain radiation exposure, certain drug exposure, certain food kind that we actually every day encounter, this actually cause reactivation of the silent gene or sleeping genes. So you can imagine when somebody is sleeping and you are just kicking him or her, what will happen? He will not going to leave you, or she will not going to leave you so easily, with a smile, of course. So the kind of ire you are going to face by kicking a sleeping man or sleeping person. Similarly, a sleeping gene shows the ire. It go mad. It starts again some abnormal activity. And this abnormal activity is not controlled, is not under the control of any other system or any other available regulatory genes. So oncogenes activation is like this. They develop cancer similar way. Sleeping gene once again gets activated. The other set of gene is tumor suppressor gene. As the name itself indicates, that these actually, the activation of the gene actually, they remain active always. And they suppress the tumorigenesis or the any related activities which actually could cause cancer. But if somehow they are modified, edited, or troubled, or disturbed, or mutated, or their activities is made silent, under that activities which make these genes silent, they can not be able to regulate their activities. As a result, cancer will grow, a cancer can develop. So these are the two opposite mechanisms of developing cancer. This kind of cancer is normally found in hereditary cancers. If grandfather had cancer, the grandson may have. This is only because of the tumor suppressor gene normally. So this has got hereditary predispositions. So if any gene has got hereditary predisposition, it is because of the tumor suppressor genes. These are the different classes of proto-oncogenes. So like growth factors, growth factor receptors, protein kinases, signal transductions, nuclear, and some of the examples and the kind of cancer they could cause. So without going much into the details, I will switch to the next. So molecular rearrangement. Some of the proto-oncogenes, how or what kind of rearrangement make them active by sleeping? Say translocation, if the position of gene is changed, or amplification, certain other regulatory genes or regulatory elements hit them to amplify again and again.
There could be, again, one reason, point mutation, some basic change, some radiation or some drug or some medicine can make some mutations. So they could change some of the genes. So ABL, MIC, ERB, RAS, these are the different set of genes. And the kind of neoplasia they could cause, like chronic granulocytic leukemia, Burkitt lymphoma, squamous cell carcinoma, neuroblastoma, small cell lung carcinoma, carcinoma of colon, lung, pancreas, melanoma, acute myeloid lymphoblastic leukemia, carcinoma of thyroid, melanoma, carcinoma of urinogenital tract, and thyroid. So these were the oncogenes. Now, coming back to the tumor suppressor gene once again briefly, type of gene that help control the cell growth, as I said, anti-proliferative signals and related proteins. The function of such gene is to arrest the progression of the cell cycle in order to carry out DNA repair, preventing mutations from being passed on daughter cells. When mutated or methylated, methylation is one of the phenomena through which a gene gets silenced. CpG island, when you study the DNA, you know it has got methyl guanosine, 7-phosphate. So CpG island is methylated. So as the methylation, they get silenced. So if methylation occurs, it is silenced, the allele will not be able to express, and tumor suppression will not be possible. So tumor suppression will not be possible, and tumor will grow. Like RB, P53, P16, P10 Parkin. So the colored genes we are working on, or we have worked on the. Now briefly, with the reference example of familial retinoblastoma and sporadic retinoblastoma. As I said, familial means going generation after generation. So we have two set of chromosomes, one showing red, that is mutated allele. Other one has got wild allele, means normal. So in sporadic retinoblastoma, which all of a sudden can appear, both the chromosomes, one coming from the father, the other coming from the mother, show wild type alleles. Whereas in familial retinoblastoma, suppose one allele is shared by one parent, has got this potential of developing cancer, or say it is mutated. So that way, the mutation is half hit is gone. So at the time of conception, this is the situation. The man is carrying, or the individual is carrying 50% chances of developing cancer in the life cycle, in his or her lifetime. And normally in a sporadic cancer, he or she is perfectly normal. So when during the lifetime, what happens? There is another hit. Any mutagenic or any radiation or any drug exposure, which could change the gene pattern, or gene behavior, gene expression on the other, any one chromosomes. So if any one other chromosome is also mutated, there is some somatic change. So in whatever tissue it is mutated, whatever organ it is mutated or changed, the chances that in that area cancer is going to develop, because we have all danger color mark, lal. So loss of wild type allele, chromosome, and replacement of copy of mutant versions. So generation of the second mutant allele throwing new somatic mutations. So any familial disease of cancer with having tumor suppressor gene, for example, retinoblastoma, this was the first gene which discovered, which was discovered for tumor suppressor gene. The cancer was retinoblastoma. So just one hit is required. You had one already, chances that you are going to develop, and any other hit in lifetime can lead to cancer of any organ. But in somatic changes of sporadic retinoblastoma or sporadic cancer, suppose it was not already in the family earlier, what will happen? There will be requirement of double hit. So you got two hits. First hit caused one mutation, then another hit is possible in the lifetime, which is normally rare.
So the similar event could be there as double hit. So you require 2 hits to kill the activities of the gene. Here, there in familiar retinoblastoma, you require just 1 hit to kill the activities of the gene. Now, briefly, stage of cancer treatment depends upon certain factors. The stage at which we diagnose the cancer, the rate of progression of the cancer. Every cancer do not grow in similar way. Some of the cancers are very highly aggressive, like lymphoblastoma. Some is very aggressive, and the type of cancer. So depending on the factor that the treatment of the cancers are normally, which is implied by every mode of therapy, it is surgery, chemotherapy, radiotherapy, and definitely targeted therapy coming now. So surgery is briefly, as you know, it is used to treat many types of cancers, especially the solid tumor. The size and type of location of tumor is located and defined and removed. But it can be possible only till the cancer is not metastasized. If metastasis has occurred, the surgery is useless in cancer. Similarly, radiotherapy, higher energy ionizing radiations are employed to kill the cancer cells. So there is dose radiation, certain other factors. Many a times the radiation can kill the cancer cells, but again generate other cancer cell type in the vicinity. So this is equally dangerous in that sense. But still, since there is no other alternative, it is used. So it is normally combined with the surgery and chemotherapy. Radiation alone usually is not employed. Now, chemotherapy, under which every drug treatment comes, the chemical agent are employed to control the abnormal growth of the cells. It includes use of various alkaloids, anti-tumor antibiotics, antimetabolites, and some of the enzymes like topoisomerases to inhibit hormones and other activity of the cells. The drug enters the bloodstream and reach all parts of the body. And these drugs, which are naturally cytotoxic, destroy the cancer cells so that they cannot divide and grow. Now, we can see the adverse effects of these treatment. Like chemotherapy, normally you find this alopecia, anorexia, then again fatigue, nausea and vomiting. These are the regular adverse effects of chemotherapy. In radiotherapy also similar kinds of activities are observed: anorexia, nausea, vomiting, and esophagitis, diarrhea, alopecia. So very close to each other, the pattern of side effects are seen. Now, we are coming to the herbal compounds as anti-cancer agents. So plant-derived natural compounds are of major interest due to their high bioavailability, safety, minimal side effects, and most importantly, cost effectiveness. In the country like India, cost effectiveness is also very crucial while developing any drug. Multiple categories of drugs are available from plant resources. Flavonoids have gained importance as anti-cancer agents and have shown great potential as cytotoxic anti-cancer agents, promoting apoptosis in cancer cells. These flavonoids have proven to be chemopreventive, aimed at reducing the morbidity, mortality of cancer by delaying the process of carcinogenesis. As you must have read, curcumin is one of the most studied chemopreventive agent
It is natural compound extracted from rhizome of Curcuma longa that allows suppression, retardation, or inversion of carcinogenesis, which is available in every household. The natural anti-cancer compounds, as we know, the phytochemicals can be categorized into different 5 categories like alkaloids, carotenoids, phenolics, and nuclear nitrogen-rich compounds, organosulfur. And the phenolic category compounds can again be subdivided into phenolic acids, stilbene, flavonoids, tannin, and coumarins. So, being Unani state student, you are much aware of than me in what actually the cancer is called. Cancer, as you say, it is named as sartan in Arabic. The word that means crab, which is largely described in the classical Unani literature. In the Unani system, several studies have suggested that medicinal plants do have anti-cancerous activities along with the minimal side effects and affordable price for poor people. It paved a way towards development of novel treatment of cancer. Flavonoids, as I said, are a group of more than 4,000 different polyphenolic compounds that occur naturally in foods or plant origin. So the compounds are again of multiple types, having a specific ring structure: flavone, flavanol, isoflavone, flavonols, flavonones, and flavononols. Chemically, they are a little bit different than each other. These polyphenolic compounds display a remarkable spectrum of biological activities, including those that might be able to influence processes that are dysregulated during cancer development. These activities include anti-allergic, anti-inflammatory, antioxidant, anti-mutagenic, anti-carcinogenic, and modulation of other enzymatic activity of the body. This is just a structure, need not to be much remembered for. The structure is just the integrative approach with modern medicine. Now this is crucial. Ayurveda and Unani medicine can be used alongside the conventional treatment to support the body to reduce symptoms, increase disease resistance, and reduce stress. It's crucial to inform healthcare providers about the TIM treatment being used to ensure safe, effective, and coordinated care. While Ayurveda focuses on balancing the doshas, Vata, Pitta, and Kapha, Siddha emphasizes the 5 elements corresponding to the 5 senses. Unani medicine centers on maintaining equilibrium of the body humor. Unani foundation lies in ancient Greek medicine, while Ayurveda and Siddha are purely Indian origin. Unani system gives importance to the naturally occurring products, especially of herbal origin. However, it also uses ingredients from the animal and marine origins. As you must have read the history of Unani and Indian medicinal system, they got associated during the medieval period of India. In India, many of the drugs which were actually Unani got accepted by the Indian system of medicine, and Indian system of medicine got advantage. Unani system of medicine got
the advantage of drug developed by Indian system of medicine. So they were mutually benefited, especially in medieval period. So keeping this interaction of the two drugs and definitely now the modern medicine, we at our lab have started or selected some of the herbal compounds or some of the pure compounds from the herbal resources. So we took some of the terpenoids as listed here: lutein, silverine, naringenin, diazmine, fisetin, quercetin, kerosene, and thiamoquinone. The three red compounds have given us very beautiful results. So I will just discuss these outcome of these three compounds. We have observed anti-proliferative, anti-inflammatory, antioxidant properties of some of these flavonoids and terpenoids against different cancer cell lines. The formulation with constituents like Unani drugs like post Sangdana Murg, Abul As, Tabashir Kabut, Pudina Khushk, post Turanj, Behman Surkh, post Berun Pista, post Halela Zard, Behman Safed, Gule Shurkh, Sandal Surkh, Sandal Safed, Satara, Farsi, Ishniz, Khushk have anti-inflammatory and anti-cancer, gastroprotective and apoptotic functions as per Unani Pharmacopoeia of India published by Ayush. So these drugs have important role and yet to be investigated as far as the cancer or the cancer of colorectal region is concerned. So like we have also selected Majun Sangdana Murg and Codiandrum sativum. Trichosporumamimi is prevalent in Unani drug used in alimentary canal associated pathogenesis and antioxidative property, and has great potential to act as an adjuvant to reduce the toxic dose of the standard anti-cancer drug 5-fluorouracil and oxaliplatin without compromising the therapeutic efficacy of the drug. So my lab is working on the interactive association of these Unani medicine and these two standard anti-cancer drugs. So oxaliplatin and 5-fluorouracil are the important drugs on which we have been working with some of the compounds and how they have given the result in combinatorial conditions. Diazmine and naringenin. So naringenin, as you know, most found in citrus fruits, grapes, and tomatoes. It shows wide range of pharmacological activities such as antioxidant, free radical scavenging, anti-inflammatory, immunomodulatory, and anti-mutagenic and anti-carcinogenic effect. This is the structure of naringenin. The next compound, diazmine, is a flavone glycoside found naturally in the various plant sources, especially citrus fruits. It exhibits anti-inflammatory, free radical scavenging, and anti-mutagenic properties. Diazmine has been investigated in a number of animal model and human cancer cell lines and has been found to be chemopreventive and anti-proliferative. So the structure. Now, how this diazmine and naringenin work in colon cancer? So briefly, any cancer cell, when it is killed, it requires one major event that is called apoptosis or programmed cell death. They need to kill the cells. How they kill?
or how they reduce. So there are two ways. They can sometimes reduce the proliferation, means rate of division of the cell or division growth of the cancer is reduced drastically. So that is possible through the reduction in the cell cycle at G1 stage. As we know, the cell cycle grow G1, S and G2 phase. So the G1 cell cycle arrest is there under normal circumstances through these drugs, and cellular proliferation or division is stopped. The other way is through mitochondrial cytochrome C, caspase, and caspases. Caspases are again enzymes, caspase 3, 8, caspase 9. So normally through elevation in the cytochrome C will enhance the level of caspase 9. The caspase 9 will again enhance the caspase 3 production in mitochondria. And finally, it will trigger into lysis of the cell or apoptosis of the cell or programmed cell death. So the cancer cell will die. So this is, and again, two important genes, marker genes are BAX and BCL2. To enhance the apoptosis, the component of BAX protein has to rise, and the other protein, BCL2, has to be reduced. So these are the markers through which we actually analyze. So our objective to explore the cytotoxic effect of naringenin and diazepam together, individually and in combination, on colon cancer cells, cell line, that is HCT116, is an important colon cancer cell line on which primary studies are done. So we performed this. We performed evaluation of cytotoxicity, how these cells are actually killed, and what is the rate at which it kills and dose. So viability of colon cancer cell line was examined through MTT assay. So one basic assay for any toxicity or any drug activity. Now, apoptosis was evaluated by DNA fragmentation, DAPI staining, flow cytometry, Western blot of protein expression and techniques for protein expression. The result, very briefly, you can see cytotoxicity of naringenin, cytotoxicity of diazepam, and cytotoxicity of both naringenin and diazepam together. So at 48-hour treatment, we got diazepam at 150.2 as microgram and naringenin 170.52. When we took together the two drugs, it was 82.5 microgram and 90.5 microgram of the two drugs. So both reducing drastically, close to half of each, and they gave similar result, similar outcome. This again to mention that diazepam and naringenin, when taken together, they do not enhance toxicity on normal cells. Normal cells data is not there. So DAPI assay figure is a little bit blurred, I don't know. How cells are killed, actually, through this assay, we inquire about the status of nucleus. Nucleus get fragmented. Primarily in apoptosis, what will happen? The nucleus will get fragmented. Here you find control, you find all rounded nuclei. These are all colored nuclei. No breakdown in nucleus.
but some of the figures are small, breaks are not shown here clearly. I'm sorry, this figure got somehow disturbed. Otherwise, it is very much visible in microscope. Here you can say DNA, when nucleus will break down, the breakdown of DNA or nucleus, you will find in kind of small bands. So one is very small bands you will find in these gels. So control, you find there is no band. If it is a visible figure, I think it is because of some other kind of error. The band is not very clear, but still you can see that they combine naringeine and diazepam, the last row. The bands are very what do you call, visible, that the cells or the DNA is broken down. So this is basic fragment through which broken DNA are visualized. Similarly, cell cycle, you can see there are 3 stages: the dark, light, and again in between the two. So dark stage is G1 arrest, cells in G1. The light color or whitish shows the cell division, cells in division, mitosis. And G2M phase is the top one. So any normal control, you can see more cells you find in G20 or G2M phase. And in S phase, there is normal half of the cells. What is you find in G1 stage, half of it is at least in synthetic phase or S phase. And more number of cells you find in maturing stage or G2 stage. But with naringenin, the data looks a little better. You find more cells in G1 or G0 getting arrested, and reduced number of cells you find reduced than the control in G2 phase and S phase. With diazepam, you have very less number of cells in synthetic phase and more number of cells either in G1 and G2 phase. But when we mix the two drugs together, the cells are mostly you find arrested in G1 stage. You can see the pattern. So this is highly indicative. Very few or lesser, almost half of the normal you find in the other 2 stages. So this actually indicates the cell cycle is arrested, means the drug is active. Similarly, at the BCL2 and BAX genes, you can see the band gradually from control to the combined combination of the 2 drugs. The thickness of the band you find lessening in BCL2. Similarly, it is going opposite way with BAX, which is perfect regulatory component of Western blot's example or Western blot figure, that the apoptosis is occurring. So these are the apoptosis or markers. Our results suggested that naringenin and diazepam used in combination can act as better drug than 2 compounds taken individually. Naringenin and diazepam in combination can also serve as the safe chemotherapeutic option with fewer or no side effects when compared to the presently available drug option for colorectal cancers. The combination has therefore huge potential to be explored as the drug of choice against colon cancer. These herbal compounds are less toxic as compared to the chemotherapy drug used for the treatment. They are definitely cost effective and easily available because it can be taken from these plants or citrus fruits or grapes.
It has therapeutic effect as well as chemopreventive effect if taken as food. You can see this, the same drug, we have placed it to the Controller General of the Patent and Diagnostics Center with the application number. It is pending for patenting. Next, as I said, thymoquinone reduced the effective dose of toxicity of this cytoplatin against HepG2 cells. Our next was, can we actually reduce? Our objective, and the question was, if toxic drugs can be reduced by dose, but the result will not, our result should not be affected. So any cancer drug, cisplatin, for example, here, is one of the drug which is very toxic. And if the dose is reduced, the toxicity will automatically be reduced or will be under control, almost no toxicity. By putting some additional drug with this. So this is important. Again, reducing the toxicity, not reducing the efficacy of the drug. So therapeutic intervention of hepatic cells or hepatic cancer through the combination of terpenoid, thymoquinone, source plant, Nigella sativa, you know, this is one of the most important drug or plant that we normally prefer to take. I don't know what locally it is called. So thymoquinone and cytoplatin or cisplatin can be used in combination for more effective anti-proliferative and anti-apoptotic effects of hepatic cancer treatment. I'll show you the results just. So you can see the graph. The concentration of cytocisplatin goes to it has almost close to half or very reduced number of the number of cells are shown here. The control with thymoquinone and at cisplatin and thymoquinone plus cisplatin. You can see the morphology of the cells. The normal morphology has drastically degraded when the drug are used with the reduced drug is used along the thymoquinone. So you can see cisplatin number 2, thymoquinone first, then thymoquinone plus cisplatin, showing lot of DNA degradation. Almost DNA is closing to a smear. Here this same DAPI staining. This is somewhat better. Some of the figures you can see how the DNA breaks and broken DNA are shown, broken nucleus are shown. So this is colored blue are nuclei. So these nuclei are broken, apoptotic is shown. So the number of thymoquinone plus cisplatin showing more number of degraded or broken nuclei. Again, this is applied for Controller General with application number this for patenting. This patenting is almost in final stage.
Last phase, it is both are published, and we shall be getting this patent very shortly, hopefully. So this is the workforce behind these works. My lab students, majority of them, they now, after completion of this work, they are gone outside India. Thank you. So I would like to have some question if you have. Okay. Oh, yeah. Yeah, this one. So, ये जो इंटीग्रेशन है यूनानी का और could you hear me? yes, please. The integration of the allopathic and the Unani Right. and the comparison, clinical trials, and the diagnostic tools used to diagnose the patient and the prognosis. How you are going to compare the allopathy and the Unani? Look, I don't take it because I'm typically not a man of diagnostic field. I am man of therapeutics. So for me, if you have a disease, I wish to have the drug for this. So Unani system of medicine has got entirely its own pattern of therapy. The modern medicine has got again different mode of therapy. So my idea is we can definitely combine the two to go or to cover up the kind of toxicity which modern medicine or modern chemotherapeutic agent gives. So the therapy, normally what happens? Many people die through modern medicine not because of the cancer. They die because of the treatment. The cancer treatment or cancer drugs are chemotherapeutic agents are so heavily toxic. So because of that drug toxicity, people die. But Unani system, unfortunately, toxicity is not, or if it is, very less. People don't die because of the treatment. They may not be so active. So my idea was, if we can introduce two together, anyway, your diagnostic pattern could be different. Their diagnostic pattern could be different. But if the patient is properly diagnosed for a particular kind of cancer, and we know that which stage the cancer has reached, if it is treatable through surgery or not. So if the cancer has gone beyond the boundary of the tissue, still chemotherapeutic agent could be made in such a way that if you add on certain Unani system medicine at a particular dose and treat it alongside the available modern medicine like cisplatin or some other kind of chemotherapeutic agents which is available already, and so reduce the dose of that available drug, maybe up to half, and you give Unani medicine to that patient if it is properly activity is known. So with the non-activity of Unani drug, alongside the non-active available marketed drug, we can reduce the available dose of the marketed drug and treat the cancer in a better way. So patient management is much better than the only one mode of therapeutics. Thanks.
Thank you so much, sir. We are deeply grateful for the invaluable knowledge shared in your enlightening lecture. I would now request Professor Arish M.K. Sherwani, HOD Department of Tahaffuzi wa Samajete, to please present certificate. Sir, please come Achha. in the center of the Madam. stage. You wanted some question, I suppose. Huh? Achha, okay, you can discuss. Achha. I would also invite Professor Nasreen Jahan, Department of Ilmul Adviya, to please present memento as a token of appreciation to Dr. Rizvi. Thank you so much, professors, for doing the honors. Moving on to the next session, which focuses on the dynamic fusion of innovative advancements of technology with ancient wisdom of Unani medicine. And for guiding us through it, we have with us a luminary in field of computer science and our distinguished guest, Dr. Khalid Raza. Dr. Khalid Raza, an associate professor at Department of Computer Science, Jamia Millia Islamia, New Delhi. Dr. Raza's academic journey spans over 14 years with a distinguished tenure as a visiting professor at Ain Shams University, Cairo, Egypt during 2017-18. He holds a PhD in soft computing and computational biology from Jamia Millia Islamia. Dr. Raza has authored over 150 peer-reviewed research articles and 15 books published by renowned publishers like Springer Nature, Elsevier, and CRC Press. His expertise extends to serving as an academic editor for the prestigious journals like PLOS ONE, Piaget Computer Science, and as guest editor for NPJ Precision Oncology. And he has also collaborated with esteemed institutions including AIMS, ICMR, CSIR, and many more, securing multiple government-funded research grants. Dr. Raza is also a proud recipient of the Indian Academy of Science Faculty Summer Research Fellowship and was recently named among the top 2% scientists by Stanford University and Elsevier. Today, as we delve into the topic of role of AI and machine learning in enhancing Unani medicine, we are in the hands of an expert who has seamlessly merged the realms of technology with traditional knowledge. Audience, please join me in welcoming Dr. Raza on stage. Thank you for such a nice introduction. First of all, I'd like to thank you, the organizer, especially Professor Shah Alam Sahab, Director NIUM, and Professor Ansari, the coordinator, nodal officer of this Unani program, and Dr. Wasim Ahmed, and all the guests. I'm here to talk you about the artificial intelligence. The topic is the role of AI and machine learning in shaping the future of Unani medicine. So I'm a man of technology, and most of my paper actually is related to the in silico biology, how computational technology can be utilized for development of drug, right, without going for any wet lab experiment, right? And I'm evident that I have successfully published so many papers during COVID time without going into any experimental, work. Today, whatever the algorithm and technology that we have, the people are accepting it. So I will begin my lecture with one share, if you allow me. हैरत में है अक्ल बशर, हैरत में है अक्ल बशर, क्या जमाना आ गया,
सोचते थे हम जिसे वही सोचने लगा। दीवानगी थी कभी अब हकीकत बनी, दीवानगी थी कभी अब हकीकत बनी, ख्वाब थे जो कल आज हकीकत बनी। I think you must be thinking out of what I'm talking about, right? The AI. The journey of AI was started in 1950, 75 years back. मशीनों में जज्बा है कैसा फरेब, सोचती है दुनिया है ख्वाब या हकीकत फरेब। एक दौर था इंसान कहानी लिखता था, अब प्रोग्रामिंग कोड में किस्मत की जुबानी लिखता है। सवाल जो सदियों से हल ना हुआ, कुल एक लम्हे में एआई जवाब देता है। You will have to believe me that I have not written this. I have generated this, in just 2 minutes by sitting there. And today you will have to believe it that this is the era of AI. In my lecture, right, I will, because I was knowing that most of the people are actually from non-computer science background, my lecture is very simple. I will not go in much detail about the algorithm. I will simply talk about some prospects where the Unani system of medicine is lacking. I submitted one project to the CCRUM on an AI, and I went to defend, right? But the committee was not accepting this as a technology, and they rejected it. The same idea I submitted to ICMR. Just after 6 months, I got 94 lakhs from ICMR. This is the difference between, the traditional system of medicine and the modern system of medicine. ICMR has given me the project on the same idea, but I couldn't get it from, CCRUM. Now I will begin. I'm sitting, I think, standing between you and lunch, right? So I will take only 45 minutes, which was given to me. So something about my lab, computational intelligence and bioinformatics lab that I have, some of the contributions from my lab in the form of books. Some of the work that we have done, like you can see, most of the papers are on SARS-CoV-2. These all papers actually belongs to the entire computational work, right? Without going any wet lab, they are accepted and published in a very good journals. Molecular structure as well. Here we have done some in vitro studies with collaboration of someone, but most of them you can see only in silico study. Some of them are actually traditional medicine also. We taken some phytochemicals and try to prove its efficacy against against some cancer. This is the news that I got 94 lakhs from ICMR, right? I was expected to get it from CCRUM. So the core concept is that predicting the future is not a magic, it's a artificial intelligence. So this is the core. So I will start with the term, is intelligence. What is the meaning of intelligence? If you'll see, as per the Cambridge Dictionary, the ability to understand, learn, and think, and the ability to understand, learn well, and form judgment and opinion based on the reason. Means intelligence will help us to take decision based on various circumstances, that what today the machine is doing. If the same intelligence is being mimicked by any technology, we can say that is not a real intelligence, that is a artificial intelligence. But how actually it works, today we have to understand. So AI is a branch of science that machine to find to complex problem in a more human-like fashion. This is one of the definition that AI is the part of computer science concerned with designing intelligent computer system, that is system that exists characteristics we associate with intelligence in the human behavior, understanding language, learning, reasoning, solving problems, and so on. Right.
You can see the quote of some of the, renowned person, some of the visionary person, right? What they actually said about AI. They have actually predicted long back what we are seeing today, right? The pioneer, you can see Elon Musk was the part of the OpenAI who developed ChatGPT earlier, but he quit due to some reason. Here, Sundar Pichai, he told that AI is the main tool behind new age innovation and discovery like driverless car or disease detecting algorithm. Here, Elon Musk, AI will be vastly smarter than any human in the world and overtake by 2025. We have already reached there. So the AI is going to overtake the human intelligence today. But whatever the technology that we have actually that is being suppressed by due to some ethical concerns. See, DeepSeek and ChatGPT are more smarter today than a human being, but lots of ethical concerns are there. We are not able to, utilize the 100% of the power of, ChatGPT because there are lots of barriers and ethical concerns that has been imposed there. That's why, otherwise, you can generate any kind of content, you can ask any, questions that can be answered. This is one of the news Albert Einstein brought back to life in AI avatar to mark 100 years of physics now, right? This is also in the trend like robot, or avatar in the form of avatar, right? You can interact with the Einstein and you can ask questions and you will get the same answer that could, when he would be alive, he could answer the same thing, right? That is what actually the power of AI is. Here, the AI is in our daily lives, right? You are using WhatsApp. In the WhatsApp, we have a meta AI. You can generate content there itself, and then you can send it to your friend, right? So it is saving your time to make a reply. So AI is everywhere, right? You will see in the near future, AI will be integrated in each and every field of studies, whether it is, healthcare, agriculture, or any other field. I have listed some of them, like you must be using a self-driving car, smart assistants like Siri, and many other apps that we have, healthcare management, automated financing investment, right? Virtual travel booking, marketing chatbots, and many more things are already available in the market. If you talk about the subfield of the AI, we can see AI can be divided into various. AI is actually an umbrella term, right? And you can see machine learning and AI comes together because AI comes under the AI, machine learning comes under the AI, and most of the stake is actually AI, machine learning is going to take. So if you try to classify, we can say that AI can be classified based on capability and based on functionality. If you take capability, there are three types of AI: narrow, general, and super AI. On the basis of functionality, it can be reactive machine, limited memory machine, theory of mind, and self-aware, software. We can see that weak and strong AI. Like narrow AI is where we develop some product or some technology for solving some specific kind of problem, right? That means the domain is very narrow, particular for a particular purpose. That is narrow AI. General AI means general AI can solve any general problem, right? That is called general AI. And super AI means something that can think beyond the human mind, right? That can surpass the human mind. That is what actually is super AI. So we have already reached in the era of super AI, right? Now, defining generative AI. Today, generative AI is very, very important because most of you are using ChatGPT and DeepSeek, Meta AI, Google, Gemini, right? Means each giant, player are developing their own LLM. This is called actually LLM, large language model, right? Which has a capability to generate content. The content may be text, content may be image, audios, videos, poems, what I read out here was ChatGPT generated. And also, it can generate the DNA sequence. You can see its application. The DNA sequence can also be generated from this generative AI. So this LLM is actually called generative AI.
right? That has a capability to generate something. So if you will see the classification, you will see at the top level we have AI. Within that we have a subfield of that AI is a machine learning. Then we have a deep learning, and within the deep learning we have generative AI. So this is a classification actually. So when you will go to the history, the AI was started in 1950, right? Although the term was not coined that time, but the credit of the creation of the AI is given to one of the renowned scientists, Alan Turing, right? Alan Turing is also known as the father of modern computer, right? Charles Babbage, of course, is the father of computer, but Alan Turing is also given a name as a father of modern, computer. So the credit goes to the Alan Turing, where he made one experiment, right? He did one experiment that he created a chatbot, right? And a chatbot through which you can interact, right? What he did, he asked some juries and asked to interact with the system. So he was interacting, the juries was interacting with the system and getting a such satisfactory answer. Behind that chat system, there was automated system also. There was a real man also. When juries interacted with them, juries were not able to distinguish whether he is chatting with a machine or he is chatting with some real person. And that actually test is known as Turing test. Right? That is very, very, but the term AI was coined in 1956 by one of the scientists, John McCarthy, right? And he is, today known as the father of AI, not Alan Turing, but Alan Turing is given full credit that it was the outcome. 1956 was the outcome of the Turing test. AI is having a very long story, you can see, but actually it started from 1950. But before that, there was one of the discovery evolution of neurons, right? Like brain neurons, artificial neurons. And you can see today artificial neural network, ANN, which is one of the machine learning technique, and all the deep learning models are actually based on neural network, right? So it has something to do with the discovery of artificial neuron in 1943. But you can see the era that after 1966, there was a very less growth, and almost 30 years was the period where that period is known as the dark period of AI, where the people actually loses the trust on the AI. They thought that no, this technology will not further grow, and the government also don't want to fund it, right? So the 30 years period was known as the dark period of the AI, where nothing much developed. Only some few things were developed. But later on, after the 30 years, then people again started working, right? And now today we have reached to in some of the situation where is everywhere. So now I will talk about expert system. Expert system, I think you must be knowing any system that has been trained in such a way that the system can advise you, right? Recommend you some product, answer your queries, right? That system is called expert system, right? Expert system is a very long, it is an older concept. It's not new. So expert system is also known as knowledge-based system. Means there is a software, that software has enough knowledge, right? And has enough knowledge that when you will ask query, it will answer your questions. That is called a expert system. So basically, expert system is a rule-based system. Rule-based system. So you have to write thousands of rules or maybe millions of rules into the software. And when any user will ask some query, right, it will match to the rule, right? So it's nothing, it's like a pattern matching. It will match the pattern of the rule, and then it will respond you based on that particular rule. And then that has also an inferencing engine. If you see with the diagram, you can see we have a knowledge base. Means it's like a database, right? But here the data is not stored. Rather, those data that you have in the form of a knowledge that will be stored, right? So database and knowledge base is a bit similar,
but storage way of storing is different. So there will be some human expert, maybe a doctor, maybe an engineer, or maybe anyone, right? He or she will give the human knowledge to some, computer engineer. Computer engineer will transform those knowledge to a database that is knowledge based, right? Then in the system, we have an inferencing engine, and then we have an interface. So any user who is not expert in the field, the user may interact with this particular expert system with the help of some user interface, right? And then give some query, it will go to the inferencing engine. Inferencing engine will process it, take some knowledge from the knowledge base, and then give the answer. So it's an evolutionary process, right? Evolutionary process means this knowledge base will increase over the period of time. So if any new knowledge is coming, you have to actually store into the knowledge base. With the similar idea, we have medical expert system, right? So we can have many expert system. One of the example of the expert system is a medical expert system, where the knowledge of a doctor, right? Knowledge of the doctor can be transformed to some knowledge base, right? In the same way as I have shown on the previous diagram, right? And the purpose is that any unexpert, any patient can interact with that particular system and ask query, and it can give advice like a doctor. Similarly, we have a concept of remote medical expert system, where the entire thing can be deployed onto the cloud, and then it can be accessible on the web-based platform. There are several examples of medical expert system. Like first was a Mycin. Mycin has been designed at Stanford. It is capable of diagnosing infectious disease in the blood and prescribing the appropriate antibiotics. Right. This is one of the very popular, when I was doing my master's, I studied this Mycin that time. So it is one of the very, oldest medical expert system. Another one is a Puff, designed in the late 70s with collaboration of Robert Fullard, a specialist in pulmonary disease, able to diagnose lung diseases. But many more you can see, oncocene, DX. I have listed only 4 or 5, but if you will find, you can find more than 100 such kind of very successful expert system, medical expert system. With this brief introduction about the AI, what actually AI is, what are the types of the AI, what AI can do, right now, moving to the clinical applications, AI in medicine, right? We call it M, artificial intelligence in medicine. So here we can read one code. AI is neither good nor bad. It is a technology for use to us, right? Why this code is there, good or bad? Because if you'll ask doctors, like a traditional practitioners, if they will see expert system, they will feel that, oh, I will be replaced. The entire, right, the physicist and all will be replaced with the technology, right? So they can feel it like it's not good, right? So good or bad is nothing. We have to talk about the good or bad. Only the thing is that it is a technology for use to for us, right? Like ChatGPT. As a teacher, when we give assignment to the student, actually, in the 5 minutes, they will submit the assignment, right? But we have to tune up the assignment, type of assignment, right? So that students can use ChatGPT, right? But at the next level. So our assignment should also be based on in such an innovative way that they can use it, they can use ChatGPT to create some product. Today we have a tool that zero code or no code, right, concept, where without writing a single line of code, you can create your mobile app, right, or any website, right, or any software. You don't need to write any single line of code. That is what actually AI is giving you as a tool. Right, but it means the software engineers are not, on the road. Software engineers will work to make the AI to the next level, right? So here you can see the computer-aided drug design, that what actually we work, where we try to identify target identification, target discovery, target deconvolution. We go for a lead generation optimization, virtual screening, QSAR, de novo design, and then preclinical development like physiochemical properties or ADME toxicity properties, right? All this can be done on a computational platform, right? Without going into the wet lab. Sometimes we also
do computational chemistry like Humo-Lumo study, 3D QSAR study, right? We have that much advanced software today, right? That you can do in a virtual environment. This is various fields in drug discovery where machine learning is being used, right? Uh, I think machine learning, you must be knowing, it is one of the technology of the AI, right? Where we have very advanced algorithm that actually learns from the environment, right? That is why it is called machine learning. Means there is some machine. Machine means it's a combination of software and hardware, right? But of course, the same hardware will work, same machine will work, but you need some advanced software. So it will learn from you, right? As a child learn from parents, right? When a child is born, child is not able to recognize where it is, which kind of fruit it is, right? Where it is a apple or umbrella, apple or a banana or whatever. But we used to train them. In the same way, there will be machine who will know nothing, but you have to train, right? And it will learn. That is what actually machine learning is. So based on your historical data or some environmental data or whatever your purpose is, you need to supply lots of data to it, right? And then it will learn patterns from the data, and after a certain interval of time, it will be able to predict something. If you'll ask question, it will able to answer you, right? If you will have to take some decision and ask for some advice, it will advise you, right? That is what actually machine learning is. And what is a deep learning? Deep learning is one of the subfield of machine learning where we have a deep architecture of the model, right? Deep architecture means if you talk about artificial neural network, it will have many layers, right? Means if a problem is very complex, then we go for a deep learning based architecture. If a problem is simple, then we can go for normal machine learning based model, right? But deep learning is more costlier in terms of computation. So for every problem, we cannot go for a deep learning. But sometimes normal machine learning fails to, cater our requirement, then we move to the deep learning based, right? That's what actually machine learning is. So this slide is showing various fields of the drug discovery where machine learning can be utilized. Like for example, finding materials and consumables, chemical synthesis, data mining, ontology, biology research like target validation, lead discovery, preclinical development, biomarker discovery, clinical development, and drug repurposing, virtual lab assistance, and many more. These are some of the fields where we can utilize machine learning for better result. Like here, you can see in the drug discovery process, we can go for target identification and study, hit discovery, hit to lead, and lead optimization. And the AI models, some of the models I have listed, right? I don't want to go in detail, but these are the machine learning, various machine learning techniques. Like here you can see CNN, convolutional neural network, support SVM, support vector machine, autoencoder, and deep neural network, right? These are some of the machine learning techniques. Now on this slide, you can see machine learning methodology commonly used for drug discovery. What actually we do? So from a simple drug molecule, we try to extract some properties from it, right? Those properties are extracted in such a way that it will have some numerical data. And that numerical data can be utilized for training a machine learning model. So here, if we have the drug molecule in a SMILE format or any other format, and if we have some peptide in a PDB format, then we have to extract the useful information in a tabular form, right? And those are actually in the encoded form, maybe sometimes 0111 or something, right? This is how actually it is encoded. And then this is called your training data set. This is called data sets, right? Or we train a machine learning technique with this data set. That's why we call it as a training sets. So once we extract the useful information from these compounds and peptides in a tabular form, then we call it as a data set. Now this data set will enter into the training of a machine learning techniques. Now here you can decide which machine learning technique you want to take. If you think that the problem is very complex, you can go for artificial neural network or recurrent neural network, right? Or CNN, SVM,
right? Autoencoder, many more techniques are there. But you can start with a simpler one first. Once you will train it, then you have to test it also, and you have to do cross validation. And once you get something, then you can deploy it into some environment, right? And we can call it as a predictive drug model. Predictive drug model means now it has been trained enough, right, to give you some prediction, right? So what it actually learn from the data? The data means from the data, it is learning the pattern, right? And that pattern is learned in such a way that most of the time it is not interpretable by human being, right? That is called black box model. Means once a machine has been trained, right, you cannot interpret what actually it has learned, right? And most of the machine learning are actually black box in nature. So there is another field of AI that is called explainable AI. What is explainable AI? Means we are trying to actually develop technique that can give you interpretability of the learning that a machine has learned, right? Like if you will see this coded thing, you cannot interpret. As a human being, we cannot interpret, right? But to make it more interpretable, so that we can also learn from those learning which a machine has learned, same thing a human can learn to take some decision, right? That is all called explainable AI. Now AI and ML in computer-aided drug design, some of the concept I will show you that we have done in our lab, like in SARS-CoV-2, predictive modeling and therapeutic repurposing of natural compounds against receptor binding domain of SARS-CoV-2, right? This is one of the paper that we published, I think in 2021 it was accepted. So it was published in 2022, right? Here we have used machine learning. Then recently, we have also worked on other paper. Deep ensemble learning reveals potential bioassay against lung cancer and proving their multi-target potency with some other kind of studies, right? This is one of the paper that which is under revision with one of the journal, right? And this is the model that we made, right? So this is a graphical abstract, you can say, how the machine learning model is working. Here, what we have done, we have taken the data set from PubChem and Campbell, right? I think you must be knowing it is a repository, right? NCBI repository, where all the, you can say, chemical compounds structure is found there. On a single click, you can download millions of drugs on your local computer, right? So all the structures are already there. Then we have classified it into active and inactive. So we found this much number of active compounds and this much number of inactive compounds, right? We have to, if you are training a machine learning, then first of all, you have to train. Okay, these are the molecules which is active against lung cancer. These are the molecules which is inactive, right? So both positive and negative sets you have to take and you have to train the model. Then we go for some data pre-processing and then feature extraction, scaling and all. And then here we have taken 3 different machine learning model, FNN, ResNet and RNN. And there was ensemble learning also, right? Ensemble learning means if you will combine more than one machine learning together, it is called ensembling, right? Like very much like sometimes we go for a second opinion of a doctor. Some of the doctor is diagnosing a disease. We go for a second opinion, and also if there is any conflict, right? One is telling positive, another one is telling negative, then we go for a third, right? So that is what actually here ensembling is there. When you will do it, some of the machine learning will tell you something, diagnosed differently. Some other machine learning will diagnose on the same data set differently. So ensemble learning is a very good approach where we take at least 3, right? And we take in an odd number so that there should not be any conflict. So we take 3 or 5 or 7 different machine learning and we'll see. And based on the majority voting rule, right? Majority voting rule, then we actually take decision, right? So we have taken 3 individual and 1 ensemble, right? And then we developed, some model and trained it. And then we found a very good result that we have validated with further downstream analysis. This is this is a study not from my lab, where the application of big data and AI was done. You can see here
These are the public repository like ChemSpider, PubChem, Campbell, BindingDB, ZincDB, 5 different databases. This is a bigger study, right? More bigger you will do means that will become a big data, and then that you cannot actually run on a normal server, right? You need some cloud-based environment. So there were 5 different databases, and all the phytochemical, physiochemical, and pharmacological properties has been extracted, right? And then those has been put together, and various other studies was done like drug likeliness study, ADME analysis, toxicity prediction. And then once the sufficient data was generated here using this study, then this data has been fed into some machine learning model. So here you can see this box is having the machine learning model like classification, which is unsupervised learning method, neural network, support vector machine, hierarchical sorting. Then further, the study was further moved to QSAR study. And then after that, it has shortlisted some of the drug compound, because here you will see there will be millions of compounds, right? But after going all through this pipeline, then you will have some limited number of lead compounds, you can say. Then you can go for normal molecular docking and MD simulation. And then it will give you some fair idea about the top hit molecules, right? And that top hit molecules you can take forward for some experimental validation, right? So at least you are getting some top 2, top 5 compound, right? And that is cheaper to go into the experimental validation. This is another application, plant leaf classification. So on the basis of leaf also, there are many tools. I think you must be using, app is also there where you have to just scan the leaves, right? And it will classify AI in medicinal plant leaves classification. This is another slide showing you network pharmacology approach, right? Today we have we have a genome, proteome, transcriptome, right? Metabolome, multi-ohm data. In the same way, we have interactome, right? Interactome where protein-protein interaction, protein-drug interaction, drug-disease association, right? These are the data which are available today, right? And those can be utilized for the network pharmacology-based approach. Like one of the very good databases is a StringDB, a very huge database, right? To the protein-protein interaction. Deep learning based approach for identifying the medicinal uses of plant-derived natural compounds. Right. So these are some of the application of AI and machine learning in drug design. Right. Now the last part of my lecture is prospects. Now, how AI can be utilized in the Unani system of medicine? How we can take it to the next level? So the first perspective is creation of expert system for Unani medicine for automated query answering, right? I think I just want to know from any of you that is there any system like expert system is there for Unani system of medicine, or any chatbot? I think chatbot is very popular today, right? Chatbot where, if as a layman, I want to interact with a doctor like a, assistant, I don't think there is available. But creation of it is very simple. Today, ChatGPT is there, which can help you to create such kind of things. But the thing is that you have to supply, because ChatGPT will not be having all the classical literature that is in your mind, right? ChatGPT might be having some limited knowledge about the Unani system. So if ChatGPT you are utilizing for initial model development, you can take it as an initial model. But whatever information, whatever the literature that you have in your mind, you can also augment it. So the first pilot study or pilot, app you can create from ChatGPT, right? And then you can augment it based on your classical literature. So this is one of the prospect that is required today. If it will be there, I think their trust will be developed. Mobile app can be developed where the people can, take advice. Right, some of the speaker has told that everybody is using jadi booty, right? But in their own way, right? There is no hakim involved, right? Sometimes also, I am advised by many people, कि आप ये ले लो, वो ले लो. But that is not guided by a proper hakim, right? So if such kind of thing has been developed, right, and these apps may be guided by hundreds of hakims,
right? Means each Hakim can contribute to development of. Second is the AI-driven novel Unani formulation. Lots of formulations are already there, right? But the AI, power of AI, you can see the power of AI is that it has enormous remembering power. It has enormous data processing power, right? And uh, and speed, you can see speed is like depends on your hardware. If you will apply a supercomputer there, it can do like the work that thousands of scientists cannot do in the entire lifespan. The computer can do in just 1 minute, right? So it's a matter of speed of the computer. So by using various approaches of combinatorial, method, the Unani system of medicine can develop new formulations, right? Based on your target protein, right? Your whatever the target that you have, but you have to integrate, of course, some new concept, modern concept of biology also into the Unani system of medicine. So it can generate new formulations, right? But of course, that new formulation can be validated experimentally later on. Third is a computational validation of existing Unani formulations and profiling, right? There was a time when I interacted with one of the DG of CCRUM and I gave this idea, sir, you have lots of formulations already in your classical literature, but it has no evidence, right, in the form of publication in PubMed, because the PubMed is the repository. So when you will sell your product outside India, they may need some evidence, right? Some published literature or something. But you can utilize the power of AI and computational power, where in a lab, like we have a good server in my department, right? We are utilizing that server with 6,000 cores of GPU, right? But today, not CPU or GPU. Today, we have a TPU and NPU also in the market, very much like a CPU. I think you must be knowing CPU, right? And GPU. But now today we have a TPU and NPU also, which is much faster than the other processing units. So we can validate all those formulations just 1 year, because I will not be I will be writing my programs and algorithm for the first time only. And then what I need to do, your formulation structure and doses and all information we have to feed into it. And rest of the thing the computer will do in the pipeline. So whatever study that we planned, suppose we have studied 10 different studies, right? 10 different algorithms are there. The data will go to the first algorithm, we will get evidence. Go to the second, algorithm, we'll get evidence, and then we can analyze the data, right? So computer power can be harnessed for computational validation of the Unani formulation. Next is the development of AI-driven diagnostic method in a Unani system of medicine. Like if you'll see sensing technologies, lots of sensing technologies has been developed today. Like sensors, I think it is a field of study in engineering and physics people they use, right? But can we utilize modern sensors technology for diagnosing disease, right? Based on the principle of Unani system of medicine, right? There was some project like development of digital, cupping, right? So digital cups. So instead of a normal cup, there should be some digital cup, and that cup should be controlled by a mobile app. How much pressure should give? Yeah, that is a kind of power of actually sensing technology, right? So can it be utilized here? Personalized Unani medicine, like considering the temperament in the drug design and discovery, right? So it can also be, temperament can also be implemented. Like we have a temperament of a human temperament. Each drug will also have a different temperament, right? And we have some idea that how at the molecular level, suppose some of the phytochemical or some plant that you have, right? That is maybe having one kind of temperament, but why it is such kind of temperament? Machine learning can tell you that what kind of constituent is there in that particular so that is possible, that temperament can be a part of the personalized. If you see the modern medicine also, modern medicine is also having concept of personalized medicine. But what they do before you are diagnosing, before you are going any treatment, you have to consider genome,
right? And there is a concept of personal genome. So each one will be carrying their own genome like in just a small chip card, right? Genome card. Like ATM card, you will be having one card, you will be carrying your own genome. And your doctor is supposed to scan your genome before diagnosing any disease and before give any treatment. That is what actually bringing genome to personalized medicine. Here, in the same way, we can bring the temperament, Mijaz, into the design of the drug. Bringing Unani system to the digital medicine. Digital medicine is a field concerned with the use of technology as a tool for measurement and intervention in the human services. Digital medicine is a category of pharmaceutical which combines prescription medication with an indexable sensor components, right? So can we bring like other system of medicines are going closer to the digital medicine? Unani system of medicine can also go closer to it. A digitization of classical Unani text, right? Digitization of classical Unani text, right? I don't know much idea. I don't have much idea whether the Unani text are actually digitized or not. But if it is digitized, then I'm sure that you will have a very like a chatbot or like a chat GPT, right? That will be for your own literature, and you can name it like a Unani chat GPT or Unani GPT, whatever name that you want. And it will be able to answer all your queries. Why? Because all your classical text will be given to some generative AI based model, and that will learn, right? What actually a human learns, as a medical doctor, you study in the 4 years or 5 years, machine can just do the same thing in 1 hour. And then in the next hour, it will be able to answer your questions, right? Virtual assistant and chatbot for patient consultation. So AI powered chatbot can be provided preliminary consultation based on Unani principle, guiding patients on herbal remedies, lifestyle changes, and dietary practices. This chatbot can also be integrated into telemedicine platform for wider accessibility, right? These were some of the prospects that I think that as a student of a Unani, right, you can adopt, because the young generations are very curious about the AI and adaptation of the AI. So I have given here 7 perspective, right? And you can explore yourself, and I'm there to collaborate, right? So anytime. So with some acknowledgement to my collaborators and my PhD scholars, I have guided just seven PhD till date, some of the references. So now the floor is open for question answer. Any question from the audience? Yes, please. Very simple. Sir, actually, the silicon study, is it? You said that whatever the research you have done, that was on in silico studies. So here to optimize the target protein. So is there any method to do it? We have the traditional method to optimize, not AI, simple that statistical method, right? Or some, you can see some physiochemical property based methods are already there, right? If you will be knowing about one of the tool, Schrodinger, it's a complete suite, right? There you can optimize your structure. So we have to identify those structure. We have to It go will to that identify library. automatically. It will identify automatically, right? So what we have to give in that, sir? Like in Just a silico structure. Take the protein structure from PDB. PDB is one of the repository where all the protein structures are known, whether it is a crystal structure of the protein or maybe the alpha fold structure, right? That Say, will in the if you want to work on particular receptor or the enzyme, yes, or ionic this thing pathway. So how to take that to see the activity of the drug on that particular receptor? For that, you have to, do lots of data pre-processing, right? You have to take your drug compound and receptor as well, right? Then you have to go for a molecular docking study first. So AI can help us in this way? Yes, AI can also help, but AI can help you in a larger scale problem, not just one ligand and one protein,
right? There is no need of AI, right? Until and unless you have some major problem, right? Otherwise, why you will unnecessarily use the AI if you have a simple techniques. So because these are the basic things that we have to start with. Yes. Like we do have the high throughput screening and all. If you use those things in spite of this. So actually AI in computer aided drug design, it's a very new area, right? Where the software industry, which produce this like Autodoc, Veena, if you are using, Schrodinger, if you are using, they are trying to actually integrate those techniques into. We have to introduce first this if you want. Yes, yes. Currently, Sorry to interruption because of lack of time. You sir, please conclude. Thank you so much, sir, for broadening the horizon of our knowledge regarding Professor AI and inspiring us. Sir, I believe you have made it all crystal clear, even though there are no techies here except our guest and Professor and Mr. Rafi, of course. I now request Professor Najib Jahan, Department of Ilmul Adviya, to please present certificate as a token of appreciation to Dr. Raza. I would also request Professor Abdul Hasib Ansari, Department of Tahaffuzi wa Samajitib, to please present memento to Dr. Raza. Thank you so much, professors, for doing the honors. As we proceed forward, ladies and gentlemen. Okay. Ladies and gentlemen, it's my privilege to introduce Dr. Altaf Ahmed, Director of Shifa Hospital, Bangalore, a distinguished leader in clinical practices, medical education, and healthcare management. His dedication to community health is unparalleled through his work in DJ Hali slums, serving approximately 2.5 lakh underprivileged residents, his annual rural health camps, and public health initiatives. Dr. Ahmed exemplifies compassion in healthcare. Today, he will be speaking about medical ethic codes and conduct. Yes, please. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good afternoon. Well, I am in between your lunch. Already, I think so. You had a hectic morning. But I need to change the whole gear. I thought it will not be a PPT presentation. I'm now from 45 minutes. They've given me 30 minutes. I'll try to complete well before, leaving a lot of questions unanswered so that actually this can be taken up. I was really impressed by the way Professor Razvi Saab has a lot of publications to his credit. And of course, Khalid Raza made AI very simple. There are a lot of questions unanswered, which are going to actually, with passage of time, possibly we need to dive deep and ultimately get to know more where we can use this technology for the betterment of the whole humanity and creation. So at the very outset, I take this opportunity to thank Director, Professor Syed Shah Alam Saab, and the whole team here, and mashallah, our PG scholars, PhD scholars, for giving me this opportunity to stand before you. What I'll do now is, I'll just make this medical ethics is the most boring topic for people. They hardly try to understand. So I'll give you some various scenarios, a few, where you can start to think, apply your mind. Like for example, a case study. A boy of 10 years was brought to me. He had acute lymphoblastic leukemia, treatable cancer, cure rate is very high, and parents, they deny treatment. They say they don't believe because of this religious background. What are we going to do? Ethical dilemma.
There are only 4 things about so-called medical ethics which we need to understand. One, we call this autonomy. Two, we say actually justice. Rather than bring it last, I'm trying to bring it second. Three, we say actually beneficence, doing in the best interest of the patient, yeah, which is going to modify for a better quality. Quantity, we don't believe, it is in the hands of Almighty. Four, we say is actually malfeasance, yeah. So this basically is not do any harm. Keeping this in mind, in this dilemma which I've told you, on the one hand, there is parents who are denying treatment to this child, unfortunately, and because of the autonomy, they have is actually hold over a child who is minor. And two, actually child is going to get treated. It is actually benefit. Yeah, beneficence is there, but we are not able to provide. What are we going to do? Should the medical team take a court order to override the parents' refusal and proceed with treatment? One question. And how the principle of this beneficence, that is what I was telling you, acting in the interest of the patient, way against the principle of autonomy, that is parental rights. Three, what role does the child own preference play in this situation? Can he take an independent decision? Four, of course, cultural and religious beliefs should be considered or not in decision making. Five, what are the possible legal and ethical consequences of forcing treatment against parental wishes? Likewise, I can give a lot of scenarios which we face in medical treatment. Like for example, what we call do not resuscitate. Yeah. Actually, in a patient who is brain dead, yeah, patient where we need to actually discontinue ventilation. Patient is a terminal case of cancer where is not able to swallow, and ultimately we need to do a simple procedure, what is called as PEG, that is called as parenteral endoscopic gastrostomy, to feed him. But unfortunately, they are not they are not giving permission. Possibly there may be advanced directives by the patient himself before he became ill. Don't subject me to any actually rare adventures or procedures or treatment machines, and that was actually documented. So what are we going to do? Lot wise, actually I had some case studies to present before you. With this, what am I going to do? I am going to actually put questions to you and answer on my own now, because I wanted to make this more interactive, but it is actually because for shortage of time. See, as I told you, there are only 4 principles of medical ethics. I'm going to correlate this at the end, whatever Almighty has to say, to make it very interesting, basically how to go about being actually, especially doctors. Autonomy, as I told you, 1. Secondly, beneficence, non-maleficence. And 4th is, of course, justice. For example, if I tell you, is it ethical for a patient to withhold a terminal diagnosis from the patient at family's request? Lot of, बहुत सारे आती हैं, patient को बोलो please, patient को बोलो नो. Yeah. Autonomy is we have to declare to the patient, but with compassionate communication. This is the rule. At the same time, when cultural actually are religious beliefs and where it is a family-centric decision, we need to respect the decision of the family. At the same time, how to go about. So this is where we need to counsel the whole family. 2 things I tell my actually scholars, PG scholars in my hospital, learn 2 things in ICU, because I had the department of critical care also. 1 is basically stopping drugs. 2, I tell them how to counsel. Counseling, repeated counseling, family as a whole, especially because we tend to get lot of patient terminally ill. How to go about treating them, when to discontinue. And we are so lucky indeed. See, from Islamic perspective, if a patient cannot afford, if a patient cannot afford, सूद ले को, खर्च ले को, इलाज कराने की इस्लाम में जरूरत नहीं है. घर भी गया, पेशेंट भी चलेगा. Am I clear? This is very, very important. Basically, before we ventilate, I sit with the attenders and the whole family. सूद लेकर, खर्च लेकर इलाज कराने की इस्लाम में जरूरत नहीं है, unless it is a state subject. If it is a state subject, we need to give what is the best in the interest of the patient, quality wise.
If it is not a state subject, and when the patient is actually giving from his pocket, quality is what the patient can afford. Quality is not what you want to give. Whatever the evidence-based, with due respect to all the people that is happening in the world, it is not evidence-based. It is often evidence-burdened. Remember this. Okay, often lot of especially when they tell about the p-value, that slide is going to be busy. The example is they are not going to simply p-value significant. They pass off. So there's a lot of actually issues to be answered. There was actually, in America, what happened was, see, they say actually we have to declassify. After that, they said 17% of the studies are facts. 83% actually they are made up. I think so. Khalid Raza Saab is here or is left. Basically, beauty about AI is very precise. It can repeat, it can remember, it can deliver. But who is going to feed the data? झूठ फीड करे झूठ बाहर निकलता है, सच फीड करे सच बाहर निकलता है. Database, all that they did bring out. And secondly, one important point, as doctors we need to remember, as Hakims we need to remember is कि medicine does not follow a linear pattern. In the same human being, things keep changing biochemically every second, not every minute. So at that point of time, they actually take a snapshot, and that data is fed into the computer. And for that, they are going to get some diagnosis. And based on that, they are going to give some inference and interface where we can interact with the patient attenders. But basically, after that, that whole things might have changed the next minute. It may be self-limiting, yeah, where 90% of the diseases are self-limiting. Body has an innate potentiality where it can auto-regulate, and things can actually take care on their own in the body. Only 10% need to be interfered. Now here, when you're going to feed data which is wrong, jhoot, misunderstood, miscalculated, so what you're going to get out is actually monsters. Ultimately, we are going to mistreat or possibly overtreat or undertreat the patient. This we need to remember. So basically, one more example I'm going to give is, can a doctor refuse a patient due to personal beliefs? Often it happens. See, I don't actually, for example, I'm a gynecologist, if I remember, and I don't, obstetrician, I don't abort. So basically, yes, there's an autonomy for physician not to. There are some states in United States of America, there is actually some states, they call it as physician-assisted dying, where they can actually prescribe lethal injection to the patient on his request so that he can actually collapse. But we don't believe in that. So I need not actually become a party to the patient, but ethically I am bound to refer to some other provider who does the job. For example, I am not going to abort, for example, but ethically I am bound to refer to some other provider ethically. But fortunately, I went through very interesting point which I need to bring is, unfortunately, आजकल we are apologetic what we are. Like example, this is a beautiful, actually, I request especially August gathering here, especially PGs, to use AI so that we are going to make Unani medicine more evidence-based. That's all. Yeah, far, far superior. Data is too much. And often we believe in holistic approach, where it should be adjuvant treatment, where diagnosis precision may be there with allopathy, but holistically we need to go and see ultimately what is going to benefit the patient depending upon different systems of medicine. For that, it is going to come in a big way. So basically with this, he can actually physician assistant dying and he not get involved, but I have to contribute. But what for this, I went through some actually, journals, because sorry, I did not make a PPT also, fortunate, because I got this information 2 days ago and was reading till 2 a.m. in the morning. And then I'm here in the morning again. So basically, remember, so what you need to do is, I went through a few, actually all the religions, what they have to tell about medical ethics. I made a column and only 4 things I actually pointed out in this. One is actually euthanasia, allow them to die. No religion actually is going to actually allow this. Christianity, it is opposed. Islam, it is forbidden. Judaism, it is forbidden. Hinduism, it is discouraged. Buddhism, it is discouraged. Sikhism, it is discouraged. All indigenous religions are atheist. They oppose this. This is actually the general tendency. I went through about abortion. In Islam,
when actually it is less than 16 weeks, congenitally deformed fetus, which is going to have an actually problem for the mother or the child in long run, it is allowed subjected to a doctor who is spiritually conscious, was taqwa, was dindar. And that I'm going to bring to your notice another 15 minutes. So abortion, I went through all the religions. Everywhere it is either opposed or forbidden or discouraged. Yeah. It is not that actually we go by what is in the media. Media savvy. Ultimately, without realizing, get into there. And we don't, उनको क्या मालूम? मुल्ला की दौड़ मस्जिद के दरवाजे तक. Why we don't get, feed the data, get to know. Ultimately, what we do in a hospital is, whenever a patient comes, they actually send to us, we come to a conclusion, and then we send it to a seminary, where to a khaza, where they take a decision and ultimately get back to us. And then we abort. So basically, it is we need to get into touch with each other, ultimately, possibly coordinate, cooperate, and ultimately collaborate so that for the benefit of the patient. That we need to remember. I mean, organ donation, a burning topic. Yeah, and people navies, hijat nahi, aisa nahi hai. Almost all the religions, they encourage it. Of course, with a lot of riders. Again, medical ethics is going to get involved. Genetic engineering. Well, nowadays they're telling genome, all that. That's about telling yes. So where it is going to prevent diseases, all they encourage. Where they want to enhance the appearance or they change the appearance, that it is not going to allow. Simple, right? This is all the tendency in all the conclusion. Basically, about a religious perspective is, KB or medical ethics is, it need to often balance faith, moral responsibility, 3 medical advancements. We are not averse to what is happening in the world, but we need to take with a pinch of salt, keeping in mind the religious background, faith, and moral responsibility to take a call so that we are going to prioritize saving lives and reducing sufferings. And of course, we need to always respect individual beliefs, cultural context, and medical necessity. With this, the 1, 2, or 3 things which I want to inform this August House is, see, basically about medical ethics, remember, be good at informed consent. Yeah, what do I mean by this? Good disclosure. Explain to the patient, give a complete information. Ensure he's going to understand. Talk to me in his language. नहीं भी हमने माशाल्लाह उर्दू आती है, रबी हम कन्नड़ वाले क्या? Learn it. PGs, we need to 6 months कन्नड़ सीखना है. So that we are at least a language where it is a duty bound as a doctor. We are not by the fear complex. Basically, उनके language में कुछ समझाना. That is what is absolutely the need, especially about informed consent. And of course, we should not influence our decision on the patient. नहीं करे तो ऐसा हो जाता है. Give him a fair, and he should be able to understand and competent to understand what you're speaking. If not, take the family members into actually into the loop and try to explain to them. And of course, the problem often what we face in Shifa, which normally you don't face here, is end of life care and decision making. It's very, very important कि भी अगर पहले एडवांस डायरेक्टिव्स हैं बाय द पेशेंट विल में लिख कर हैं फॉर गॉड सेक ये माशाल्लाह रिस्पेक्ट देयर ऑटोनॉमी पूछने टाइम ना नहीं ना कि भी कहाँ तो लिख कर रखेंगे अगर को वो हजरत को डिवाइड करने टाइम नहीं उनको प्रॉपर्टी कहाँ बच्चे जो माशाल्लाह जो दबा हालते हैं इट्स टोटली क्योटिक बेसिकली वी नीड टू एक्चुअली पॉसिबली हमें भी खुद लिख कर आना पहले डॉक्टर लिखना व्हाट चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड ब्रिंग दैट चेंज इन अवरसेल्फ फर्स्ट इसके लिए जो बहुत नेसेसिटी इज कि एंड ऑफ लाइफ केयर with our own kith and kin, when we go to hospitals, we find this very often what to do. So basically document beforehand what I want. This is autonomy. And of course, there are a lot of palliative cares and actually which we need to take care. And unfortunately, we need to get out of this, the Western concept, hospice, old age home, get back to mashallah joint family system. Rich, wonderful, cultural, actually bonding harmony in India. Yeah, joint family system where mashallah he's a king who is leading this world. And I keep telling, convert one room in the actually house as a hospital. Not केबी लैक छोड़ दो कांत बिलाया को कि bonding, sit with the patient. पराये अपने बन जाते हैं, अपने पराये बन जाते हैं. Nonsense it is. केबी and we are all party to this. केबी जे इसके लिए जे get back to basics. That is what is required.
not hospice or actually sending this patient where? Old age home. Kahan ka lagaya musibat? Ji, that should not happen. And basically one problem that you're going to face is which actually AI, which you're talking is that possibly I'll give a passing mention is HIPAA compliance, where unfortunately database is, it is not private now. Yeah, everybody knows about everybody today. And we need to actually, now confidentiality has to be maintained. What are we going to do this? This HIPAA compliance is mandatory. This is what is called as HIPAA. This is what is called as high trust. HIPAA is nothing but Health Insurance Portability and Accountability Act, where the most vulnerable database that can be hacked by cyber security, cyber thieves, whatever we call them, robbers, okay, is health database. So this we need to be compliant. We need to be open. Of course, the biggest problem that is going to arise is resource allocation. You don't face the problem here. Yeah, but basically we need to remember is KBJ, mashallah, 2 patient ventilator ki zarurat hai. Yeah, justice has to be served. And we can only, mashallah, hamara paas ek ventilator hai. What are we going to do? Ethically, we need to give actually put the patient on ventilator whose survival chances are better than the one who is going to not survive. Yeah, this is the right way to utilize. Unethically is, everybody has, inshallah, they need to have access to the care. Put it. And influence chalao. That should not happen. With this, actually, I'm going to tell you a few 5 minutes about what Almighty Allah has to say. Very interesting. I was going through, yeah, Surah Isra is the 17th actually surah of Quran. Go through from mashallah 23 to 40 ayats. Yeah, it's only laws and moral teachings. Laws, basically remember, they are specific. Do and don'ts. And if you don't follow it, you're going to be penalized. If in the afterworld or in this world. Yeah, penalty is going to be there. But unfortunately, laws can be manipulated. Yeah. For example, accounts. I'm not going to give actually typical examples in medicine. Accounts. Laws can be manipulated. Accountant, in case, अच्छा भी आई ना तुम ना, कितना पे कर सकती हो तुम्हें पैसे, कितना बचाना तुम ना? It is negotiable. Nonsense it is. That's what happens. So basically, laws are actually unfortunately manipulated. इसके लिए अजीब कि भी what Quran has done, Allah more than explaining do and don'ts, how to go about. That is what is important. क्या करना? कि we need to fuse both laws and moral teachings. Moral teachings का तो क्या? कि भी laws is माशाल्लाह यूं समझो हकामत. Moral teachings are hikam, wisdom. Yeah. अब ये चीज जब तक इंटरप्रिटेशन कैसे करना कि भी जो है जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो जोर से बोलता है उसकी बात चलती है, जो डराता है उसकी बात चलती है. हमें डॉक्टर डर जाती कि भी क्या करना, कि भी पॉलिटिकल इंटरफियरेंस, इमेज का मसला, ये माशाल्लाह जी क्या करना, ग्रीड का मसला. द लॉट ऑफ आउटसाइड इंटरफियरेंसेस, द लॉट ऑफ इंटरफियरेंसेस इनसाइड. इंटरनल इंटरफियरेंसेस क्या है कि भी ये ग्रीड, कि भी ये पैसे, रिवेंजफुल एटीट्यूड, मुझे फलां साहब होते नहीं, etc., etc. So now what Allah has done is amazing fusion that has happened in Quran is KBJ, in case if you want to take a decision, fuse this, behind should be taqwa. जब तक ये कॉन्सेप्ट नहीं आता मुझे अल्लाह को जवाब देना है, आई एम आंसरेबल, आई एम अकाउंटेबल. कि भी जो है एक एक फाइल खोली जाएगी पेशेंट की. एक बात याद रखो कि भी क़यामत के दिन जो हिसाब होगा वो हराम का हिसाब नहीं होगा, हलाल का हिसाब होगा, हराम का अजाब होगा. नहीं भी हमें क्या करेंगे, गलत काम हराम का तो सवाल ही नहीं उठता. नॉट ट्राइंग टू सर्कमवेंट द लॉस, हलाल को हराम बना देना, हराम को हलाल बना देना, क्या होना का हल. तो बेसिकली वी नीड टू रिमेंबर what Allah has done is has fused both into moral teachings there. Ultimately पीछे तकवे के बारे में सौ टाइम कुरान पाक में लाया. तकवा इस के भी जो है माशाल्लाह नेकियों में से गुनाह निकालना. तकवा इस माशाल्लाह तन्हाइयों को आबाद करना. तकवा इस के माशाल्लाह जो है रिमेंबर कि आदमी को इस बात का फिक्र हो, आई एम अकाउंटेबल, आई एम आंसरेबल टू ऑलमाइटी अल्लाह फॉर एन आयोट ऑफ गुड और बैड आई डू. इसके लिए अल्लाह ने क्या किया अमेजिंग. अल्लाह खुद कहते हैं कि माशाल्लाह जो है अल्लाह खुद दावत देते हैं कि भी अल्लाह ताबुदु इल्ला इया, कि भी अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करना.
तो इसमें एक अमेजिंग कॉन्सेप्ट वो खजा रब्बू का अल्लाह ताबुद इल्ला इय्या, अल्लाह इज द जज, ही इज गिविंग ए डिक्री, कि इसमें इस तरफ इशारा है कि भी इबादत करने का मतलब क्या, झुकना ठीक है, उसके अलावा किसी के सामने नहीं, अपने अंदर के इंटरफेरेंस के सामने भी नहीं, ग्रीड के सामने नहीं झुकना, सैडनेस के सामने या जो इमेज के सामने या जो है किसी के इमेज के सामने, अल्टीमेटली अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर यू शुड टेक एक्चुअली ए डिसीजन। इसके लिए एक बात कहते मैं खत्म कर दूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो आदमी आए जी, and mashallah they had some dispute, they presented their case, one was very good in presentation, communication was top, he very good lawyer, हती ना बात करने का चर्ब जुबानी, कि भी जे झूठ को सच बना देना, सच को क्या बना देते मालूम नहीं है, झूठ को सच ये भी सच जरूर बना देते हैं, कि भी जे this what happens, but this was not the days when mashallah they were sahabas, they were truthful, क्या ऐसा नहीं कि अंदर की बात समथिंग है अंदर बाहर, दे वर ट्रूथफुल। अब दो आए, आपस में झगड़ा हो गया, बट वन वाज वेरी गुड इन एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ, वन वाज एक्चुअली लिटिल शाई, नर्वस, जरा जो पसीना पसीना, अभी कौन तो भी जो माशाल्लाह जरा पसीना नर्वस होगा तो क्या समझता पुलिस की गलती इंग्लिश करे, गलती है ना, गिल्टी है, गिल्टी है, तो नॉट एबल टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स, बट बेसिकली जो है आने के बाद ये दोनों की हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोनों की बात सुनी, या कि भी जो है लुकमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, कोई दो आंख लेकर तुम्हारे पास आए कि इमीडिएटली डोंट जंप टू द कंक्लूजन टिल यू हियर द ऑपोजिट पार्टी, हो सकता है कि वो चार आंखें निकाला हो। हमें क्लियर, मजाक नहीं है दीन, मजाक नहीं है मतलब मेडिकल एथिक्स, के भी जो हो सकता है चार निकाला हो। अभी दो साथी आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि बोथ दे प्रेजेंटेड द केसेस, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो माशा सुनने के बाद एक के बारे में फैसला किया, फैसला करने के बाद कि भी परफेक्ट माशाल्लाह जो है जज इन द वर्ल्ड टिल द डे ऑफ जजमेंट, परफेक्ट लॉ इज लॉ ऑफ अल्लाह, इनको सामने रखकर अल्लाह के नबी ने जो फैसला किया, लेकिन फैसला करने के बाद हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं एक के बारे में फैसला किया है फॉर एंड दूसरे के बारे में अगेंस्ट, बट देयर में बी प्रेजुडिस, आई डोंट नो, अल्लाह इज द बेस्ट जज, ही सेज। कौन बेस्ट जज? Allah is the best judge. A perfect human being, a perfect judge with a perfect law, ultimately when he delivers actually जो है mashallah judgment, he says कि भी जो है Allah is the perfect judge. Now today corrupt judges, corrupt rules, उसमें mashallah we need to जो है कवल के फूल बनना है, हाँ कि भी जो है we should not get swayed by what is happening in the world. For this make intentions, lot of questions we may be having. Yeah, I don't mind coming again some other time to answer your queries. Thank you. My half an hour is over. Thank you, sir, for your invaluable insights. I now request Professor Ismat Shamim, HOD OBG, to please present certificate to Dr. Altaf Ahmed. I would also invite Dr. Raisuddin, alumni NIM from Sri Lanka, to please present memento to Dr. Altaf, sir. Thank you so much, professors, for doing the honors. As we have come to an end of this segment, with that in mind, we will now take a short break. This will give everyone the opportunity to stretch, refresh, and continue networking. Before we proceed with the next segment,
Please allow me to remind you to reconvene here by 3 p.m. sharp. Thank you and enjoy a break. Characteristics of Unani medicine, we may say why to innovate and why to integrate. When we have umure tabaya, which cannot be modified unless there is paradigm shift in thinking, in the perspective. Like Newton was a mechanist, but the Einstein was relativist. When mechanical laws, all the Newton's laws, though they apply, they are true. We can make rockets out of it. But Einstein shifted the scenario. He shifted by stating one law, E is equal to mc square, changing matter into energy. And we have to change all the mechanical laws. Similarly, in Unani medicine, if we want to change the fundamental principles, they cannot be changed unless and until you have to change the paradigm shift, which is only possible if we know it as a whole. But it is very impossible to deduce these principles and then have a paradigm shift, and it will take centuries to change it. So what is important? That is important is to see the present knowledge base, present technological revolution, and we say how to integrate it in our society. And the integration, there is only one way, that we have to innovate certain things. We have to make our concepts, make them understand to others in the way as presently we are thinking about matter, causation, and disease and health. So the rationale behind this integration is it has a historical basis in Unani medicine. Why I am emphasizing it? Because there is no other system which provides a perspective of historical basis. Say, for example, Tib started from Mesopotamia, it reached to Egypt, and then it went on to Greeks. Every culture had a different perspective. Still, it went there and it adapted to the conditions. That means it integrated into the cultures. And then when it came to the Arabs, they translated everything. So it was again transformed. It just integrated with the culture. If you see Hellenistic culture, Roman culture, it is basically, it does not believe in God. It says matter is permanent. If you would see the medieval Arab culture, it says God is one and everything is changeable, destructible. So these are two different things. Still, Unani came from Greek and went into the Arab world, and it integrated into the culture. So we have a historical basis for the integration. Then nature of Unani medicine is such that we have to integrate, because every culture is consisting of a community of people which have almost similarity as human beings, similarity in disease, similarity in health parameters. So it is very easy to integrate this Unani tib in any culture and in any times. Then one more example which is very important, that is Ajmal Khan's efforts for integration. All of us, we may have heard about it. I will concise it. Ajmal Khan stated that whatever our principles, the basic principles, which are very genuine principles, which are very much non-modifiable, still we need certain evidences from modern medicine so that we can augment our principles. So Ajmal Khan did a great effort, and here we have selected Unani Day on his birthday, on his name. We say it Unani Day. Then we have one more thing, that is scientific advances and purposive causes for innovation.
It is not only that Unani has historical basis for integration. Ajmal Khan has given us so many efforts for integration. We have now a problem that there's a lot of scientific advancements. Genuinely, it has made us to think about how to integrate ourselves with these advancements. If we look back just 30 years, we had wireless system, we had button phone, and we had postal inland letters. Today, you cannot find it anywhere. Only in some museum you may find that wireless system. A button phone, you may find it in some rural areas. But times have changed. And on one button, we can see any part of the world. If you go to the Google map, you can see the streets of Los Angeles burning. So when this type of advancement has been there, and we are thinking of Unani medicine in terms of the philosophies and in terms of the arguments of Ibn Sina and others, but today it has made us, it is a compelling thing for us. We are compelled to think of Unani medicine in terms of today's advancements. We have to change our mindset. When we discuss network pharmacology, I will come to this point again. From this scientific advancement, we have two things. One is the technological advances, and another is evidence-based medicine. Nowadays, people don't believe in myths. People don't believe in anecdotes. People don't believe in case studies. They believe that if we give a molecule, if you give a product to any patient, you prove that it is effective, then we will use it. We call it generating evidence. And if we generate the evidences, we have to see at what level it is. Is it level 4 evidence? It is level 3 evidence. Is it level 2 evidence? Is it level 1 evidence? Or the gold standard evidence? Gold standard for evidence is RCT, random clinical trial. And the level 4 evidence is what we say the claims of Unani medicine are anecdotes or anything. So we have to shift from level 4 to level 1 or level 2 evidence. Then world will accept us. And this has made us compelling for integration with today's technology and today's scientific base. Then we may see holistic health and preventive care. What it says, in this area, we may easily go for the integration. The strategies of integration of Unani medicine goes beyond curing disease. Today, we are just thinking about the curing of disease. But Unani medicine is not about curing disease only. It has in itself the prophylactic aspect of disease. We say go for the fasad in March and April, or in November or December. You will not contract a major disease. That means we have a prophylactic bend. It says other various things which are very much beyond this curing the disease. Say, for example, positive indicators of health, which are not present in medicine, today's medicine. It also emphasizes maintaining health through disciplined lifestyle, balanced diet. And when we say balanced diet, it is not what WHO recommended diet is. It should be balanced in its kimiyat and its kafiyat, quantity and its kafiyat, quality. And when we talk of kafiyat, Unani medicine says kafiyat about a lot of parameters which are very much different than modern medicine. Then we say physical activities. It emphasizes maintaining health through various physical activities and mental repose also. And then we say we have to go for mental well-being. I have not added psychological and spiritual well-being here because it will be another 50 minutes discussion. Now, a preventive approach is particularly significant present challenges like stress, sedentary lifestyles, and environmental degradation. I have added this in environmental degradation because there are plants
Say, for example, we have pyrethrum. It came from Australia. It came to India, and now it is a menace in India. We have to destroy it, but we are not able to destroy it. Similarly, environmental degradation can be prevented through Unani medicine. Those plants which we grow, say colocynth is there. Wherever we have colocynth, we don't find pyrethrum. Similarly, we can make our earth greener if we plant various trees, and if it has medicinal value, it will add to our armamentarium of drugs. Then we have innovations in Unani medicine. We have phytopharmaceuticals. Nano encapsulation of Arke Gulab and Rogne Badam has been done, which enhances bioavailability and efficacy. It gives us a hint towards integration and its usefulness. Then we can have digital integration through AI, illustrating sui misage and personal Unani treatments. Then we may have evidence-based practices. Molecular biology and informatics are bridging gaps in Unani medicine and mainstream medicine. Then it ensures traditional therapy meet gold standards of safety and efficacy. Then we may have this integration and collaboration in Unani medicine and public health, which is very important aspect of Unani medicine. We can have cost-effective and sustainable solutions for global health challenges in under-resourced communities. We may give various medicines, various vitamins and other things, but it can be in those which have rich source, those communities which have too much money for their health and other things. But under-resourced communities, what they can do? Say in Africa, we have an example. They are using Sahajana plant. They are using its leaves not only for their food needs, they are using it for calcium deficiency also, they are using it for magnesium deficiency also. And it is being propounded there that this plant can be used for health challenges in under-resourced communities. Then principles are applicable in managing epidemics also. We have seen in the COVID how fast we did the trials and how fast we reached the community and we tried to save the lives. Then Unani medicine is well equipped to reduce the menace of mental problems. Though it has, there are long discussions, but I may assure you that we have a scheme for drug addiction. We have the regimens for mental well-being also. We can use them and we can easily see the effects of Unani medicine in mental health. Then we have innovation for integrative healthcare. How we will deal it with? We can establish evidence for use of Unani drugs. If we go for the integrative healthcare or we want to go for the innovations, what innovations we can go for to integrate it in our healthcare? The first and foremost thing is that we have to establish evidence for use of Unani drugs. Second, innovating novel drug delivery systems, say nanoparticles, or we may have delayed delayed solutions so that it is absorbed delayed in the stomach, and we can have other ways we can use our drugs so that we can have a sustainable or sustained release tablets and other things. Then we can develop kits for public health, like for anemia, for endemic infectious diseases. Then we have our wellness procedures and pharmaceutical agents. Wellness procedures we know very well, but these pharmaceutical agents used for wellness, there are 2-3 examples in Unani medicine, which I may have quoted earlier. Say, for example, we have chopchini. We say if we take this chopchini at the age of 40 to 50 in a particular way, we will not contract any disease up to our natural lifespan. Khandan Sharifi has stated that we have to take 2 grams of chopchini, boil it, then add more and take it, then add more 2 grams to the residue, and going on adding it up to the 40 grams. Then reduce it again up to 2 grams. If you take it in 40 days,
this will be sufficient. This one time, it will be sufficient for you, for all of us. If we take it in middle ages, say 40 to 50, we will not contract it. Unani claims it. We will not contract any serious disease. Ibn Sina says that if you go for exercise daily, I assure you that there will be no serious disease for you. This is what Ibn Sina says. So these things, if we propound, and we have a lot many things for this integration for healthcare. We have diet therapies. Razi has written a book about Itma'ul Maraza, what a patient can eat. Therein he states in for every disease what he should take and how he should take. And then we have what Ayurveda have now propounded, Ritu Acharya. Way back in Roman era, and even in Bukrat, Hippocrates says that in Kitab al-Fasul, he says that in which season what you have to take and what you have not to take, and how predisposition of diseases occur. If we take lead from that, and then we are using our today's this media, we can easily develop various programs by which we can go for prevention of health through Unani medicine. And when we integrate it with modern medicine, say modern technology, say we have the media, say we have other resources for research, we can easily say how we can integrate ourselves in this healthcare system. Then we have product development concerning functional foods and nutraceuticals. Today, it is the major thrust of the government. They are propounding millets, use of millets. Though it is in Unani medicine, it is in Ayurveda, it is everywhere. But there are other things in Unani medicine, other foods, other functional foods in Unani medicine. Say, for example, we have Margine flasfa. Though we consider it a drug, but it is far more better functional food than Chyawanprash, because it has the 14 drugs, and there are researches that it helps in mental stress, it helps in arthritis, it helps in continence of urine. So it is one of the best drugs for geriatric care. We call it the elixir of life also. When we have such a drug, why not to give it a new form? Why not to produce it as a functional food or nutraceutical and market it? I think I feel that it will go far beyond than this Chyawanprash and other things which have been advertised for similar like functions. But our this margin flaspa, there are lot of evidences also now. It has been used after menopause to reduce the menopausal syndrome symptoms. It has been seen that it has been proved for its anti-arthritic activity, for its amnestic activity, and people have developed it in a nano form also. So what is there that we cannot develop this product and market it? Then we have one more thing which we have, use of network pharmacology for enumerating mechanism of action of Unani drugs. Integration will help us through various softwares. We can take our drugs, make an extract, find various chemicals through HPLC or HPTLC, and then match it through this our computers, network pharmacology, what we say, computers, see where they affect which receptor. We can only guess what are the effects on various receptors of our formulation or of our drug, and then we can take it to lab and see the effects. But at least we get clues how it is going to act. And then the foremost thing is that human body is very complex. There are lot of pathways through which a drug can act. This network pharmacology helps in elucidating all the steps of those complex pathways wherein it acts through receptors, and we can have lot many steps we can skip and go for the in vivo and in vitro in vivo and clinical trials for our drug.
So this network pharmacology, it will help us not only in enumerating the mechanism, it will reduce the time in developing the drug. So for this, we have to go for the integration with the modern tools. So strategies of integration is research and development, education and training, policy advocacy, and community engagement. I hope it is very clear for all of us. Then what is our take home message from this? That integration is must for our future. Because if we don't go for the integration, maybe we will lag somewhere some 20, 30 years with other pathies who will go for the integration. But integration needs to align with our umure tabaya. I am not saying fundamental principles. Integration needs to align with our umure tabaya. And integrated healthcare means enrichment, not the amalgamation. Always we think that if we go for the integration, maybe we may be subsumed into another pathy, allopathy or Ayurveda or other things. Integrated healthcare means that it gives us enrichment, it will not go for the amalgamation. Integrated healthcare has equal space for any traditional system. It is possible through research, mutual understanding, and collaboration that we will have integrative health policy. I hope we will go for the integration. Think of it positively, and there are various steps for going for the integration, and it will take a lot of time yet. Then we will decide whether we get subsumed or not. Thank you very much. Thank you so much, sir, for this inspiring talk and for your immense contribution to the field. I now request Dr. Hamiduddin, sir, HOD Ilmul Sadler, to please present certificate to Professor Gulamuddin Sufi, sir, as a token of gratitude. I would also like to request Dr. Tariq Nadeem Khan, HOD Kulliyat, to please present memento to Professor Sufi, sir. Thank you, doctors, for doing the honors. Moving forward, it is my great pleasure to introduce a distinguished scholar and expert in the field, Dr. S.M. Raisuddin. He has since dedicated over 25 years to clinical practice, research, and education in Unani medicine. Dr. Raisuddin earned his MD in Moljat from NIM Bangalore in 2010 and has authored 13 articles in national and international journals. He has served in leadership roles, including Secretary of the Curriculum Development Committee and Head of Moljat Unit at the Institute of Indigenous Medicine. His academic career as a senior lecturer from 2006 to 2022 at his alma mater and later as a senior visiting fellow at Hamdard University, Bangladesh, further highlights his commitment to advancing Unani education. Currently a visiting lecturer at the Postgraduate Institute of Indigenous Medicine, Dr. Raisuddin is also working on the establishment of Unani medicine in Oman. His expertise in both clinical practice and classic Arabic enriches his approach to Unani medicine, making him a respected scholar and practitioner. We are honored to have Dr. Raisuddin with us today and look forward to hear his valuable words on the topic autoimmunity to immunity. Stage is all yours, sir. Exactly. Because I am moving around.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Muhammad bin Abdullah, amma ba'd. Really, I am honored to present in front of you all, dear respected teachers and the audience and the students. I purposefully started and made the first slide as an image rather than going towards my topic, because I want your presence with your mind. So this is a case of mucosal dominant pemphigus vulgaris. The patient was suffering, she has been suffering for more than 2 years and treated by the topmost dermatologist of Colombo, Sri Lanka. And the first image is the condition when she was on conventional medicine. Alhamdulillah, she came to me and I treated her. Within 1 month time, you can see the second image. And on the 56th day, the mouth or the tongue and lips and all mouth cavity is completely recovered. And happily, till today, she is living without this condition. Thank Allah. So as usual, when I returned from NIUM to Sri Lanka, I was believing that modern medicine says that autoimmunity cannot be completely cured. So only this disease could be modified by some disease modifying drugs. So I was also going to Sri Lanka with the same idea. I will not be able to do anything in autoimmune disease. So this is my topic. My findings are to prove among us, not to the modern people, that we can do something in autoimmunity and we can bring back the autoimmunity to the normal immunity levels. Don't take any photos, just I will give my contact, I will share the whole slide. Just concentrate what I am discussing with you. Okay. Before enter into the topic, I have a take-home message in my front. Unani medicine without Kulliyat-e-Tib will be traditional medicine or herbal medicine in future. So I always emphasize to my colleagues and students who are in the Unani to work with the Kulliyat of the Tib. Otherwise, it will be at a time, it will be a traditional medicine or herbal medicine. So I am very much interested in working with Kulliyat, though I am a Mualajat person. But without Kulliyat, how can a Mualajat person work? So now we will come into the topic. These are known things to you all, just as introduction. The autoimmunity, the body's immune system attacks and destroys healthy body tissue by mistake. And sometimes it goes to a life-threatening situation, and autoimmune diseases in general cannot be cured. But the condition can be controlled in many cases. Or in cases there is no control even, as I shown to you in the first slide, they could not control with all anti-inflammatory drugs and methotrexate and all other types of medicines. They could not control the disease. So in many cases, they can control autoimmunity, but some cases they are not able to treat them successfully. All right. Common autoimmune diseases, you also know, but I am with a purpose, I am bringing this slide. These are the common diseases. There are more than 80 diseases they have identified in autoimmunity, but these are the common diseases: rheumatoid arthritis, psoriasis, multiple sclerosis, systemic lupus erythematosus, diabetes mellitus, and scleroderma. For a common feature, I notice here
a common feature that it is all these diseases are causing hardness in the tissues, including diabetes 1, type 1 diabetes. In type 1 diabetes, the destruction of beta cells ultimately causes scarring of whole pancreas. So scarring is a connective tissue that much fall in the hardness. So what I notice is that the common autoimmune diseases are hard in nature. Stiffness, they are producing stiffness, hardness, that is the ulnar deviation and deformities and all. So all these are giving some alarm. There may be in background, there may be Sauda behind the autoimmunity. This is my assumption only. I don't say I don't have any reference, but it's my assumption. Okay, let's go to the other slide. Sauda and stubborn diseases. So Ibn Rushd says, فَتَشِيءُ فِي الدَّمْ, that means السوداء فَلَا تَزَالُ الْأَعْضَاءُ تَتَغَذَّى بِهَا. So this information also supports me that the autoimmunity could be a Saudawi in origin. Okay, because this human Sauda is the most repulsive thing for the physiology, that is tabiat. So if you go, all the alamat, all the clinical features that autoimmune diseases producing are far deviant from the physiological functions. So both this information gives a signal that autoimmunity and its complications might be originating from Sauda origin. Now I'm coming to Sheikh Razi and Ibn Sina. Actually, they have observed rheumatoid arthritis, but they have not named it. But exactly they have found the features of rheumatoid arthritis. I'm not reading the Arabic because time must be saved. As for the individuals of an arthritis, they may have swelling in all joints and pain also will be in the vertebral column. Perhaps stroma, that means tissue growth, will develop at the joints, especially in the fingers and toes. It is from Al-Hawi. The fingers will deviate and become stiffened and their joints also will deviate. The pain will intensify at times and subside at times. It's a chronic disease and they will have a long-term backache. This is from Al-Hawi. Ibn Sina says, the abnormal substance, especially immature ones, will often solidify in joints and become like gypsum. He has used the word al-jas. Jas is the gypsum, it's a qualification. And stroma will often appear at the joints, especially of the fingers. Then the fingers will twist, deviate, and form contraction. Now, in the swan neck deformity, the contraction is formed. The pain will intensify at times and subside at times. These are the remissions. These will recur many times. This arthritis will occur only in those with hot temperament. Mostly stroma will appear when the causative substance is sanguineous. Sheikh Rice has the view that because of these, all diseases are systemic diseases and tissues are growing abnormally, he has decided that there is a big role for sanguine, that is blood. But blood, how it was spoiled is the question. Whether blood became spoiled itself, or sauda, or balgam, or safra. If we ask such question, the answer is sauda has corrupted the blood. So blood is running all the way, carrying the abnormal sauda and causing stiffness and deformities and pain and inflammation. Right. Now I am coming why autoimmunity could be sauda. Number one, clinical features of autoimmune diseases are Saudawi in nature.
especially psoriasis, scleroderma, and rheumatoid arthritis, systemic lupus erythematosus. It has gone. Can anyone help? Okay, thank you. So most of the clinical features, if you, even in rheumatoid arthritis, now it is called as rheumatoid disease because it is causing extra articular problems like lung fibrosis, liver cirrhosis, and all. All these are, Saudavi origin. Saudavi origin. So number one. Number two, clinical features of autoimmune diseases are most deviated function from the physiology and the chronic nature of the autoimmunity. And the number fourth is most of the common rheumatoid arthritis, common in autoimmune diseases are treated by a anti-carcinogenous medication, methotrexate. If you see a prescription of rheumatoid arthritis, SLE, or any other common autoimmune diseases are treated by methotrexate. Methotrexate is a drug that is used for treating cancer. So cancer is Saudavi, that is unanimous, that is ijma among the atibba. So a cancer drug that is healing or reducing the symptoms of cancer, it is reducing the symptom of the autoimmune diseases. So with these logical understandings, I believe strongly and firmly, I believe autoimmunity is produced by the Sauda, not by Safra or Dam or Yani Balghan. Okay. So now I am coming with my images. This is a case of psoriasis. Actually, I know everyone's mind will be asking a questions. What I gave for the treatment, I will give. Don't worry. But interestingly, I want you to ask me why I gave. That will be beneficial for you. What I gave is only a simple matter. Okay. This is a Bangladeshi patient. He was treated by the one of the topmost dermatologists in Dhaka, Bangladesh. And the response was very poor. So I treated him. Full body plaque psoriasis. I am just going faster, the same patient's hand. After just one month medication. This is another case. You can see the first image. The second image is after 5 days. The third image is after 1 month, roughly. The other case is a recent case. Last January 16, the patient contacted me. And on 3rd, he sent me the photo. And he was telling in his audio, I showed Amraz Jill, the student, he was telling, sir, whole skin has dropped and my skin looking like baby skin. Just between 16 to 17 days management. So this is my first slide. So these are a drop of cases whom I have treated in my clinic personal practice with psoriasis. Now I am coming to rheumatoid arthritis. It's a case, very young girl, 13 years old, and she was suffering from rheumatoid arthritis. Biological tests were done, and it was found that she is having rheumatoid arthritis. So she was diagnosed with rheumatoid arthritis, and she was suffering for the last 3 years, but they brought me a report of 2018, and the rheumatoid factor was 2015, and anti-CCP was 229. And I started treatment on 13 August in 2018. And December, the patients who got ESR was 8. Actually, they didn't want to go for test because they did. Why do you want to go for the test? Because the child is living normally. Now she has written the advanced level biology bio stream,
and she went to Umrah. The father was demanding 1 pack of medicine. I asked why. I have nothing, just for prophylaxis. They are going far away from the country. So he has a fear that the autoimmunity may be triggered due to some reason. So they wanted to keep with me just a set of medicine just for prophylaxis. Is another case. It's a case of SLE overlapping with rheumatoid arthritis. Is a 20 years girl suffering from 1 year, and all these parameters were abnormal. And lastly, anti-double stranded DAN antibody was negative. Patient completely recovered. I stopped medication. She got married and she conceived. The father was asking, she was a rheumatoid patient, and if she conceived, whether it might aggravate. I don't tawakkalna ala Allah. Go for marriage and go for child. And another lady was 54 years, 10 years of suffering rheumatoid arthritis. She was a very poor lady. She didn't have much reports. Only she had ESR. When she came to me, ESR was 120, then 60, then 52, then 35, then 15. Alhamdulillah, after that she was completely recovered. Another? Okay. Now the crucial part of my session. What was the medicine? Dawa S is Itrifel Shatira. I gave Itrifel Shatira. Don't write, madam. Don't write. I will share. Okay. Itrifel Shatira. Itrifel Shatira, half teaspoon. And I give especially Safufe Asgan with ghee or Ayurvedic product Ashwagandha Rasayan, half teaspoon at morning. Ultimately, I will tell you, because rheumatoid arthritis, ulcerative colitis, and different diseases, some symptomatic relief also we have to give. These I give to stop autoimmunity. Alhamdulillah, it's working, because I have tested in a medical student who suffered from rheumatoid arthritis, and I gave only Shatira and Ashwagandha, and Alhamdulillah, she recovered. She was a Sasur of an MBBS doctor. Sasur of an MBBS doctor. So MBBS doctor has warned her it was lifelong. It is lifelong, because the consultant has diagnosed as rheumatoid arthritis, and the Sasur was very much sad about, it's a lifelong arthritis. So Alhamdulillah, within 1 or 2 months, she recovered. And one day I was making a presentation like this. She got up. Sir, I am one of your patients. Like that. MashaAllah. Okay. So I give, usually I give half teaspoon khali pete. Just on empty stomach, I give this medicine. So case 1, 2, 3 completely recovered within 6 months and living without any complication. This is a cases of rheumatoid arthritis. Now, inflammatory bowel disease. Female, bloody diarrhea maximum 12 times up to noon, and abdominal pain. Every day she has diarrhea maximum 12 times before 12 o'clock. One day blood, one day loose motion. So she was suffering from 2 years, and she is a little bit educated. She told, I went to many doctors and I found all the medicines are same, but brands are different. All these doctors are cheating. So she came to me and I treated her. Alhamdulillah, within 1 month, she completely recovered. They also took 1 month more medicine for prophylaxis. There is another case, male, 3 years suffering. This is another case, female, 25 years. And this is a special case. Actually, she got married, and the doctor has prescribed all sulfasalazine and methotrexate and blah, blah. So they have told, if you want to conceive, you have to stop medicine before 6 months. Because these are very much dangerous drugs for the newborn, new baby, which is going to be conceived. So she stopped the medicine and conceived, and it was aborted and disfigured and aborted. So she came to me with all colonoscopy reports and biological reports. I treated her, and successfully she was okay. Her question, sir, when to get conceived? I told, "Arey yaar, your colon is very close to uterus. You will get soon, because we all are taking care of whole organs, not only colon." Immediately she conceived and had 1 baby. Again also she conceived. Alhamdulillah, she is living very normal. Recently, I asked her husband,
So let's go for some test for like colonoscopy and all, just for scientific writing. He has asked his wife, shall we go for a colonoscopy? The patient has become depressed. Why you remembered this problem? Itna bhul gaya. Why you remind me this problem? I forgot this issue in my whole life. So that much relief she has got. No more inflammatory bowel disease. This is a male. Again, he was having, because doctors were the confusion whether it was Crohn's disease or ulcerative colitis, but suffering of 4 years and confirmed by colonoscopy and histopathology. Again, all cases were given dawa, ashwagandha, and dawa M. M is mastagi. Javarish mastagi. I will summarize at last. We will have, if you allow, we will have a question and answer. I hope so, inshallah. All cases were advised strictly avoid consumption of wheat flour. You know, the case I told 12-time bleeding, 1 month it was completely recovered. But at the 1 month, the lady told me, sir, 3 days I had some bleeding. The husband reported me, sir, on those 3 days, she ate some biscuits. Sir, I was telling her repeatedly, doctor has told stop atta muida, but she was eating biscuits, sir. Us din bleeding tha. In the same day she ate biscuit, she had bleeding. So it is my personal discovery that in this ulcerative colitis and Crohn's disease and other, especially autoimmune diseases, intestinal system, wheat flour is the major culprit of that. It is experience. Case 1, 2, 3, 4, completely recovered. But different people took different duration. It may be due to their body's mizaj or their chronicity or anything else. Some were cured 3 months, 7 months, 9 months, 12 months. Complete recovery was achieved. This is the case. I gave psoriasis, that is psoriasis in mucosal dominant pemphigus. These are the same medication I gave. Very important thing is that in all dermatological patients of psoriasis, I gave 1 tablespoon Rogani Gunjat and 2 tablespoons juice of raisin, juice, the munakka juice, or without seed, she can take 1 tablespoon of ghee. Because Ibn Sina says in Al-Qanun that when you give the mabiktaj, the shear of the kishmish, and ghee and sesame oil in patient with takashur, it will completely recover. So I put all my patients with medicine just lifelong. Not only at the time of medicine, I told this is very difficult disease. If you want to pay me, stop this. If you don't want to pay me, eat this. That's all. Case 1, 2, 3 completely recovered within 4 months treatment, living without any complication. So promising benefits observed in these treatments may help to develop hypothesis that autoimmune could be reverted to normal immunity with Unani medicine. These are my reference. These are open for a discussion. Yeah, I have briefed my time. You have questions. So if anyone asks question, if the high authorities allow, I am ready to answer. You may ask any question on the topic. I told you that I added some medicine in different patient. For dermatological patient, something different. For ulcerative colitis patient, something different. For rheumatology patient, something different. Added something with this original formula. Ashwagandha rasayana or ashwagandha churana with ghee and shatira, it is the core. But for rheumatoid, I added something. For rheumatoid arthritis, I gave Majun Chopchini. When I give Majun Chopchini and shift to Majun Surinjan, medicine does not work. If you start with Majun Chopchini, go with only Chopchini. If you start with Surinjan, go with only Surinjan. Don't change that symptomatic relief. I failed in my cases. And ulcerative colitis and Crohn's disease, I always give Mufarreh Ahmadi. It's a Indian formula, IMCOPS formula, has very much wound healing.
It's a symptomatic relief only, not related to autoimmunity. Mufarre Ahmadi, you can Google and you can find it, IMCOPS pharmacopoeia, and you can find it. And psoriasis, especially, I give this internal package, sesame oil and ghee and munakka. Recurrence. That's why I told, I treat with medicine and I add this food to the patient. I tell the patient, even after recovery, don't stop this cholesterol, this ghee and kishmish and sorry, sesame oil. Oh, every day morning he has to take it. It is not recurring. It's not recurring. My lot of patients are there. It's not recurring. Please take my mobile and Gmail. I will share each and everything without hide and seek. No, no hiding. अरे यार मर जाबो. What I will do? Huh? Inshallah. Thank you so much, sir, for such an engaging and inspiring talk. I now request Dr. Mohammad Shakil Ansari, Department of Jarahat, to please present the certificate as a token of gratitude. Thumbs up. I would also request Professor Abdul Nasir Ansari, HOD IBT, to please present memento to Dr. Raisuddin, sir. Thank you, professors, for doing the honors. Let us take this day as an opportunity to renew our commitment to exploring and expanding the potential of Unani medicine. May we continue to build upon the legacy of this remarkable tradition and work toward a healthier, more balanced world. As we conclude this session, I would like to extend a warm invitation to all of you for a delightful high tea. It's a wonderful opportunity to relax, network, and engage in further discussion. Please reconvene after 10 minutes. Thank you.
हमारे सारे गेस्ट आ रहे हैं यहाँ पे बैठेंगे उनसे Fresh. For the next segment, the organizing committee has taken a step forward to honor the participants of fire prevention and firefighting training under the supervision of Fire and Emergency Services, Government of Karnataka. Through certificates of appreciation for doing the honors, I would like to request Dr. Raisuddin to hand over the certificates to the following participants. I request all the participants to come forward so that we can swiftly and quickly conduct the ceremony. First one, Dr. Muzaffaruddin Bhatt. Next, Dr. Muhammad Azam. Next, Dr. Mohammad Nayab. Next goes to Dr. Renuka BN. Okay. Audience, please. जल्दी जल्दी आ जाए जरा Fast, fast. Dr. Renuka BN. 30 seconds fast. Dr. Mohammad Nayab. Mr. Suresha.
Next, Mr. Nanda Kishore. Fast. Okay, sir. Next one goes to Professor Abdul Nasir Ansari, sir. चले Next, गए Professor Gulamuddin Sufi, sir. सूफी साहब ले लीजिए. I'm here. I'm here. Okay. Next, Mr. Suresh. Okay. Professor Gulamuddin Sufi, sir. अब इसके बाद उनको भी बुलाना. सर. वेट सुरेश के बाद नंदा किशोर. एक क्या है नाम. सर जान सीक्वेंस में जान दीजिए ना. Okay. Mr. Suresh first, then Mr. Nanda Kishore. नाम देख लो रिजवी साहब का क्या नाम है पूरा. नहीं. इनसे फिर दिलवाना. आरिश सर से है. रिजवी साहब ये जो स्पीकर थे हमारे स्पीकर वाला. Okay. Next to Dr. Nasir, sir. Professor. Next, Professor Ismat Shamin. हाँ तो बस ठीक है उनसे दिलवाओ. आप इसमें नाम चेंज करो ना. Next, I would request our honorary Professor of Ilmul Adviya, Gulamuddin Sufi, sir, to please present the certificates to the following participants. Professor Arish Mohammad Khan Sherwani, sir. Next to Dr. Firdaus Ahmed Najjar. Dr. Firdaus Ahmed Najjar. के बाद ना वो रिजवी साहब का किधर है तुम्हारे पे लिखा होगा ना उसका नाम लिख दो. जो फर्स्ट पहला. Professor Abdul Hasib Ansari, sir. Dr. Abdul Aziz. Dr. Wasim Ahmed. Dr. Sadiq Ali. पहला वाला उन्होंने. बीस हो जाए 25 हो जाए बल्कि 30 हो जाए. Dr. Mohammad Arshad Jamal. Dr. Mohammad Shakil Ansari. Dr. Abdul Mubin. Dr. Abdul Mubin. Dr. Mohammad Imran Khan, sir. Dr. Mohammad Azjad Khan. He's saying after 25 we change it. Dr. Kausar Fatima, ma'am. Dr. Kausar Fatima, ma'am. Okay. Dr. Malik Itrat, sir. Dr. Mazrul Islam, sir. Dr. Sharik Shamsi, sir. हो जाए उसके बाद फिर ना उनको बुला. जो बच्चे हैं खुद से आ जाएंगे. ठीक है. Dr. Azizur Rahman, sir. Dr. Mohammad Diazuddin, sir. Diazuddin, sir. Okay.
Mrs. Radhika, ma'am. Next, I would request Dr. M. Mushahid Alam Rizvi, sir, to please hand over the certificates to our participants. Mr. M. Samuel Parveen. Praveen. Mr. H.I. Mohammad Fazil. 50 हो जाए ना तो फिर इनका दूसरा इनके साथ वाला उनका Mr. Tariq Hafiz. Mr. Ehtisham Ahmed. Mrs. Karanam Santi Priya. Mrs. Nasia Tabassum. Mrs. Rohini Kumari. Miss Asin Parthi Rajani. Miss Jamila Banu. Miss Sumangala. Mrs. Farzana Banu. No, they're not there, sir. They're not here. Mrs. Shashikala. She's not here. Dr. Mohammad Ilyas Patel. Mrs. Geeta. Should I? Mr. Malik Arjuna. Mr. M.N. Naveen Kumar. Mr. J. Abdul Rashid. Mr. Salim Mohammad Beg. Mr. Rafi. Mr. Musab. Mr. Suraj Kumar. Mr. S. Mansoor. He's coming. Mr. Govardhan. Next, I would call upon our honorable guest, Dr. Khalid Raza, to please hand over the certificates to our participants. Mr. Kashif Nadeem. Mr. Saddam Hussain Ansari. Mr. Javed Akhtar. Miss Shazu. Mrs. Zeenat Firdaus. Mr. Sajid Hussain. Mr. Mohammad Zishan. Mr. Nandish. Mr. Zafar Siddiq.
Mr. Zamir Pasha, Mr. Sunil. Next. Mr. Suresh. What's this? Manjunath. Mr. Saeed Shabuddin. Lohit Kumar. And last, Arun Kumar. Just ma'am, keep it. Thank you all the participants. We have now reached an exciting and much anticipated moment of today's event, the prize distribution ceremony. For that, I now request Professor Wasim Ahmed sir and Professor Azizur Rahman sir to take the stage from here and proceed with the prize distribution ceremony. चाय पी रहे हैं अभी तो
जितना वक्त मिलेगा उसमें हो जाएगा। इंशाल्लाह अनकरीब ही तकसीम इनामात की तकरीब शुरू होगी। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि दिल थाम के बैठे रहें। एक और गुजारिश आप सब लोगों से ये है कि वो तमाम लोग जो इनाम याफ्तगान हैं, जिनको मालूम है कि उन्होंने इनाम हासिल कर रखा है, वो बराए मेहरबानी आगे की सीटों पर तशरीफ ले आए। और जब उनके इवेंट का नाम लिया जाए, जैसे इससे राइटिंग का नाम लिया जाए, तो आप इस बात का इंतजार ना करें कि जब आपका नाम लिया जाए तो आप कुर्सी से उठें, बल्कि इससे राइटिंग इवेंट का नाम लेते ही आप लोग नीचे की तरफ बढ़ जाएं, ताकि वक्त की जो तंगी है वो उससे जो है हम आसानी से पार पा सकें। क्योंकि तकसीम इनामात के फौरन बाद मुशायरे का प्रोग्राम है। अगर आप ताखीर करेंगे तो उसमें आप लोग जो है बहुत ज्यादा उसको एंजॉय नहीं कर सकेंगे, उसका लुत्फ नहीं ले सकेंगे। तो इसलिए मैं तमाम ही इनाम याफ्तगान से एक बार फिर गुजारिश करता हूं कि जब भी उनके इवेंट का नाम लिया जाए, वो अपने नाम सुनने से पहले ही अपनी कुर्सियां छोड़ दें, ताकि यहां तक पहुंचने में उनको ज्यादा ताखीर ना हो।
क्या करना है? नहीं, अब इनको बुला के बिठा देंगे। हाँ, नाम तो बुलवाए या इसी को है, मैं इसी बुला। अस्सलाम वालेकुम। मैं मेहमानान गिरामी से दरख्वास्त है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं, जिससे प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए। हाँ, इधर आ जाओ। रेव भाई करते हैं। वही कर देते, वही कर दीजिए जैसे वो भी सवाल है। पहले यहाँ की कल्चर में ज़्यादा जल्दी भी बुलाना। हाँ हाँ है। है। शॉर्ट में बोल दें। हाँ हाँ। अजीज अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तकरीबन 20 दिनों की मेहनत मशक्क़त के बाद हम एक ख़ास नतीजे पर पहुँचे हैं, और कुछ लोग, बेशतर हमारे इंस्टीट्यूट के तलबा ने इसमें पार्टिसिपेट किया, और कुछ लोगों को कामयाबियाँ मिली, कुछ लोग जो है करीब करीब रहे। बहरहाल मुकाबले का आगाज़
सबसे पहले ऐसी राइटिंग से किया जा रहा है, जिसके लिए मैं हमारे मेहमान खुसूसी डॉक्टर वसीम रहमान साहब से गुजारिश करूंगा कि हमारे कामयाब तलबा को अपने गिरां कदर हाथों से इनामात तकसीम करें। ऐसे राइटिंग में पहला विनर्स आगे आ जाएं सब। विनर्स आगे आ जाएं। ऐसे राइटिंग इंग्लिश में सबसे पहला मुकाबला जीता है और थर्ड से अच्छा अच्छा ठीक है। ऐसे राइटिंग थर्ड में 3 लोग हैं, जोहा जोया, डॉक्टर मुनीबा और शेहवर अंजुम। ऐसे राइटिंग सेकंड के लिए हैं डॉक्टर मलिन सफरान और फर्स्ट प्राइज के लिए सेकंड प्राइज के लिए डॉक्टर मर्लिन सफरान और फर्स्ट प्राइज के लिए एएस फातिमा शिफरा, जो इस मुल्क से बैरूनी मुल्क से हैं, और इनके लिए खास तौर पर तालियों से आप इस्तकबाल करें। खास तौर पर बने तलबा और तालिबात को तालियों से नवाजें, जिससे कि उनकी मजीद हौसला अफजाई हो। ऐसे राइटिंग उर्दू के लिए तैयार हो जाएं। किसके सेकंड प्राइज डॉक्टर मर्लिन सफरान, हाँ याद है। और फर्स्ट प्राइज के लिए एएस फातिमा शिफरा। अब अगला इवेंट है ऐसे राइटिंग उर्दू। इसमें 3 प्राइज हैं, डॉक्टर नीलोफर, डॉक्टर रुशदा खातून और कनीज फातिमा। सेकंड के लिए डॉक्टर ज़ेबा अख्तर तैयार हो जाए। आपका सेकंड है। और प्राइज के लिए डॉक्टर शेवर अंजुम। अगला मुकाबला है ड्रग आइडेंटिफिकेशन। ड्रग आइडेंटिफिकेशन की टीम जो विनर है वो तैयार हो जाए। इसमें भी थर्ड प्राइज के लिए 2 लोगों ने शेयर किया, डॉक्टर कनीज फातिमा और डॉक्टर अलजिलानी हबीब। थर्ड प्राइज के लिए कनीज फातिमा, अलजिलानी हबीब। कोई बात नहीं, तब्दील हो जाएगा। हाँ, और सेकंड प्राइज के लिए डॉक्टर इंशा शरफी। सेकंड प्राइज के लिए ड्रग आइडेंटिफिकेशन में इंशा अशरफी। और फर्स्ट प्राइज के लिए खान सदर मोहम्मद अशफाक। इस तरह से अगला मुकाबला स्लोगन राइटिंग का है। हाँ, कंसोलेशन के लिए डॉक्टर निधात नसीम।
और थर्ड प्राइज के लिए इंशा अशरफी, मीनू धोनी, इंशा अशरफी एंड डॉक्टर मीनू धोनी। और सेकंड प्राइज के लिए डॉक्टर शहबार अंजुम, शहबार अंजुम। इंशा शरफी, मीनू धोनी, धोनी थर्ड प्राइज के लिए हैं, और सेकंड के लिए शहबार अंजुम। और इस तरह से फर्स्ट प्राइज के लिए डॉक्टर अनम सुगरा। फोक सॉन्ग, फोक सॉन्ग में थर्ड प्राइज के लिए थर्ड प्राइज के लिए राशिद उमर अंसारी एंड टीम, डॉक्टर राशिद उमर अंसारी, मोहम्मद आसिम और उमैस अहमद। सेकंड प्राइज के वाली टीम जो है, सब अंसारी वाली टीम, वो तैयार हो जाए। हाँ हाँ जी जी जी, ये हो जाए फोक सॉन्ग। थर्ड प्राइज के लिए राशिद उमर अंसारी, और सेकंड प्राइज जो टीम है सबा अंसारी ग्रुप। सबा अंसारी, मोमिन नबीला, अलीजा काजिम, रिफात जहां। आप लोगों से गुजारिश है कि तालियों से अपने लोगों को के हौसले बढ़ाएं, तालियों से इस्तकबाल करें। उन लोगों से बहुत बेहतर है जिन्होंने जिनसे इन्होंने मुकाबला जीता है, और उसके अलावा उसमें मुकाबले में बराबर मेहनत की है। फर्स्ट प्राइज के लिए डॉक्टर बीनिश बशीर, डॉक्टर मिधर नसीम, डॉक्टर बीनिश बशीर, असबत रशीद, अनफायकार आधार। डॉक्टर बीनिश बशीर, मिधर नसीम, असबत रशीद राशिद और फायका राथर। अब मैं मुशाहिद सर से दरख्वास्त करूंगा, और वसीम और रहमान भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना देर खड़े होकर के सुबह से ही मुस्तकिल हमारी हिम्मत अफजाई कर रहे हैं। तो मैं प्रोफेसर मुशाहिद रजा साहब से गुजारिश करूंगा कि वो जो है हमारे इनाम याफ्तगान की का हौसला अफजाई करें। स्पीच कंपटीशन में थर्ड प्राइज है डॉक्टर हेरा नायाब, डॉक्टर हेरा नायाब। और सेकंड की जो है डॉक्टर उजैर यूसुफ मीर, उजैर यूसुफ मीर एंड डॉक्टर असमत राशिद, तो लोगों ने शेयर किया। उजैर यूसुफ मीर एंड डॉक्टर असमत राशिद। और फर्स्ट प्राइज के लिए है मिधात नसीम। स्पीच कंपटीशन उर्दू में है, कंसुलेशन के लिए डॉक्टर आरिफ हुसैन, फर्स्ट डॉक्टर मिधात नसीम। स्पीच कंपटीशन उर्दू की टीम तैयार हो जाए।
अच्छा, आप लोग जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। डॉक्टर निधात नसीम के फादर तशरीफ लाए हैं फर्स्ट प्राइज जीतने के लिए। कश्मीर से बेचारे सफर करके आए, इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। हाँ, स्पीच कंपटीशन उर्दू, आरिफ हुसैन, कंसोलेशन के लिए आरिफ हुसैन। और थर्ड के लिए डॉक्टर इस्मत। और सेकंड के लिए मोहम्मद सलमान। थर्ड के लिए डॉक्टर इस्मत, थर्ड के लिए मोहम्मद सलमान, और फर्स्ट के लिए अंसार अहमद। गजल सिंगिंग डॉक्टर अंसार अहमद। गजल सिंगिंग में टीम। गजल सिंगिंग में थर्ड प्राइज है कमरुद्दीन एंड रिफात जहां। कमरुद्दीन एंड रिफात जहां। थर्ड प्राइज के लिए कमरुद्दीन और डॉक्टर रिफात जहां। थर्ड प्राइज के लिए डॉक्टर कमरुद्दीन, डॉक्टर रिफात जहां, और सेकंड के लिए राशिद अंसारी। और फर्स्ट के लिए डॉक्टर उजैर यूसुफ मीर। और हजल कंपटीशन की टीम तैयार हो जाए। कंसोलेशन के लिए डॉक्टर शहवार अंजुम सैयद शाहिद। शहवार अंजुम। कंसोलेशन। और थर्ड प्राइज के लिए शेख मोहम्मद आतिफ अफजाल। हाँ हाँ। और थर्ड प्राइज के लिए डॉक्टर शेख मोहम्मद आतिफ अफजाल। सेकंड के लिए डॉक्टर मोहम्मद सलमान की टीम। डॉक्टर मोहम्मद सलमान की टीम। सलमान। और फर्स्ट के लिए डॉक्टर शेख तलत नसरीन। वापस जाना। और मुशाहिद सर का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने जो है। हाँ, अब मैं डॉक्टर खालिद सर को बुलाता हूं कि वो जो है अपने हाथों से हमारे तलबा और तालिबात को इनामात से नवाजें। इसमें डम शरेट्स हैं। इसमें कंसोलेशन के लिए है जेबा अख्तर एंड टीम। अनम सुगरा जेबा अख्तर। दम शरार्स में है कंसोलेशन के लिए जेबा अख्तर और अनम सुगरा। हम्म। और सेकंड प्राइज के लिए डॉक्टर शेख तलत और डॉक्टर शेख मोहम्मद आतिफ। दम शरार्स का कंसोलेशन के लिए डॉक्टर जेबा अख्तर और अनम सुगरा। थर्ड प्राइज के लिए डॉक्टर जेबा और जोया। थर्ड प्राइज जेबा एंड टीम। डॉक्टर जेबा एंड टीम। सेकंड के लिए डॉक्टर शेख तलत एंड टीम। जाओ 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 जाओ। और फर्स्ट प्राइज के लिए डॉक्टर शहवान अंजुम एंड अक्सा।
एक्सटेम्पोर स्पीच की टीम तैयार हो जाए। एक्सटेम्पोर स्पीच थर्ड प्राइज के लिए डॉक्टर सादिया। और सेकंड के लिए डॉक्टर शहरयार। थर्ड एक्सटेम्पोर स्पीच है सादिया नहीं, अच्छा शी इज नॉट देयर। थर्ड के लिए डॉक्टर सादिया, सेकंड के लिए डॉक्टर शहरयार और फर्स्ट के लिए डॉक्टर इस्मत। फर्स्ट के लिए डॉक्टर इस्मत और बैतबाजी की टीम अब तैयार हो जाए। में थर्ड प्राइज के लिए डॉक्टर राशिद उमर अंसारी और एंड टीम। डॉक्टर राशिद उमर अंसारी एंड टीम। डॉक्टर राशिद उमर अंसारी एंड टीम। वो कोई भी ले लो। हाँ? ये वाला ना। सेकंड के लिए डॉक्टर मोहम्मद सलमान एंड टीम। डॉक्टर मोहम्मद सलमान एंड टीम सेकंड। और फर्स्ट प्राइज के लिए डॉक्टर उमैस अहमर अंसारी उज़मा शेख तलत एंड टीम। अब मैं डॉक्टर रजा अहमद साहब का खालिद रजा भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा अच्छा चलो चल मुझे लगता है। अच्छा फर्स्ट टीम। हाँ 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 हाँ। फर्स्ट के लिए डॉक्टर उमैर अहमद, उमैस अहमद अंसारी उज़मा शेख तलत। हम्म। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद भाई, आपने जो है अपने हाथों से लोगों को इनामात से नवाजे। अब मैं डॉक्टर रईसुद्दीन साहब को डॉक्टर रईसुद्दीन साहब को से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और इनामात से नवाजें। डॉक्टर रईसुद्दीन साहब जो ओमान से आए हुए हैं। मेहंदी कंपटीशन है इसमें। मेहंदी कंपटीशन में थर्ड प्राइज के लिए शेयर किया दो लोगों ने, निम्रा इरफान और निशात राव। हाँ हाँ हाँ। ये क्या हो गया? सेकंड प्राइज के लिए डॉक्टर अंसारी उस्मा शमीम अहमद। हाँ हाँ। मेहंदी में सेकंड प्राइज के लिए डॉक्टर अंसारी उस्मा। और फर्स्ट प्राइज के लिए डॉक्टर मरलीन सैफरान। हेल्थ क्विज में थर्ड प्राइज जो हासिल किया है डॉक्टर शेख मोहम्मद आतिफ अफजाल एंड टीम। डॉक्टर शेख मोहम्मद आतिफ अफजाल एंड टीम।
सेकंड वाली टीम डॉक्टर नियाजी अब्दुल्ला की टीम तैयार हो जाए। डॉक्टर नियाजी अब्दुल्ला की टीम तैयार हो जाए हेल्थ क्विज में। डॉक्टर नियाजी अब्दुल्ला। आप लोग तालियों की गड़गड़ाहट से ऑडिटोरियम को में समा बनाए बनाए रखें, बनाए रखें। सेकंड के लिए डॉक्टर नियाजी अब्दुल्ला एंड टीम, और फर्स्ट के लिए डॉक्टर जेबा सैफ एंड टीम। हेल्थ क्विज, हेल्थ क्विज में फर्स्ट प्राइज के लिए वो जो जेबा सैफ एंड टीम है। हाँ, बहुत शुक्रिया रईस भाई। अब मैं प्रोफेसर गुलामुद्दीन सूफी साहब से दरखास्त करता हूँ कि वो जो है इनामात अपने हाथों से इनामात से नवाज तकसीम करें। हाँ, आइडिया था लास्ट। आइडिया थान में टॉप 5 टीमें आई हैं, जिसमें कंसोलेशन के लिए है नवीदुल्ला एंड टीम। नवीदुल्ला एंड टीम, नवीदुल्ला एंड टीम। डॉक्टर हामिदुद्दीन साहब से गुजारिश करूंगा कि जो आइडिया आप लेके आए थे वो मैच्योर हो चुका है, तो मेरे ख्याल में इनामात भी अपने हाथों से नवाजें तो अच्छा रहेगा। हाँ, थर्ड प्राइज में जो थर्ड के लिए 2 टीमों ने शेयर किया है, मुनीबा हारून, हेरा नायाब, शाकिर नजीर, सबा सल्तना, शहबार अंजुम। हेरा नायाब, शाकिर नजीर, मुनीबा हारून। मुनीबा हारून, हेरा नायाब, शाकिर नजीर। हाँ, सबा सल्तनत एंड टीम। सबा सल्तनत एंड टीम। सेकंड वाली टीम तैयार हो जाए, डॉक्टर सुमैया, डॉक्टर सुमैया जकी एंड टीम, डॉक्टर सुमैया एंड टीम। और फर्स्ट के लिए शेख जोया और मोहम्मद शहरियार। सेकंड के लिए डॉक्टर सुमैया एंड टीम, सुमैया जकी, शेख, कहकशा,
मुबशरा फातिमा। सेकंड प्राइज के लिए शायद नहीं हो लोग, और फर्स्ट प्राइज के लिए डॉक्टर शहरयार एंटीन। इस तरह से कल्चरल एक्टिविटी और आइडियाथॉन का मुकाबला मुकम्मल हुआ। अब स्पोर्ट्स एक्टिविटी का प्रोग्राम शुरू हुआ चाहता है। अब मैं प्रोफेसर गुलामुद्दीन साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हिम अपने हाथों से इनामात तकसीम किए और बच्चों की हौसला अफजाई की। अब मैं डॉक्टर प्रोफेसर इस्मा शमीम साहिबा से गुजारिश करूंगा कि वो इस इनामात तकसीम के लिए तशरीफ लाएं। डॉक्टर हामिदुद्दीन साहब के लिए खास तौर पर शुक्रिया और उनके लिए जोरदार तालियों से इस्तकबाल होना चाहिए कि उन्होंने बाकायदा न सिर्फ यूनिट डेवलप किया बल्कि उसको इस काबिल बनाया, इंस्टीट्यूट के लिए काबिल रश जो है इवेंट कायम किया डॉक्टर हामिदुद्दीन साहब। अब मैं प्रोफेसर इस्मत शमीम मैडम से गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ लाएं। इसमें कल्चरल एक्टिविटी में सबसे पहले कल्चरल खत्म हुआ और स्पोर्ट्स इवेंट्स में सबसे पहले मुकाबला चेस के लिए स्टूडेंट्स टीम में रनर की टीम है मोहम्मद शहरयार। चेस में मोहम्मद शहरयार रनर, और विनर है मोहम्मद निजार मोहम्मद मुश्ताक। अच्छा, मुश्ताक 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 साहब फ्रॉम श्रीलंका। इनके लिए खास तौर पर तालियों से इस्तकबाल करें। टीचिंग स्टाफ में इसकी टीम तैयार हो जाए। डॉक्टर अब्दुल अजीज साहब रनर और डॉक्टर मोहम्मद नायाब साहब विनर चेस में। चेस के लिए डॉक्टर अब्दुल अजीज साहब रनर एंड डॉक्टर मोहम्मद नायाब साहब विनर। टीचिंग स्टाफ में एक ही डिपार्टमेंट के हैं और दोस्त भी हैं, तो मुझे लगता है हो सकता है आगे पीछे। आज मैं तो कल तुम। नॉन टीचिंग स्टाफ में मिस्टर नवीन कुमार रनर, मिस्टर नवीन कुमार और डॉक्टर नंदा किशोर विनर। नॉन टीचिंग स्टाफ नवीन कुमार रनर और नंद किशोर विनर। स्टूडेंट्स वीमेन अनम सुगरा रनर और निकहत आरा विनर। स्टूडेंट्स वीमेन, अच्छा ठीक, डॉक्टर अनम सुगरा रनर और डॉक्टर निकहत आरा विनर। चेस के बाद चेस का मुकम्मल। डॉक्टर निकहत आरा विनर। टीचिंग स्टाफ वुमेन में है डॉक्टर तस्वीर हकीम अंसारी रनर, डॉक्टर तस्वीर हकीम अंसारी रनर और डॉक्टर सबा खानम विनर। डॉक्टर तस्वीर हकीम अंसारी रनर और डॉक्टर सबा खानम विनर चेस। आप ले लीजिए, ले लो कोई भी ले लो। डॉक्टर सबा खानम, वो शायद नहीं है, उनकी जगह पर कोई और इनाम लेना चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। अब मैं सर आरिश मोहम्मद खान शेरवानी साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और इनामात तकसीम करें। प्रोफेसर मोहम्मद आरिश खान शेरवानी। कैरम सिंगल मिसेस सीमा अंजुम रनर, मिसेस सीमा अंजुम। नॉन टीचिंग स्टाफ नहीं कुछ नहीं, वही। अरे सॉरी। कैरम सिंगल में स्टूडेंट्स मेन, इसमें मोहम्मद तस्लीम रनर। सीमा मैडम थोड़ा सा, मोहम्मद तस्लीम रनर, मोहम्मद तस्लीम और मोहम्मद निजार।
ओ मुश्ताक भाई फ्रॉम श्रीलंका. मोहम्मद तस्लीम और मुश्ताक साहब. मोहम्मद मुश्ताक. टीचिंग स्टाफ में अजीजुर रहमान रनर और डॉक्टर तारिक नदीम खान विनर. डॉक्टर अजीजुर रहमान. डॉक्टर अजीजुर रहमान रनर और डॉक्टर तारिक नदीम खान विनर. नॉन टीचिंग स्टाफ में सिंगल में है मिस्टर परवेज आलम रनर. मिस्टर परवेज आलम रनर और एम समोइल परवीन. और एम समोइल परवीन विनर. परवेज आलम रनर और एम समोइल विनर. एम समोइल परवीन विनर. स्टूडेंट्स वीमेन की टीम तैयार हो जाए सिंगल में. स्टूडेंट्स वीमेन में शहवार अंजुम रनर और हाला फहद विनर. शहवार अंजुम और हाला फहद विनर. टीचिंग स्टाफ वीमेन में इरम नाज रनर और डॉक्टर महजबीन फातिमा विनर. डॉक्टर एरम नाज रनर और डॉक्टर महजबीन फातिमा विनर ना. कैरम सिंगल में नॉन टीचिंग स्टाफ वीमेन में है मिसेस सीमा अंजुम रनर और मिसेस गीता आरसन कदा विनर. खत्म. किसको बुला. मिसेस गीता आर सुनकदा विनर. बहुत बहुत शुक्रिया आरिश भाई. जज़ाकल्लाह खैर. अब मैं प्रोफेसर आबिद अली अंसारी सर से गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ लाएं और अपने हाथों से इनामात तकसीम करें. कैरम डबल का मुकाबला है स्टूडेंट्स मेन. स्टूडेंट्स मेन में डबल में है डॉक्टर उमर हामिद वानी और डॉक्टर दानिश अंसारी. डॉक्टर दानिश अंसारी. उमर हामिद वानी और डॉक्टर दानिश अंसारी. रनर की टीम है ये डबल. और विनर की टीम है मुश्ताक साहब फ्रॉम श्रीलंका एंड मोहम्मद रजाउल्ला. हामिद वानी एंड डॉक्टर दानिश अंसारी. कैरम डबल में है मुश्ताक साहब विनर और डॉक्टर मोहम्मद रजाउल्ला इनके साथ. मोहम्मद रजाउल्ला और मोहम्मद मुश्ताक. टीचिंग स्टाफ में इनकी टीम तैयार हो जाए. रनर में डॉक्टर मोहम्मद रियाजुद्दीन एंड डॉक्टर अजीजुर रहमान. टीचिंग स्टाफ में डबल वाली टीम है जो डॉक्टर मोहम्मद रियाजुद्दीन एंड डॉक्टर अजीजुर रहमान. और विनर में डॉक्टर तारिक नदीम खान एंड डॉक्टर खलीकुर रहमान. डॉक्टर तारिक नदीम खान एंड डॉक्टर खलीकुर रहमान. डॉक्टर तारिक नदीम खान एंड डॉक्टर खलीकुर रहमान.
नॉन टीचिंग स्टाफ में इनकी टीम तैयार हो जाए। नॉन टीचिंग स्टाफ में इनकी टीम तैयार हो जाए। मिस्टर एम समोइल परवीन एंड मिस्टर नंद किशोर। डॉक्टर मिस्टर एम समोइल परवीन एंड मिस्टर नंद किशोर के रनर, और जावेद अख्तर काजी एंड मोहम्मद गयास शरीफ विनर। आवाज कम है। अच्छा, डॉक्टर एम समोइल परवीन एंड मिस्टर नंद किशोर रनर, और विनर की टीम है जावेद अख्तर काजी और मोहम्मद गयास शरीफ। जावेद अख्तर काजी और मोहम्मद गयास शरीफ। कैरम डबल अभी है। स्टूडेंट्स वुमेन कैरम डबल में है डॉक्टर मजीदुन निसा एंड डॉक्टर कासमी नमरा इकबाल रनर। मजीदुन निसा और नमरा इकबाल अहमद रनर, और विनर है अंसारी उज़मा शमीम और डॉक्टर शेख रश्मीन। डॉक्टर मजीदुन निसा, डॉक्टर कासमी नमरा इकबाल, और विनर में डॉक्टर अंसारी उज़मा और डॉक्टर शेख रश्मीन। टीचिंग स्टाफ वुमेन में है डॉक्टर तस्फिया हकीम अंसारी एंड डॉक्टर सबा खानम रनर। डॉक्टर तस्फिया हकीम अंसारी एंड डॉक्टर सबा खानम। और विनर की टीम है डॉक्टर महजबीन फातिमा एंड डॉक्टर एरम नाज। टीचिंग स्टाफ वुमेन में डॉक्टर महजबीन फातिमा और डॉक्टर एरम नाज। नॉन टीचिंग स्टाफ की टीम, नॉन टीचिंग स्टाफ वुमेन की टीम तैयार हो जाए। नॉन टीचिंग स्टाफ वुमेन, रनर में मिसेस शाजू और मिसेस वीना। शाजू एंड मिस वीना है नहीं शायद। सीमा अंजुम और गीता विनर है। अच्छा, शाजू और वीना, सीमा अंजुम एंड गीता। बहुत 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 शुक्रिया हसीब भाई, आबिद भाई। अब मैं प्रोफेसर अब्दुल हसीब अंसारी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं। और स्टूडेंट्स मेन में जो विनर की टीम है डॉक्टर मोहम्मद नजीब बैडमिंटन सिंगल, बैडमिंटन सिंगल स्टूडेंट्स मेन, मोहम्मद नजीब रनर। मोहम्मद नजीब, क्या बात है, आप लोग किसी खास शख्स पर ही तालियां बजाते, सब लोग पर भी तालियां बजाएं थोड़ा सा। हाँ, डॉक्टर मोहम्मद नजीब और डॉक्टर डॉक्टर उमर हामिद वानी विनर। टीचिंग स्टाफ मेन, टीचिंग स्टाफ मेन की टीम तैयार हो जाए। डॉक्टर मोहम्मद नायाब रनर, डॉक्टर मोहम्मद नायाब रनर और डॉक्टर मोहम्मद अरशद जमाल विनर। डॉक्टर मोहम्मद नायाब रनर और डॉक्टर मोहम्मद अरशद जमाल विनर। नॉन टीचिंग स्टाफ मेन की टीम तैयार हो जाए। डॉक्टर मोहम्मद जीशान, ओ मिस्टर मोहम्मद जीशान, सॉरी मिस्टर मोहम्मद जीशान, मिस्टर मोहम्मद जीशान और नवीन कुमार विनर।
मोहम्मद जीशान रनर, नवीन कुमार विनर। जीशान नहीं, मोहम्मद जीशान रनर शायद वो नहीं है, नवीन कुमार विनर। स्टूडेंट्स वीमेन की टीम तैयार हो जाए। डॉक्टर इस्मत रनर, डॉक्टर इस्मत और डॉक्टर अंसारी, दोनों वही लेंगे, दोनों वही लेंगे, वो है नहीं, जीशान नहीं। डॉक्टर इस्मत रनर और डॉक्टर अंसारी उज़मा शमीम अहमद विनर। डॉक्टर अंसारी उज़मा शमीम। टीचिंग स्टाफ वीमेन की टीम तैयार हो जाए। डॉक्टर एरम नाज रनर और डॉक्टर महजबिन फातिमा विनर। डॉक्टर एरम नाज और डॉक्टर महजबिन फातिमा विनर। बहुत सारा प्राइज जीत लिया आपने तो। सदका वगैरह भी निकालिए। बैडमिंटन सिंगल नॉन टीचिंग स्टाफ वुमेन, सीमा अंजुम रनर और गीता विनर। सीमा अंजुम रनर और गीता विनर, नॉन टीचिंग स्टाफ। डबल बैडमिंटन डबल स्टूडेंट्स में मोहम्मद मुश्ताक साहब एंड मोहम्मद नजीब रनर। मोहम्मद मुश्ताक एंड मोहम्मद नजीब रनर। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें आप लोग। मोहम्मद मुश्ताक एंड मोहम्मद नजीब। और विनर जो है रईस अहमद और उमर हामिद वानी। विनर रईस अहमद और उमर उमर हामिद वानी। रईस अहमद और उमर हामिद वानी विनर। टीचिंग स्टाफ में डबल में है डॉक्टर मोहम्मद नायाब और डॉक्टर अब्दुल अजीज रनर। डॉक्टर मोहम्मद नायाब एंड डॉक्टर अब्दुल अजीज। डॉक्टर मोहम्मद नायाब एंड डॉक्टर अब्दुल अजीज। विनर के लिए डॉक्टर अरशद जमाल एंड डॉक्टर अब्दुल मुबीन। डॉक्टर अरशद जमाल और डॉक्टर अब्दुल मुबीन साहब। नॉन टीचिंग स्टाफ में इनकी टीम तैयार हो जाए। मिस्टर मल्लिकार्जुन और मिस्टर नवीन कुमार। मल्लिकार्जुन एंड नवीन कुमार रनर। मल्लिकार्जुन और नवीन कुमार रनर। और मोहम्मद जीशान एंड तारिक हफीज रन विनर। मोहम्मद जीशान एंड तारिक हफीज। दोनों एक साथ ही हैं। बैडमिंटन डबल बैडमिंटन डबल में है स्टूडेंट्स वीमेन में
रमशा अरशद और रायफा अजहर खान खान रनर हैं। रमशा अरशद और रायफा रनर। रमशा अरशद और डॉक्टर रायफा अजहर। और विनर में है गजाला तस्कीन और डॉक्टर चंदना। विनर में है गजाला तस्कीन एंड डॉक्टर चंदना। टीचिंग वर्सेस नॉन टीचिंग स्टाफ वुमेन। टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ वुमेन। यानी टीचिंग वर्सेस नॉन टीचिंग। मिसेस गीता और सीमा अंजुम रनर। गीता एंड सीमा अंजुम रनर। और डॉक्टर महजबीन फातिमा एंड डॉक्टर एरमनाज विनर। डॉक्टर महजबीन फातिमा और डॉक्टर एरमनाज। बहुत बहुत शुक्रिया हसी भाई, शायद आपके हाथ थक गए होंगे। मैं चाहता हूँ प्रोफेसर और प्रोफेसर सैयद शाह आलम साहब जो बर वक्त इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, मैं आपको इल्तमास करता हूँ कि आप जो है अपने हाथों से इनामात तकसीम करें। टेबल टेनिस सिंगल का मुकाबला है जिसमें स्टूडेंट्स में डॉक्टर मुनव्वर हुसैन रनर। मुनव्वर हुसैन। और मोहम्मद आतिफ अफजाल विनर। मोहम्मद आतिफ अफजाल विनर। टीचिंग स्टाफ में इनकी टीम तैयार हो जाए। टीचिंग स्टाफ में सिंगल के लिए डॉक्टर मलिक इतरत। डॉक्टर मलिक इतरत रनर। डॉक्टर मलिक इतरत। और डॉक्टर अजीजुर रहमान है विनर। टेबल टेनिस सिंगल में नॉन टीचिंग स्टाफ में एम सामुएल परवीन रनर और मोहम्मद फाजिल विनर। एम सामुएल परवीन रनर और मोहम्मद फाजिल विनर। स्टूडेंट्स वुमेन हाला फहद रनर और शेख रश्मीन विनर। हाला फहद। हाला फहद। हाला फहद रनर और शेख रश्मीन विनर। टीचिंग वर्सेस नॉन टीचिंग स्टाफ वुमेन। सीमा अंजुम रनर। और उम्मे ऐमन विनर। सीमा अंजुम रनर, उम्मे ऐमन विनर। टेबल टेनिस डबल में स्टूडेंट्स मैन की टीम तैयार हो जाए। टेबल टेनिस डबल में स्टूडेंट्स मैन उमैस अहमद एंड मोहम्मद समीद। उमैस अहमद एंड मोहम्मद समीद रनर। उमैस अहमद एंड मोहम्मद समीद शाह। और विनर है शेख मोहम्मद आतिफ और मोहम्मद मुजम्मिल।
Muhammad Atif and Muhammad Muzammil. Teaching staff men. टीचिंग स्टाफ मैन में डॉक्टर मोहम्मद नायाब और डॉक्टर हामिदुद्दीन रनर. डॉक्टर मोहम्मद नायाब एंड डॉक्टर हामिदुद्दीन रनर. टीचिंग स्टाफ मैन डॉक्टर मोहम्मद नायाब एंड डॉक्टर हामिदुद्दीन रनर. हाँ हाँ. डॉक्टर मोहम्मद नायाब एंड डॉक्टर हामिदुद्दीन. और विनर में है डॉक्टर अजीजुर रहमान एंड डॉक्टर मोहम्मद रियाजुद्दीन. विनर में है डॉक्टर अजीजुर रहमान और डॉक्टर मोहम्मद रियाजुद्दीन. टीचिंग स्टाफ में डबल की टीम है मल्लिकार्जुन और मिस्टर नवीन कुमार. मल्लिकार्जुन और मिस्टर नवीन कुमार रनर. और सामुएल एंड मिस्टर नंद किशोर विनर. मल्लिका अर्जुन एंड नवीन कुमार. और विनर है सामुएल परवीन और नंद किशोर. स्टूडेंट्स वीमेन की टीम तैयार हो जाए. रायफा अजहर खान एंड डॉक्टर शेख रश्मी रनर. मिस्टर सामुएल परवीन एंड नंद किशोर विनर. स्टूडेंट्स वीमेन में डबल की टीम रायफा अजहर खान और डॉक्टर शेख रश्मीन. डॉक्टर हाला फहद और डॉक्टर निकाह तारा. रायफा अजहर शेख रश्मीन. डॉक्टर हाला फहद एंड डॉक्टर निकाह तारा. अब बारी है आउटडोर स्पोर्ट्स इवेंट्स की. बास्केटबॉल टीम नॉन टीचिंग स्टाफ और वर्सेस जो है टीचिंग, जिसमें रनर की टीम है शौकत बशीर लोन. लोन कैप्टन है शौकत बशीर लोन और उनकी टीम. बास्केटबॉल बास्केटबॉल शौकत बशीर लोन, जिसमें अजीजुर रहमान है, मोहम्मद रियाजुद्दीन है, शौकत बशीर है, मोहम्मद तस्लीम है, अंसारी दानिश है, शेख मुजफ्फर है और मोहम्मद मुश्ताक है, महबूब पाशा है. ये रनर की टीम है बास्केटबॉल की. वो इनका वो तो भी होगा. अरे ये नहीं पहना ये. मेडल पहन लो मेडल. विनर की टीम है नंद किशोर एंड टीम, जिसमें
तारिक हफीज, मोहम्मद जीशान, मोहम्मद फाजिल, मंजुनाथ, साजिद हुसैन, सद्दाम हुसैन और चेतन। वही रखा थे तारिक भाई। विनर की टीम है बास्केटबॉल में नंद किशोर, तारिक हफीज, मोहम्मद जीशान, मोहम्मद फाजिल, मंजुनाथ, साजिद हुसैन, सद्दाम हुसैन, चेतन। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हाँ, रिव्यू नहीं है क्या? सबको एक एक दे दीजिए। वॉलीबॉल की टीम तैयार हो जाए। रनर की टीम है रमीज राजा, रमीज राजा, रमीज राजा एंड टीम, रमीज राजा एंड टीम। ठीक है, हाँ। रमीज राजा एंड टीम, सेकंड ईयर सीनियर। इरशाद अहमद वानी, राजा इरफान, नवेदुल्ला, जागेश कुमार, रजाउल्ला, मुनव्वर हुसैन, मोहम्मद मुजम्मिल। और विनर की टीम है उमर हामिद वानी, फाइनल ईयर। उमर हामिद वानी, उजैर यूसुफ मीर, रईस अहमद, तहजीब जमाल, कमरुद्दीन, सैफ जावेद, मोहम्मद अदनान अंसारी, गुलाम नबी। फाइनल ईयर की टीम है विनर डॉक्टर उमर हामिद वानी, डॉक्टर उजैर यूसुफ मीर, रईस अहमद मीर, तहजीब जमाल, कमरुद्दीन, सैफ जावेद, मोहम्मद अदनान अंसारी और गुलाम नबी। हाँ, ये है मोबाइल। हाँ। क्रिकेट की टीम तैयार हो जाए। क्रिकेट टीम, नॉन टीचिंग स्टाफ, रनर में नंद किशोर एंड टीम, नंद किशोर एंड टीम क्रिकेट, नंद किशोर एंड टीम। मोहम्मद जीशान, साजिद हुसैन, जाफर पाशा, तारिक हफीज, सद्दाम हुसैन, परवेज आलम, मंजूनाथ, सुरेश एम, लोहित कुमार, राजू एल, सचिन गोड़ा, शोएब अख्तर काजी, नसरुल्ला खान। क्रिकेट टीम, नॉन टीचिंग स्टाफ, रनर नंद किशोर एंड टीम, नंद किशोर, मोहम्मद जीशान,
Final year students winner, Tahzeeb Jamal and team. Final year students winner, Tahzeeb Jamal, Kamruddin. Tahzeeb Jamal and team. Tahzeeb Jamal, Kamruddin, Umar Hamid Wani, Uzair Yusuf Mir, Rais Ahmad, Mohammad Shahriyar, Mohammad Asif, Saif Javed, Mohammad Adnan Ansari, Mohammad Salman, Ilyas Hussain, Sayyid Salman Ali, Mohammad Salamullah, Abdul Razik. फुटबॉल की टीम. Team. हाँ. 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 NIM की तारीख का सबसे दिलचस्प मुकाबला अगर मैंने देखा तो फुटबॉल टीम में देखा. 45 साल के जवानों ने 25 साल के बूढ़ों को किस तरह से शिकस्त दी है वो समझ से बाहर है. ना सिर्फ फर्स्ट ईयर, फाइनल, तमाम लोगों को शिकस्त दी. उसमें रनर टीम है मोहम्मद फाजिल एंड टीम. मोहम्मद फाजिल एंड टीम. नंद किशोर, तारिक हफीज, जफर पाशा, मोहम्मद जीशान, सद्दाम हुसैन. अभी लगा दो कहाँ पे बैठो. अजीज सर आ जाइए. और विनर की टीम है डॉक्टर अजीजुर रहमान एंड टीम. डॉक्टर अब्दुल अजीज, अरशद जमाल, वसीम अहमद. ये और बात, मैंने एक गेम भी नहीं खेला. डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान, मोहम्मद अज्जद खान, अजीजुर रहमान, मोहम्मद रियाजुद्दीन, ताबिश जमाल, परवेज आलम. और यकीनन NIM बहुत शानदार मुकाबला रहा ये. इस टीम ने तमाम लोगों को शिकस्त से फास दी. इमरान खान जो है बेचारे जख्मी हो गए उनके जख्म के नतीजे में. और फाइनल में 3-1 से जीता था ना. 3-1 से मुकाबला टीचिंग स्टाफ की टीम ने जीत लिया. अब्दुल अजीज, अरशद जमाल,
वसीम अहमद मैं हूं, लेकिन मैंने कोई गेम नहीं खेला। इमरान अहमद, इमरान खान, अजद खान, रईस अजीजुर रहमान, मोहम्मद रियाजुद्दीन, ताबिश जमाल और परवेज आलम। खेलेंगे सर अब बचा है वो जो मोबाइल में आपको भेजा हुआ कोऑर्डिनेटर और वॉलंटियर। बट लास्ट बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब मैं डॉक्टर वसीम रहमान साहब से गुजारिश करता हूं कि ज़्यादा लोग नहीं हैं, बहुत ही कुछ चंद कोऑर्डिनेटर हैं और चंद वॉलंटियर्स हैं, उनकी हौसला अफजाई के लिए जो इस मुकाबले को कामयाब बनाने में हम वक्त लगे रहे, उनको छोटे से मोमेंटो के साथ उनकी हौसला अफजाई करें। जिसमें पहला नाम है कोऑर्डिनेटर्स में डॉक्टर रेणुका बीएन। डॉक्टर रेणुका बीएन। नेक्स्ट है डॉक्टर शारिक शमसी। डॉक्टर शारिक शमसी। डॉक्टर अब्दुल अजीज। डॉक्टर अब्दुल अजीज। डॉक्टर मोहम्मद अरशद जमाल। डॉक्टर मलिक इतरत। डॉक्टर अब्दुल मुबीन। डॉक्टर इरम नाज। कोऑर्डिनेटर्स डॉक्टर इरम नाज, डॉक्टर तस्बिया हकीम अंसारी, डॉक्टर मोहम्मद रियाजुद्दीन, डॉक्टर मोहम्मद रियाजुद्दीन, डॉक्टर सबा खानम, डॉक्टर मोहम्मद रियाजुद्दीन, डॉक्टर सबा खानम। वॉलंटियर्स में वॉलंटियर्स में पीजी कुछ स्टूडेंट थे जिन्होंने काफ़ी मेहनत की इस इवेंट्स को कामयाब बनाने में। उसमें 8 मेंबर हैं। डॉक्टर शहवार अंजुम। शहवार अंजुम। हाँ, शहवार अंजुम। मुनव्वर हुसैन। शहवार अंजुम, मुनव्वर हुसैन, मोहम्मद मुर्शिद, मोहम्मद मुजम्मिल, मोहम्मद नजीब, हुमैरा जकी, अदीना शेख और जेबा सैफ। शहवार अंजुम, मुनव्वर हुसैन, मोहम्मद मुर्शिद, मोहम्मद मुजम्मिल, मोहम्मद नजीब, हुमैरा जकी, हुमैरा जकी, अदीना शेख,
बस एक और, अदीना शेख, जेबा सैफ, अदीना शेख, जेबा सैफ। भाई को बोलो। हाँ? 8 नहीं क्या? नहीं हो गया हो गया। अब मैं इस प्रोग्राम के रोहरवा प्रोफेसर अब्दुल हसीब अंसारी साहब के लिए खास मोमेंटो है। हाँ, सर 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 दो सर, इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में 2 लोगों का बहुत ज़्यादा किरदार रहा है, एक कल्चरल इंचार्ज और दूसरे स्पोर्ट इंचार्ज। सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा स्पोर्ट इंचार्ज डॉक्टर अजीजुर रहमान से कि आप तशरीफ लाएं और अपना मोमेंटो हासिल करें। डॉक्टर अजीजुर रहमान। एनआईएम की इंतहाई हरदिल अजीज हस्ती डॉक्टर वसीम अहमद कल्चरल इंचार्ज से गुजारिश है कि आप भी तशरीफ लाएं और अपना इनाम हासिल करें, मोमेंटो हासिल करें। और सबसे आखिरी चीज, ओवरऑल इंचार्ज इस पूरे यूनानी डे सेलिब्रेशन के प्रोफेसर अब्दुल हसीब अंसारी साहब, आपसे गुजारिश है कि आप भी तशरीफ लाएं और अपना मोमेंटो और सर्टिफिकेट हासिल करें। एक और आइडिया थॉन के हमारे इंचार्ज डॉक्टर हामिदुद्दीन साहब से गुजारिश है कि आप भी तशरीफ लाएं और अपना मोमेंटो हासिल करें। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई, हमारे अलीगढ़ के सीनियर और हमारे एक तरह हमारे दोस्त, और फिर तमाम बहुत सारे मरासिम हैं हमारे आपसे। अब ये प्रोग्राम जो जिसकी बुनियाद 2019 में पड़ी थी कल्चरल और स्पोर्ट्स एक्टिविटी के नाम से, 2016 में सबसे पहला यूनानी डे सीसीआरएम ने मनाया, और जिसमें हम लोग भी डिप्यूट हुए थे, मंसूर साहब का ज़माना था। उसके बाद में फिर इंचार्ज जुल्किफ साहब, सर मोहम्मद जुल्किफ साहब हुआ करते थे इंचार्ज डायरेक्टर। तो 2019 में उन्होंने इसकी बुनियाद डाली, और जब से रफ्ता रफ्ता ये प्रोग्राम बहुत ही कामयाब और कामयाब से कामयाब होता रहा, और जिसका रिफ्लेक्शन आज आप देख रहे हैं कि इतना शानदार इसका ऑर्गेनाइजेशन, खासतौर पर प्रोफेसर सैयद शाह आलम साहब की सरपरस्ती में जितने नज़्म व ज़ब्त के साथ हुआ, ऑडिटोरियम जिस करीने के साथ सजाया गया, ये एक डायनामिक और विजनरी शख्स की देन है। और उसके अलावा नब्ज़ व ज़ब्त डिसिप्लिन का ये एक रिफ्लेक्शन कहें। फिर उसके बाद में जो इसमें सेमिनार हुए और उसमें जो लेक्चर का इनेकाद किया गया, मुझे लगता है कि बहुत ही हम सब लोगों के लिए बहुत असरदार था, बहुत ही फायदेमंद था। और टॉपिक्स भी मैं इसमें कोई छुपी हुई नहीं है। प्रोफेसर सैयद शाह आलम साहब जो इस इदारे के डायरेक्टर हैं, आपने ही टॉपिक दिया था कि इन मौज़ूआत पे हमें स्पीकर्स चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मेरे ख्याल में ये हम लोग कामयाब रहे इस प्रोग्राम को इनेकाद करने में। उसके तो मैं इस प्रोग्राम, चूँकि जाहिर बात है कोई भी प्रोग्राम किसी फर्द वाहिद से कामयाब नहीं होता, उसमें सबसे ज़्यादा जो जिसका वो होता ताउन, वो इदारे के सरपरस्त होता है। उसका जब तक उसका वो इशारा ना हो तो वो प्रोग्राम कामयाब नहीं हो सकता। तो सर ने हर तरह से हमें यकीन दहानी कराई कि आप प्रोग्राम को आगे बढ़ाइए, जो भी उसमें अखराजात हैं उसको इंशाल्लाह हम मैसर कराएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये गालिबन 4 फरवरी से पहला इसका वो हुआ, इससे राइटिंग से, और उससे पहले कल्चरल स्पोर्ट्स एक्टिविटी के 2-3 क्या नाम है इवेंट्स हुए।
तो हमारे तमाम फैकल्टीज़, तमाम असातिज़ा ने इसमें भरपूर ताउन किया, चाहे वो हकम के हैसियत से। जब भी हमने उनसे दरख्वास्त की, सारे के सारे लोग ने हर तरह से हमारी मदद की, अपने इल्म से और फिक्र से और तमाम चीज़ों से, और अपना कीमती वक्त अपना कीमती वक्त हमारे साथ सर्व किया। उसके अलावा तलबा की हौसला अफजाई की, जिससे कि लोग प्रोग्राम में शिरकत करें, और उस शिरकत का नतीजा है कि मुकाबला आपके सामने रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह कल्चरल में 15 किस्म के इवेंट्स हुए, और उन्हीं में से आइडियाथॉन भी एक निकल के आया, जिस इदारे के लिए मैं समझता हूँ आने वाले दिनों के लिए एक संग मेल साबित होगा, क्योंकि इससे फिक्री जिला मिलती है, और तलबा के अंदर एक शऊर पैदा होता है, और किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन, फिक्र को कैसे हम फिजिकल ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये प्रोफेसर सैयद शाह आलम साहब ने मुझसे खुद कहा था कि एक इनोवेटिव अप्रोच पर एक इवेंट्स रखो। फिर बाद में ये हुआ कि ऑलरेडी यहाँ पे और डॉक्टर हामिदुद्दीन साहब इस चीज़ को देखते हैं, मुझे तो मालूम नहीं था उससे पहले। फिर हामिदुद्दीन साहब से बात हुई, और फिर बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह वो उसका इनेकाद भी हुआ, उससे का इफ्तिताह भी किया गया। उसके अलावा आज का इवेंट जो है बेइंतहा कामयाब रहा। तो मैं तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ, तमाम असातिज़ा का जो और तमाम सुदूर का मुख्तलिफ शोबाजात के, कि उन्होंने इसको कामयाब करने में हर तरह से हमारे लिए ताउन किया। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं सबका नाम नहीं ले सकता, लेकिन मुझे लगता है कि तकरीबन सारे लोगों ने ही बढ़ चढ़ के हकम की हैसियत से जिम्मेदारियां संभाली, और अल्हम्दुलिल्लाह सबने दयानतदारी के साथ, इंसानी ख़ता तो इंसान मरकब ही है निस्यान और ख़ता से, तो ये कह नहीं सकते कि 100% जितना हो जाए वही 100% है। ये हमारे लिए कामयाबी है, और इंशाअल्लाह आइंदा भी होता रहेगा, इससे बेहतर होगा। तो और उसके अलावा मैं असातिज़ा के साथ साथ तलबा का, कि जो लोग इसमें शिरकत किए और उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और उसके अलावा आईटी टीम का, जो हमारे लिए इतना खूबसूरत मतलब माइक का इंतज़ाम किया, और डॉक्टर सादिक साहब का खास तौर पर कि ऑडिटोरियम को उन्होंने जिस तरह से रंग रूप दिया, ये यकीनन काबिल मुबारकबाद है। और वरना हम इतना कामयाब नहीं हो पाते। पहली बार इस तरह से स्टैंड, ये मीडिया यूनिट, फैकल्टी और तमाम चीज़ों का, ये एक अच्छी उसकी दलील है। और बिलखसूस डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ अंसारी साहब का तो मैं खास तौर पर शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि तमाम चीज़ों में आपकी सरपरस्ती रही, और वो हमेशा मतलब हकम के उसमें सिलेक्शन में भी, उसके अलावा तमाम चीज़ों में, रिजल्ट्स में भी आपका पूरा वो रहा कि जजेस कौन से बनेंगे, कैसे बनेंगे, कौन कितना बेहतर कर सकता है। और जब कोई नहीं होता था तो खुद भी बैठ जाते थे। तो इस तरह से प्रोग्राम जो है अपने वक्त पर होता रहा, और फाइनली जो है आज का वो दिन है कि जो हम उसमें कामयाब होते नज़र आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपने अहबाब का, और तमाम लोगों का, और तमाम असातिज़ा किराम का। बहुत सारे लोगों का नाम मैं नहीं ले सकता, क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है, 40 असातिज़ा हैं। और एमओयू जो है, ये आज इस इदारे के लिए तारीखी दिन है कि आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक यूनिट है, ट्रेडिशनल मेडिसिन में जो रिसर्च कराती है, उसके साथ एमओयू हुआ। ये इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एक अच्छा वो होगा। जैसा कि वसीम भाई फरमा रहे थे कि 2023 का डेटा है कि 70 बिलियन यूएस डॉलर का बिजनेस हुआ है। तो दूसरे लोग बिजनेस कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। हम में से ऐसे लोग पैदा होंगे जो इंशाल्लाह उस चीज़ को, उस कदम को आगे बढ़ाएंगे, और जिसमें हम सबका होगा, ताउन होगा। और कहीं ना कहीं अगर हम मुस्बत सोचते हैं तो मुस्बत चीज़ जो है, जो कोई दरख्त जब तनावर होता है तो उसमें कोई आगे बढ़ के पूरे तौर पर इन्वॉल्व होता है, कोई थोड़ा सा इन्वॉल्व होता है, लेकिन सबको अल्लाह ताला उसके लिए दुनिया आखिरत दोनों में कामयाब का जरिया बनाता है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। अब क्योंकि आप लोगों ने इतने दिनों वक्त से इंतज़ार कर रहे थे, तो आप लोगों के लिए, आपके जहन और दिमाग को तस्कीन पहुंचाने के लिए हमारे शायर अरशद जमाल साहब ने एक मशायरा का इनेकाद किया है। और मैं चाहूँगा कि डॉक्टर अरशद जमाल साहब तशरीफ़ लाएं और बनफ़ उस मशायरे का ऐलान करें।
Thank you, all the dignitaries, and congratulations, all the participants. What's a great day without a night full of entertainment to eyes and ear, a lively performance, and a wonderful atmosphere? So join us as we gather to enjoy the magic of Mushaira shortly after a 10-minute break. Thank you. Enjoy the show. मुशायरा जो छोड़ देगा फिर तो पछताएगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर आप जा रहे हो तो फौरन फारिग होके आ जाएं और उसमें फरागत में नमाज को अव्वलीन नंबर पे रखें। तमामी तलबा से गुजारिश है कि 10 मिनट के बाद जो है मुशायरा फौरन शुरू हो जाएगा, इसलिए आप लोग ज्यादा दूर ना जाएं यहाँ से, और जो जितनी जल्दी आएगा अगली नशिस्तों पर उसे जगह मिलेगी। परवेश थोड़ा सा ये पकड़ा सर मैंने यही लगा दिया। कौन सा स्लाइड? यही यही रखते हैं ना? फायर
कोई फरियाद तेरे दिल में तभी हो जैसे कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे तूने आँखों से कोई बात कहीं हो जैसे जागते जागते एक उम्र कटी हो जैसे जागते जागते एक उम्र कटी हो जैसे जान बाकी है मगर सांस रुकी हो जैसे हर मुलाकात पे महसूस यही होता है हर मुलाकात पे महसूस यही होता है हर मुलाकात पे महसूस यही होता है मुझसे कुछ तेरी नजर पूछ रही हो जैसे मुझसे कुछ तेरी नजर पूछ रही हो जैसे राह चलते हुए अक्सर ये गुमा होता है राह चलते हुए अक्सर ये गुमा होता है वो नजर चुप के मुझे देख रही हो जैसे वो नजर चुप के मुझे देख रही हो जैसे एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे इस तरह पैरों तुझे सोचता रहता हूँ मैं इस तरह पैरों तुझे सोचता रहता हूँ मैं मेरी हर सांस तेरे नाम लिखी हो जैसे मेरी हर सांस तेरे नाम लिखी हो जैसे कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे शुक्रिया बहुत शुक्रिया रईस मीर। ठीक, मामला ये है कि इनके साथी लोग पिछले 3 सालों से इनसे फरमाइश कर रहे थे कि आप तरन्नुम से कुछ सुना दें, और अब उस वक्त जब इनको जाना हुआ है उस वक्त ये अपने दिल के फफोले फोड़ने के लिए यहाँ हाजिर हुए थे। बहरहाल आपके शौक की तकमील हुई और आपके साथियों की आरजू की तकमील हुई। हाजरीन, हमारे डायरेक्टर साहब तशरीफ ला चुके हैं। आज के इस मुशायरे के सदर प्रोफेसर आबिद अली अंसारी साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, तशरीफ ला चुके हैं। मैं डायरेक्टर साहब की इजाजत से चाहता हूँ कि अपने शुरका का मेहमान शुरका को यहाँ पर बुलाऊं ताकि उसके बाद जो है वो मुशायरे की कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सके। सबसे पहले
मैं आज के इस बज़्म के सदर मोहतरम प्रोफेसर आबिद अली अंसारी साहब से गुजारिश करता हूं कि आप तशरीफ लाएं और अपने मकाम पर रौनक अफरोज हों। हम आज के इस मुशायरे के मेहमान खुसूसी जनाब सुनील पवार वारी साहब से इल्तिमास करते हैं, IFS ऑफिसर, क्या आप भी तशरीफ लाएं और अपनी नशिश लें। आज के मुशायरे के नाजिम बेंगलोर बज़्म उर्दू के सेक्रेटरी जनाब गुफरान अमजद बनारसी साहब से मैं इल्तिमास करूंगा कि आप भी तशरीफ लाएं और अपनी नशिश लें। सीनियर शायर जनाब हसनैन असजद साहब से मैं इल्तिमास करता हूं कि तशरीफ लाएं। उनके साथ ही जनाब जमील बनारसी साहब से मुल्तमिस हूं कि आप भी तशरीफ ले आए। बहुत ही सीनियर शायरा मोहतरमा अलका शरर साहबा जो बंबई से तशरीफ लाई हैं, उनसे भी मुल्तमिस हूं कि आप भी स्टेज पर जलवा अफरोज हों। इफ्तिखार अलसन साहब से मैं मुल्तमिस हूं कि तशरीफ लाएं। बेंगलोर की बस में गालिब के सेक्रेटरी जनाब शेख हबीब साहब से भी इल्तिमास है कि आप भी तशरीफ लाएं। आमिर मसूद हमारे साथ कदम सुखने मौजूद है, आपसे भी इल्तिमास है कि आप भी अपनी जगह लें। सूफी सिंगर खनक जोशी साहबा, हमारी खुशकिस्मती है कि आप तशरीफ लाई हैं। मैं आपसे भी इल्तिमास करता हूं कि आप तशरीफ लाएं। खनक जोशी साहबा, हाजरीन ताखीर बहुत हो चुकी है, मैं नहीं चाहता हूं कि आपके दरमियान और हमारे शोरा के दरमियान हायल रहूं, लिहाजा मैं आज के इस मुशायरे के नाजिम जनाब गुफरान अमजद साहब से इल्तिमास करता हूं कि आप तशरीफ लाएं और मुशायरे की कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। ये है ना, फिर उसके बाद हेलो, अस्सलाम वालेकुम हजरात। आज की ये शेरी महफिल, इसे महफिल मुशायरा का नाम दिया गया है। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर शाह आलम साहब जो इसके डायरेक्टर हैं, उन्होंने आज के इस मुशायरे के लिए इजाज़त दी, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और डॉक्टर अरशद जमाल सारिम साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस महफिल को आरास्ता करने में पेश रहे और बहुत खूबसूरत महफिल सजाई है। बहुत मुख्तसर शोरा किराम हैं, सिर्फ 10 शोरा और एक हमारी सूफ़ी सिंगर खनक जोशी सल्लमा। आप लोग उनकी आवाज़, उनके कलाम से वो एक हम्द और एक गज़ल पेश करेंगी। तो मैं इससे पहले के सदर मोहतरम, मेहमानान और शोराए किराम का एजाज़ हो, मैं चाहूँगा कि हम्द से उसका आगाज़ हो। लखनऊ के बहुत मारूफ शायर इरफान सिद्दीकी ने हम्द का शेर कहा था कि रेत पर फूल खिले संग से चश्मा फूटे, जिंदगी उसका इशारा है जिधर भी हो जाए। नज़ीर बनारसी ने नातिया में से यूं कहे कि जमी असरे नौ बहारी गई है, जमी असरे नौ बहारी गई है,
करीने से हर शय संवारी गई है, तब अहमद की हस्ती उतारी गई है। और जब वो मनकबत का शेर कहते हैं तो यूं कहते हैं कि अच्छा तुम ही बताओ करामत नहीं तो क्या। अच्छा तुम ही बताओ करामत नहीं तो क्या, बच्चा हो माँ की गोद में और रोजादार हो। लेकिन जब वो गजल का शेर कहते हैं कि तुम्हारी शान घट जाती कि रुतबा घट गया होता, जो गुस्से से कहा तुमने वही हंसकर कहा होता। जो गुस्से से कहा तुमने वही हंसकर कहा होता। फिर एक और शेर वो कहते हैं कि मुसलमान, हिंदुओं को तो यकीन है कि मुसलमान है नजीर, कुछ मुसलमान है जिन्हें शक है कि हिंदू तो नहीं। फिर और जब जिंदगी के आखिरी मराइल से वो गुजरते हैं तो कहते हैं कि सब एक नजर फेंक के बढ़ जाते हैं आगे, मैं वक्त के शोकेस में चुपचाप खड़ा हूं। आइए एक ऐसा सितारा जिसके लिए मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि एक गैरत नाहिद की हर तान है दीपक। नहीं, मैंने जरा तहरीफ की कि एक गैरत नाहिद की हर तान है दीपक, शोला सा लपक जाए है आवाज तो देखो। मुसलसल 4 दिनों से प्रोग्राम कर रही है बच्ची, रायपुर 20 तारीख 19 तारीख को, फिर बेंगलोर में 20 और 21, आज फिर बेंगलोर में, और कल फिर एक प्रोग्राम उसको करना है। आप, मैं गुजारिश करता हूँ आए, हमद और अपने गज़ल के बाद फिर हम दूसरी कार्रवाई शुरू करेंगे। गुजारिश करता हूँ खनक जोशी सलनमा से आए और कलाम सुना। हाँ, माइक ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सदर साहब की इजाज़त और आप तमाम की इजाज़त से जनाब गफरान अमजद साहब की लिखी हम्द पेश करूँगी। दिले हज़ीं की सदा ला इलाहा इल्लल्लाह, दिले हज़ीं की सदा ला इलाहा इल्लल्लाह, नफस नफस में बसा ला इलाहा इल्लल्लाह। तमाम शेख बरामन का कागजी है लिबास, तमाम शेख बरामन का कागजी है लिबास, हवा कलम से जरा ला इलाहा इल्लल्लाह। लगा है शहर में बाजार जुब्बाओ दस्तार, लगा है शहर में
बाजार जुब्बाओ दस्तार, गरीब सर किरदार, ला इलाहा वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। चमन में अपने सुखन की नई बहार लिए, चमन में अपने सुखन की नई बहार लिए, है कौन मिसल सबा, ला इलाहा इल्लल्लाह। उरूज हिर्स की बेकैफ सी फिजाओं में, उरूज हिर्स की बेकैफ सी फजाओं में, चराग इश्क जला, ला इलाहा इल्लल्लाह। खुशामदीद ना कैसे कहे उसे रिजवान, कि जिसने दिल से कहा, ला इलाहा क्या कहने। इल्लल्लाह। हम उनकी जात पे कुर्बान क्यों ना हो अमजद, हम उनकी जात पे कुर्बान क्यों ना हो अमजद, तो फैल जिनके पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह। दिले हज़ीं की सदा, ला इलाहा इल्लल्लाह। शुक्रिया। अब मैं आपके सामने जनाब रौनक बदायनी साहब की एक गज़ल पेश करूंगी। दम तोड़ता हूँ खाक पे गोरो कफन से दूर। दम तोड़ता हूँ खाक पे गोरो कफन से दूर, दम तोड़ता हूँ खाक पे, दम तोड़ता हूँ खाक पे गोरो कफन से दूर, या रब किसी की मौत न आए वतन से दूर, या रब किसी की मौत न आए वतन से दूर। अहले चमन का शेवाए बेगानगी न पूछ, हम तो चमन में रहते हुए हैं चमन से दूर, हम तो चमन में रहते हुए हैं चमन से दूर। आह दिले गरीब कयामत से कम नहीं, आह दिले गरीब कयामत से कम नहीं,
एक बात कह रहा हूँ किसी हुस्न ज़न से दूर, देर से है बेनियाज उम्मीदों की रोशनी, देर से है बेनियाज उम्मीदों की रोशनी, जलते हैं ये चराग मगर अंजुमन वाह से वाह। दूर, इस दौर में भी हक के परस्तार कम नहीं, इस दौर में भी हक के परस्तार कम नहीं, ये और बात है कि हैं दारो रसन से दूर, आओ कफस में बैठ के रोए बाहर को, आओ कफस में बैठ के रोए बाहर को, तुम भी चमन से दूर हो, हम भी चमन से दूर। मख्ता पेश कर रही हूँ। इरशाद। रौनक जुनून शौक का आलम भी खूब है, रौनक जुनून शौक का आलम भी खूब है, खुशियों से बेनियाज हूँ, रंजो महन से क्या बात है। दम तोड़ता हूँ खाक पे गोरो कफन से दूर। शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब। ये थी कनक जोशी सल्लमा जो हमद और गज़ल से आप सबको नवाज रही थी। हजरात, मैं बता दूं कि ये कनक जोशी न सिर्फ पढ़ती हैं गाती हैं बल्कि उर्दू पढ़ती हैं, अरबी पढ़ती हैं और फारसी भी पढ़ रही हैं। अलीगढ़ में भी इनका दाखिला हुआ है और हम दुआ गो हैं कि इन्हें अल्लाह ताला और कामयाबी अता करे। तो इससे पहले कि मुशायरे की कार्रवाई शुरू हो, मैं डायरेक्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो सदर आली वक़ार की शाल पोशी कर दे और शुराए किराम की। आइए आइए सर साहब। हाँ तो आ जाइए, एक साथ ही करेंगे। इसी के साथ मैं डॉक्टर सुनील पवार साहब जो आईएफएस हैं, कर्नाटक सरकार में सेक्रेटरी हैं और बहुत अच्छे शायर हैं, आप लोग उन्हें भी सुनेंगे। और जो लोग तरन्नुम तरन्नुम की सदा बुलंद कर रहे थे, मेरे ख्याल से वो तरन्नुम से सरफराज हुए होंगे। तहत में भी अच्छी शायरी होती है, आप तहत में भी सुनेंगे और तरन्नुम में भी सुनेंगे। तमाम शुरा किराम आ जाएं फिर। हाँ, इसके बाद डॉक्टर सुनील पवार साहब। गुफरान अमजद साहब। ठीक दे दीजिए। आइए। कनक जोशी आप तशरीफ लाएं। हाँ आप
आपने बहुत अच्छा बहुत शुक्रिया कि ये अलका शरर साहिबा हैं, मुंबई से आप तशरीफ ले आई हैं, बहुत अच्छी शायरी करती हैं। डॉक्टर अरशद जमाल साहब अच्छा हमें भी के लिए भी है ये। आप लोग भी आइए। असद बनारसी साहब ये आइए आइए। एक मुसर्रत का और की बात है कि डायरेक्टर साहब के वालिद भी बहुत अच्छे शायर हैं और आपके चचा साहब भाई राज फैजाबादी बहुत अच्छे शायर हैं जो सभी जानते हैं। शेख हबीब साहब बज़्म गालिब के सेक्रेटरी बहुत अच्छे शायर और आप लोग वो सुनकर महजूज होंगे, बहुत अच्छे तरन्नुम से ये कलाम पेश करते हैं। जमील बनारसी साहब कहाँ है भाई? जमील बनारसी साहब, इनका तरन्नुम सुन के कोयले कोयले आत्महत्या कर लेती हैं। इफ्तिखार अरसल साहब, आपका ताल्लुक बनारस से है, बहुत अच्छी शायरी करते हैं। और एक सितारा और जो बहराइच से जिसका ताल्लुक है, आमिर मसूद साहब। हो गया सब? चलिए आप सब लोग तशरीफ रख लें। अच्छा आ जाइए आ जाइए डॉक्टर जी आ जाइए। हम ये यहाँ बता दीजिए उसको भी हाँ एक मिनट ग्रुप फोटो ले लीजिए। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? आइए 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 आप आइए। सब लोग आ जाओ। एक बार सर कोई बुला लो। इस प्रोग्राम को मुनक्किद करने में जो लोग पेश रहे हैं वो भी आ जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं भी बनारस का ही हूँ। आइए आइए आ जाइए आ जाइए। और अली जो उनमें से और सुंदर से जी जी मुजाद भाई आपके मोबाइल से ये नहीं ये सभी मिल जाएगी। हाँ हम लगे आप बुलाइए। हाँ हजरात डॉक्टर एक मिनट आप क्यों जहमत और आइए आइए आइए। हजरात 25 जनवरी को एक मुशायरा हुआ जिसमें 3 लोगों को, हिंदुस्तान के 3 अहम लोगों को एजाज से नवाजा गया है। उसमें डॉक्टर साहब का भी नाम था, सुनील पवार साहब का, लेकिन वो गुलबर्गा में मसरूफ थे, नहीं आ सके थे। आज आए हैं। मैं चाहता हूँ डायरेक्टर साहब के हाथों उन्हें ये एजाज से नवाजा जाए। उर्दू रतन वो लड़का का नाम बता दीजिए। उज़ैर यूसुफ मीर। हजरात इन शोरा के अलावा एक शायर का और इजाफा, एक सिंगर का इजाफा और हुआ है, वो गज़ल गाएंगे। डॉक्टर साहब का हुक्म है कि उन्हें सबसे पहले मदू किया जाए। उज़ैर यूसुफ मीर साहब। गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। उज़ैर यूसुफ मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। हेलो
आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलों में बैठे रहो, यूं ही पहलों में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। तुम ही सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, चंद घड़ियाँ यही है जो आजाद है, चंद घड़ियाँ यही है जो आजाद है, इनको खोकर मेरी जान जा, उम्र भर ना तरसते रहो, आज जाने की जिद ना करो। अस्सलाम वालेकुम। वाह वाह वाह, बहुत खूब। खूबसूरत गजल, खूबसूरत तरन्नुम के साथ आप हजरात समाअत फरमा रहे थे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं जनाब को। आइए मुशायरे की शुरुआत करते हैं। अभी अभी जैसा कि अब्दुल हसीब अंसारी साहब ने बताया कि उनका ताल्लुक भी बनारस से है। बनारस के 4 शोरा यहाँ मौजूद हैं। एक ऐसा घराना जो अदबी घराना रहा है, और इनके जिस शायर को मैं पेश करना चाहता हूँ, उनके बड़े भाई बहुत अदबी शख्सियत के मालिक थे, अब चूंकि नहीं रहे हैं। एक भाई उनके और हैं जो फिल्में बनाने का उनको शौक था, और उस शौक के चलते बॉम्बे के बड़े बड़े शोरा से उनकी शनासाई हुई। न सिर्फ शनासाई हुई बल्कि उनके घर आना जाना भी उनका रहा है। उन्हीं के एक छोटे भाई आज हमारे इस महफिल में मौजूद हैं, जिनका नाम है इफ्तिखार अरसल। बहुत खूबसूरत शायरी है, तहत में पढ़ते हैं। आप लोग तरन्नुम की गुजारिश मत करिएगा, तरन्नुम वाले को मैं बुलाऊंगा बाद में। तहत में सुनिए, बहुत अच्छी शायरी करते हैं। मैं गुजारिश करता हूं कि वो अपने कलाम से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम जी। आजाद
तो सदर साहब ने पहले ही सबको इजाजत दे दी है। इजाजत के साथ एक बात उन्होंने और मुझसे कही है कि सिर्फ 1 घंटे में प्रोग्राम को खत्म करना है। तो तमाम शोरा इख्तिसार से काम लेंगे। जो तहत में पढ़ेंगे 2 गजल पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इरशाद। एक मतला और 2-3 शेर पेश कर रहा हूं। जिसे दर्द सहने की ताकत नहीं है, जिसे दर्द सहने की ताकत नहीं है, उसी को जमाने में राहत नहीं है। बहुत खूब। जिसे दर्द सहने की ताकत नहीं है, उसी को जमाने में राहत नहीं। और शेर देखिएगा कि जरा से सितम पर वतन छोड़ते हो। जिसे दर्द सहने की ताकत नहीं है, उसी को जमाने में राहत नहीं है, और जरा से सितम पर वतन छोड़ते हो। यह हिजरत का धोखा है, हिजरत नहीं। क्या बात है, बहुत अच्छे। यह हिजरत का धोखा है, बहुत खूब। हिजरत नहीं। और देखेगा कि उसे हक को बातिल की पहचान होगी, उसे हक को बातिल की पहचान होगी कि जिसके लहू में कसाफत नहीं है। क्या बात है। कि जिसके लहू में कसाफत में मक्ता देखेगा कि उन्हें हक सितम पर सितम का है अरसल। उन्हें हक सितम पर सितम का है अरसल। सितम का है अरसल। हमें आ हकी भी इजाजत नहीं है। वाह, बहुत खूब। हमें आ हकी भी इजाजत नहीं। देखेगा कि अफसोस ये नहीं कि सराहा नहीं मुझे, अफसोस ये नहीं कि सराहा नहीं मुझे, अफसोस है कि प्यार से देखा नहीं मुझे। क्या बात है। अफसोस है कि प्यार से देखा नहीं मुझे। देखेगा कि मैंने तवाफ यार में मुद्दत गुजार दी। मैंने तवाफ मैंने यार में तवाफ यार में मुद्दत गुजार दी, उसने नजर उठा के भी देखा नहीं मुझे। क्या बात है, क्या उसने बात है। नजर उठा के भी बहुत खूब। देखा नहीं मुझे। अफसोस अफसोस फिर ये पढ़ नहीं, दीजिए वो शेर। अफसोस। अफसोस ये नहीं कि सराहा नहीं मुझे, अफसोस है कि प्यार से देखा नहीं मुझे, और मैंने तवाफ यार में मुद्दत गुजार दी, उसने नजर उठा के भी देखा नहीं मुझे। क्या बात है। और एक मतलब और एक शेर और देखा है कि जमाने की निगाहों में वही ठहरा बशर अच्छा। जमाने की निगाहों में जमाने की निगाहों में वही ठहरा बशर वही अच्छा। ठहरा बशर अच्छा। न जिसका जेर अच्छा है, न है जिसका जबर अच्छा। क्या बात है। जमाने की निगाहों में वही ठहरा बशर अच्छा, न जिसका जेर अच्छा है, न है जिसका जबर अच्छा। क्या बात है। और देखिएगा कि जमाने की निगाहों में वही ठहरा बशर अच्छा, न जिसका जेर अच्छा है, न है जिसका जबर अच्छा। और देखिएगा कि शजर होने का दावा तो सभी करते ही रहते हैं। शजर होने का दावा। शजर होने का दावा तो सभी करते ही रहते हैं, जो साया दे जमाने को वही ठहरे शजर अच्छा है। जो साया दे जमाने को वही ठहरे शजर। मतलब 2-3 शेर और देखेगा कि उनकी यादों का साया जो कम हो गया, ठीक है। उनकी यादों का साया जो कम हो गया, आफताबे अलम हम कदम हो गया। और देखिए कि एक पल जिंदगी और आगे बढ़ी, और आगे बढ़ी। एक पल जिंदगी और आगे बढ़ी, एक पल जिंदगी का यूं कम हो गया। क्या बात है। एक पल जिंदगी का यूं कम हो गया। देखिए कि मेरे ख्याल का सूरज
सफर में रहता है। मेरे ख्याल का सूरज सफर में रहता है। मेरे ख्याल का सूरज सफर में रहता है। हर एक लफ्ज तेरी रह गुजर में रहता है। हर एक लफ्ज तेरी हर रह एक लफ्ज तेरी रह गुजर में रहता। देखिए कि किरण किरण का अजीजो तुम एहतराम करो, ये वो दिया है जो ताके हुनर में रहता है। वाह। किरण किरण का अजीजो तुम एहतराम करो, ये वो दिया जो ताके हुनर में रहता। देखेगा कि हजारों आफतें टूटी मगर वो कब टूटा। हजार आफतें टूटी। हजार आफतें टूटी मगर वो कब टूटा। न जाने किसकी दुआ के असर में रहता है। क्या बात है। न जाने किसकी दुआ के असर में रहता है। न जाने किसकी दुआ के असर में रहता है। देखेगा कि दुनिया के फना होने के आसार बहुत हैं। दुनिया के फना होने के आसार बहुत हैं। सच्चाई के पर्दे में गुनहगार बहुत हैं। और देखेगा कि कशकोले कशकोले नदामत लिए मैं दर पे खड़ा हूँ। कशकोले नदामत लिए मैं दर पे खड़ा हूँ। ये बात अलग है कि तलबगार बहुत हैं। वाह। ये बात अलग अलग है कि तलबगार बहुत है। देखा कि क्या कीजिए मुहाजिर को जचा मेरा घरौंदा। क्या क्या कीजिए। कीजिए मुहाजिर को जचा मेरा घरौंदा। इस शहरे मसावात में अंसार बहुत हैं। बहुत इस शुक्रिया। शहरे मसावात में क्या कीजिए मुहाजिर को जचा, क्या कीजिए मुहाजिर को जचा मेरा घरौंदा। इस शहरे मसावात में अंसार बहुत हैं। बहुत अच्छे। इस बहुत शहरे मसावात बहुत में अच्छे। अंसार बहुत है। बहुत ये थे शुक्रिया। इफ्तिखार अरसल साहब जो अपने कलाम से नवाज रहे थे। और हजरात, आप लोगों की तरन्नुम से सुनने की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए ऐसे शायर को मैं पेश करता हूँ। हमारे दोस्त एक ज्ञानचंद मरबक जी हैं, वो उनकी शायरी उनका तरन्नुम सुन के अक्सर कहते हैं कि आपका तरन्नुम सुन के कोयलें आत्महत्या कर लेती हैं। मैं जमील बनारसी साहब से गुजारिश करता हूँ वो आए और अपने कलाम से नवाजे हैं। जमील साहब कहते हैं, जाते हैं हम वहां के जहां दिल की कद्र हो, बैठे रहो तुम अपनी अदाएं लिए हुए। जमील बनारसी साहब। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन। एक मतलब और दो तीन शेर देखेगा। फैला हुआ अंधेरा लाख मगर हर समत उजाला मिलता है। फैला हुआ अंधेरा लाख मगर हर समत उजाला मिलता है। हिम्मत हो जवा तो कश्ती को तूफान में किनारा क्या बात है। मिलता है। फैला हुआ अंधेरा लाख मगर हर समत उजाला मिलता है। जो सब्र की बाजी हार गए शबनम से भी वो महरूम हुए। जो सब्र की बाजी हार गए शबनम से भी वो महरूम हुए। जो प्यास पे काबू रखते हैं आखिर उन्हें दरिया मिलता बहुत अच्छे। है। जो सब्र की बाजी हार गए शबनम से भी वो महरूम हुए। फितनों से लहू से शोलों से मामूर खजाना है उसका।
फितनों से लहू से शोलों से मामूर खजाना है उसका। हम भी हैं खड़े इस चौखट पर, देखें हमें क्या क्या मिलता मिलता है। फितनों से लहू से शोलों से मामूर खजाना है उसका। और बतौर खास ये शेर देखिए, इरशाद। इन जुल्म सितम के मारों की हो दाद रसी तो कैसे हो। इन जुल्म सितम के मारों की हो दाद रसी तो कैसे हो। इंसाफ के दर पर जब जाओ कातिल ही का पहरा मिलता है। इन जुल्म सितम के मारों की हो दाद रसी तो कैसे हो। और देखिएगा एक मतलब दो तीन शेर और सुनिएगा। है कैसा रंग आज फजाएं लिए हुए। है कैसा रंग आज फजाएं लिए हुए। खामोशियाँ पीरे हैं सदाएं लिए हुए। सुनते हैं आज होंगी नवाजिश की बारिशें। सुनते हैं आज होंगी नवाजिश की बारिशें। बैठे हैं हम भी अपनी खताएं क्या बात है। लिए हुए। और ये शेर बतौर खास देखिएगा। जुल्फे सवारो या ना सवारो है फिक्र क्या। जुल्फे सवारो या ना सवारो है फिक्र क्या। हम हैं तुम्हारे सर की बनाए लिए हुए। हम हैं तुम्हारे सर की बलाएं लिए हुए। और तमाम शोरा की जानिब से आप लोगों की नजर ये शेर देखिए। जाते हैं हम वहाँ के जहाँ दिल की कद्र हो। जाते हैं हम वहाँ के जहाँ दिल की कद्र हो। बैठे रहो तुम अपनी अदाएं लिए हुए। बैठे रहो तुम अपनी अदाएं लिए हुए। जाते हैं हम वहाँ के जहाँ दिल की कद्र हो। बैठे रहो तुम अपनी अदाएं लिए हुए। और हाजरीन गजल का मतलब देखिएगा। जाते हैं हम वहाँ के जहाँ दिल की कद्र हो। बैठे रहो तुम अपनी अदाएं क्या बात है। लिए हुए। गजल का मतलब बतौर खास देखिएगा।
सामने आए अगर आप तो आफत होगी, सामने आए अगर आप तो आफत होगी, वक्त से पहले ही दुनिया में कयामत होगी, वक्त से पहले ही दुनिया में कयामत होगी, फिर खुली है कई, शेर बताओ जो कीजिएगा, फिर खुली है कई शीशे की दुकानें है दोस्त, फिर खुली है कई शीशे की दुकानें है दोस्त, फिर तेरे शहर में पत्थर की पत्थर की तजारत होगी। तिजारत होगी, फिर तेरे शहर में पत्थर की तिजारत होगी। और ये शेर बतौर खास देखिए, आपको पर्दा उठाने में तकल्लुफ क्या है, आपको पर्दा उठाने में तकल्लुफ क्या है? आपको पर्दा उठाने में तकल्लुफ क्या है, खुद ही मुस्ताक निगाहों को नदामत होगी, खुद ही मुस्ताक निगाहों को नदामत होगी, गैर ही से मेरी बेताबी का किस्सा सुन लो, बतौर खास से ये शेर, गैर ही से मेरी बेताबी का किस्सा सुन लो, मैं सुनाऊंगा तो फिर तुमको शिकायत होगी। शिकायत होगी, मैं सुनाऊंगा तो फिर तुमको शिकायत होगी। और ये शेर भी बतौर खास देखिए, फूल खिलते ही जहाँ तोड़ लिए जाते हैं, आज के हालात का शेर देखिएगा, फूल खिलते ही जहाँ तोड़ लिए जाते हैं, खिलते ही जहाँ तोड़ लिए जाते हैं, मुस्कुराने की वहाँ किसको इजाजत होगी, मुस्कुराने की वहाँ किसको इजाजत होगी। और मक्ता देखिएगा आखिरी, हाल पूछे जो कोई आंख भराती है जमीन, हाल पूछे जो कोई आंख भराती है जमीन, क्या खबर थी कभी इस दिल की ये हालत होगी, क्या खबर थी कभी इस दिल की ये हालत होगी, सामने आए अगर बहुत खूब, आप तो आफत होगी, सामने आए अगर आप तो आफत होगी, वक्त से पहले ही दुनिया में कयाम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत। ये थे जमील बनारसी साहब जो अपनी गजलों से नवाज रहे थे। अगर डायरेक्टर साहब की इजाजत होगी तो दूसरा दौर भी चलेगा, आप लोग घबराइए मत। जमील बनारसी साहब
अपने कलाम से नवाज रहे थे और सदर मोहतरम यहाँ बेचैन हो रहे थे कि वक्त ज्यादा हो रहा है। आइए दोस्तों, बनारस से चलते हैं बहराइच। बहराइच का एक नौजवान साल शायर जो हमारे दरमियान मौजूद है, आमिर मसूद। होशियारी दिले नादान बहुत करता है, रंज कम सहता है ऐलान बहुत करता है, रंज कम सहता है ऐलान बहुत करता है। आइए आमिर मसूद को सुना जाए, जो न सिर्फ मुशायरा करने के शौकीन है, बल्कि जहाँ कहीं भी मुशायरा मुनक्किद होता है उसमें दामे दिरमे कदमे अपना ताउन भी फरमाते रहते हैं। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ और गुजारिश करता हूँ अपने कलाम से नवाजें। सदर मोहतरम की इजाज़त के साथ, मुझे लगता है शायरों की फहरिस्त में मैं सबसे छोटा हूँ और मैं आप सबके बराबर आपको मानता हूँ। उतनी ही मोहब्बतों से सुनिएगा, आपके साथ समझिएगा मैं हूँ। शेर देखिएगा यहाँ से। तुमने मेरे किरदार पे उंगली जो उठा दी, तुमने मेरे किरदार पे उंगली जो उठा दी, समझो मेरे अजदाद की दीवार गिरा दी। क्या बात है। और जो लोग घर से दूर होते हैं कि माँ बीमार हो, कि बीमार हुई माँ तो रकम भेज दी मैंने, बीमार हुई माँ तो रकम भेज दी मैंने, अफसोस मगर है कि न हाथों से दवा दी। क्या बात है। मगर है कि न हाथों से दवा दी। एक मतलब एक शेर ये भी कि ये मेरी जिद है कि मुझको वो मनाने आए, ये मेरी जिद है कि मुझको वो मनाने आए, साथ मेरे भी वो कुछ वक्त बिताने आए। हाय अफसोस, हाय अफसोस ये बारिश, हाय अफसोस ये बारिश मेरी सौतन है बनी। हाय अफसोस, हाय अफसोस ये बारिश मेरी सौतन है बनी, धूप निकले तो वो कपड़ों को सुखाने आए। क्या बात है। बड़ी मोहब्बत कि हाय अफसोस। डॉक्टर साहब जी हाजिर करता हूँ कि ये मेरी जिद है कि मुझको वो मनाने आए, साथ मेरे भी वो कुछ वक्त बिताने आए। हाय अफसोस ये बारिश मेरी सौतन है बनी, धूप निकले तो वो कपड़ों को सुखाने आए। शेर देखिएगा कि मैंने, ये गुफ्तगू होती है आपस में कि मैंने सदा ये दी कि मेरा नाम लीजिए, मैंने सदा ये दी कि मेरा नाम लीजिए, उसने कहा कि जाइए आराम कीजिए। कि मैंने सदा ये दी कि मेरा नाम लीजिए, उसने कहा कि जाइए आराम कीजिए। 10 दिन गुजर चुके हैं मगर कुछ खबर नहीं, मुझ पर करम करे भले इल्जाम दीजिए। बड़ी मोहब्बत एक गजल सीधा सीधा की। देखिए जो लोग, जितने लोग हैं घर से दूर हैं, अपने महसूस कीजिएगा, रिश्तों की अहमियत देखिएगा यहाँ पर कि अपनों से दूर मैं रहा अपनों के वास्ते, अपनों से दूर मैं रहा अपनों के वास्ते, कितने जनाजे छूटे हैं पैसों के वास्ते। मतलब कि अपनों से दूर, बहुत शुक्रिया, कि अपनों से दूर मैं रहा अपनों के वास्ते, कितने जनाजे छूटे हैं पैसों के वास्ते। कि बेटी की रुखसती थी तो ये भी सितम हुआ, बेटी की रुखसती थी तो ये भी सितम महसूस कीजिएगा बैठी हुई हैं आप सब कि बेटी की रुखसती थी कि ये भी सितम हुआ, घर गिरवी रखा बाप ने गहनों के वास्ते, घर गिरवी रखा, घर गिरवी रखा बाप ने गहनों के वास्ते। एक माँ का हौसला है कि कांटों पे चल के भी, एक माँ का हौसला है कि कांटों पे चल के भी मखमल खरीद लाती है बच्चों के वास्ते। एक माँ का हौसला है
कि कांटों पे चल के भी मखमल खरीद लाती है बच्चों के वास्ते। ये मेरी गुजारिश है तमाम बेटों से और बाप से कि हिस्सा है बेटियों का भी दौलत में आपकी, हिस्सा है बेटियों का भी दौलत में आपकी, सब कुछ न लिख के जाइए बेटों के वास्ते। डॉक्टर साहब की हिस्सा है ये इस तरफ से इस तरफ के शेर मैंने पहुंचाया इसके लिए है। पढ़ा उन्हें, वहां से दाद मिल गई आपको। हिस्सा है बेटियों का भी दौलत में आपकी, सब कुछ न लिख के जाइए बेटों के वास्ते। और देखिएगा कि ये देख करके मेरा कलेजा ही फट गया, ये देख करके मेरा कलेजा ही फट गया। दो भाई लड़ रहे हैं जमीनों के वास्ते। क्या बात है। मैं हाजिर करता हूं कि ये देख करके मेरा कलेजा ही फट गया। दो भाई लड़ रहे हैं जमीनों के वास्ते, और मुझको तेरे बदन से सरोकार कुछ नहीं, मुझको तेरे बदन से सरोकार कुछ नहीं। मैं फूल लेके आया हूं जुल्फों के वास्ते। क्या बात है। मुझको तेरे बदन से सरोकार कुछ नहीं, मैं फूल लेके आया हूं जुल्फों के वास्ते। और देखिएगा दोस्ती में जब कभी कोई दरार डालने की कोशिश करता है कि उसने रखी ये शर्त कि मैं फिर या दोस्ती, उसने रखी ये शर्त कि मैं फिर या दोस्ती, फौरन दफा किया उसे यारों के वास्ते। जी हाजिर करता हूं कि उसने रखी ये शर्त कि मैं फिर या दोस्ती, फौरन दफा कहा उसे यारों के वास्ते। और देखिएगा जब कोई हादसा हो जाता है और तो हमारे नेता लोग कभी ट्रेन हादसे में या कोई बिल्डिंग गिर गई तो कैसे संतावना देते हैं। क्यों रो रहे हैं आप सभी इनकी मौत पर, क्यों रो रहे हैं आप सभी इनकी मौत पर। भत्ता तो मिल ही जाएगा लाशों के वास्ते, भत्ता तो मिल ही जाएगा लाशों के वास्ते। और आंखों में अपनी ख्वाब का नश्तर लिए हुए, आंखों में अपनी ख्वाब का नश्तर लिए हुए, कितनी कनीजें लुट गई महलों के वास्ते। आंखों में अपनी ख्वाब का नश्तर लिए हुए, कितनी कनीजें लुट गई महलों के वास्ते। और जब हमारी बहनें दूर विदा हो जाती हैं कि ससुराल दूर दूर है लेकिन है दिल करीब, ससुराल दूर दूर है लेकिन है दिल करीब। करीब, आमिर भी फिक्रमंद है बहनों के वास्ते। क्या बात है। आमिर भी फिक्रमंद है बहनों के वास्ते। वाह। एक मतलब एक शेर और जहमत तमाम कि था जुल्मतों का शोर उजाला नहीं कहा, था जुल्मतों का शोर उजाला नहीं कहा, शोर उजाला नहीं कहा, मुझको किसी ने आंख का तारा नहीं कहा। वाह। एक मासूम बच्चा छोटा भाई बहन होते हैं तो देखिएगा कि बिटिया को रानी कह के, इधर से है ये शेर, कि बिटिया को रानी कह के बुलाते हैं घर में सब, बेटे को एक बार भी राजा नहीं कहा। और भी बेटे को एक बार भी राजा नहीं कहा। बहुत शुक्रिया भाई। बहुत शुक्रिया। ये थे आमिर मसूद साहब। दूसरे दौर में आपकी ख्वाहिश का एहतराम किया जाएगा इंशाल्लाह। ये मुशायरा आपका है, ये शब आपकी है, आमिर मसूद आपके हैं। बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं मैं आमिर मसूद साहब को। और आइए दोस्तों, बहराइच से एक बार फिर हम बनारस की तरफ चलते हैं। मैं छोटी सी एक बात बता दूं कि बनारस में जो शायरी पहुंची वो लखनऊ से पहुंची। मुसफ़ी लखनवी का सिलसिला बनारस में चलता है। मुसफ़ी लखनवी से हमारे फायज़ बनारसी, मुंशी अब्दुल गनी, मुस्लिमुल हरीरी, जौहर सिद्दीकी
और माइल अंसारी के एक शागिर्द यहाँ पर मौजूद हैं जिन्हें हम सब असजद बनारसी के नाम से जानते हैं। उनका शेर है कि तमाम उम्र का रिश्ता निभा के लौट आए, तमाम उम्र का रिश्ता निभा के लौट आए, हम उसकी कब्र पे कदबा लगा के लौट आए, नई सदी के हुसैनी हैं और क्या करते, इमाम चौक पे आंसू बहा के लौट आए। ये अशार असजद बनारसी के हैं। आप लोग बराह रास्त उनसे समाअत फरमाएं उनका कलाम। असजद बनारसी। एक मतलब एक शेर देखें कि हमारी फिक्र रुस्वा हो रही है, हमारी फिक्र रुस्वा हो रही है, गजल मिसले कसीदा हो रही है, और तुम उसके और हम इसके साथ खुश हैं, तुम उसके और हम इसके साथ खुश हैं, कसम दोनों की रुस्वा हो रही है। बहुत अच्छे, शुक्रिया। हमारी हमारी फिक्र रुस्वा हो रही है, गजल मिसले कसीदा हो रही है, तुम उसके और हम इसके साथ खुश हैं, कसम दोनों की रुस्वा हो रही है। शुक्रिया। बहुत अच्छे। एक मतलब दो शेर और देखें कि चलो माजी से हम इबरत खरीदें, चलो माजी से हम इबरत खरीदें, चलो माजी से हम इबरत खरीदें, बहर सूरत बहर कीमत खरीदें, और सजी है अजनबीयत मेरे घर में, सजी है अजनबीयत मेरे घर में, कहीं मिल जाए तो कुर्बत खरीदें। क्या बात है। सजी है अजनबीयत मेरे घर में, कहीं मिल जाए तो कुर्बत खरीदें, और रकम करनी है शहजादों की सीरत, फिर देखेंगे रकम करनी है शहजादों की सीरत, कनीजों से चलो हैरत खरीदें। रकम करनी है शहजादों की सीरत, शुक्रिया, कनीजों से चलो हैरत खरीदें, और चलो अब फातिहा को फूल लेकर, चलो फातिहा को फूल चलो लेकर, अब फातिहा को फूल लेकर, बहादुर शाह की गुर्बत खरीदें। क्या बात है। शुक्रिया। गजल का हुक्म हुआ है कि तमाम उम्र का रिश्ता निभा के लौट आए, तमाम उम्र का रिश्ता निभा के लौट आए, मतलब है कि तमाम उम्र का रिश्ता निभा के लौट आए, हम उसकी कब्र पे कतबा लगा के लौट आए, तमाम उम्र का रिश्ता निभा के लौट आए, हम उसकी कब्र पे कतबा लगा के लौट आए, और नई सदी के हुसैनी हैं और क्या करते, नई सदी के हुसैनी हैं और क्या करते, इमाम चौक पे आंसू बहा के लौट आए। बहुत अच्छे। शुक्रिया। नई सदी के हुसैनी हैं और क्या करते, इमाम चौक पे आंसू बहा के लौट आए, और कलंदरी पे मेरी तंज कर रहे थे लोग, कलंदरी पे मेरी तंज कर रहे थे लोग, कई चिराग को सूरज बना के लौट आए। वाह। कलंदरी पे मेरी तंज कर रहे थे लोग, कई चिराग को सूरज बना के लौट आए, और क्लासरूम में नफरत पढ़ा रहा था वो, क्लासरूम में नफरत पढ़ा रहा था क्लासरूम वो, में नफरत पढ़ा रहा था वो, तो हम भी अपनी किताबें जला के लौट आए। क्या बात है। क्लासरूम में नफरत पढ़ा रहा था वो, शुक्रिया, क्लासरूम में नफरत पढ़ा रहा था वो, तो हम भी अपनी किताबें जला के लौट आए, और जरूरतों ने कहा जा, अना ने रोक लिया, जरूरतों ने कहा जा, अना ने रोक लिया, जरूरतों ने कहा जा, अना ने रोक लिया, अमीर शहर की चौखट चौखट पे पे जाके जाके लौट लौट आए। आए। शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब। ये थे मोहतरम असजद बनारसी साहब। और आइए बनारस से फिर हम बेंगलोर का रुख करते हैं। बेंगलोर। जी जी जी, कोई बगैर पढ़े कोई नहीं जाएगा, सबको बुलाया जाएगा। तो आइए, हम बेंगलोर में एक तंजीम है बज़्म गालिब, ये 20 सालों से अदबी खिदमात अंजाम दे रही हैं। बहुत खूबसूरत शायर, बहुत अच्छे तरन्नुम से, और न सिर्फ कर्नाटक बल्कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश, बनारस तक ये मुशायरा पढ़ चुके हैं। मैं गुजारिश करता हूँ जनाब शेख हबीब साहब से कि वो अपने कलाम से नवाजें। ये बहुत बीमार थे, अब सेहतयाबी की तरफ गामजन हैं। मैं चाहता हूं कि आप हजरात जरा सा दुआ करें कि ये पूरी तरह सेहतयाब हो और अच्छे से अपना कलाम पेश कर सकें। जनाब शेख हबीब साहब।
हाज़िरीन किराम अस्सलाम वालेकुम। आपकी पाकीज़ा समातों के हवाले एक मतला एक शेर अलग मिजाज के समात करें। मेरे नज़दीक आती नहीं हैं, दूर रहती हैं मुझसे बलाएं। मेरे नज़दीक आती नहीं हैं, दूर रहती है मुझे से बलाएं। घर से चलता हूँ मैं जब भी अपने, साथ चलती है माँ की दुआएं। बहुत खूब हबीब भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। घर से चलता हूँ मैं जब भी अपने, साथ चलती है माँ की दुआएं। शम्ए हक हम जलाते रहेंगे, रोशनी में नहाते रहेंगे। इन मुखालिफ हवाओं से कह दो आके अपना हुनर आजमाए। इन मुखालिफ हवाओं से कह दो आके अपना हुनर आजमाए। आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए एक मतला दो शेर, उसके बाद एक मुख्तसर गज़ल आपकी पाकीज़ा समातों के हवाले। गज़ल का मतला समात करें। हाथ कोई किस्मत से जब खजाना लगता है, हाथ कोई किस्मत से जब खजाना लगता है, ज़हन दिल में खुशियों का शामियाना लगता है। ज़हन दिल में खुशियों का शामियाना लगता है। हाँ हमें मिटाने में देर कुछ नहीं लगती, देर कुछ नहीं लगती। हाँ हमें मिटाने में और फिर बनाने में एक जमाना लगता है, और फिर बनाने में एक जमाना लगता है। अपनी चाहतों की भी चाहता है ये कीमत, अपनी चाहतों की भी चाहता है ये कीमत। सहन इस जमाने का ताजराना लगता है, जहन इस जमाने का ताजराना लगता है। और ये शेर भी समाप्त कर लें। जहन इस जमाने का ताजराना लगता है। तू अगर कहे, तू अगर कहे कुछ दिन मैं कयाम कर लूंगा, मैं कयाम कर लूंगा। तू अगर कहे कुछ दिन
तेरे शहर का मौसम आशिकाना लगता है, तेरे शहर का मौसम आशिकाना लगता है, तेरे शहर का मौसम आशिकाना लगता है। आइए हजरत गजल के कुछ शेर समाप्त कर लें। वो आईने में अगर बन सवर के देखेंगे, क्या बात है। अब आए रवि भाई, बहुत अच्छे। गजल का मतलब समाप्त करें। वो आईने में अगर बन सवर के देखेंगे, तो थोड़ी देर को हम भी ठहर के देखेंगे, तो थोड़ी देर को हम भी ठहर के देखेंगे, वो आईने में। सुना है इसमें खसारा है, बस खसारा है, सुना है इसमें, सारा है। सुना है इसमें खसारा है, बस खसारा है, ये कारोबार वफा फिर भी करके देखेंगे। बहुत अच्छे। ये कारोबार वफा फिर भी करके देखेंगे, ये कारोबार वफा। और ये शेर भी देखें। तेरे ख्याल को दिल में बसाएंगे अपने, तेरे ख्याल को दिल में बसाएंगे अपने, ख्याल को, तेरे ख्याल को दिल में बसाएंगे अपने, तेरे जमाल को आंखों में भर के देखेंगे, तेरे जमाल को आंखों में भर के देखेंगे, तेरे जमाल को। यहाँ की झील का पानी शराब जैसा है, यहाँ की झील का पानी शराब जैसा है, यहाँ की झील का पानी शराब जैसा है, कहो तो इसकी भी तह में उतर के देखेंगे, कहो तो इसकी भी तह में उतर के देखेंगे, कहो तो इसकी भी तह में उतर के देखेंगे। क्या बात है। और शेर आखिर देखें। पड़ा है वास्ता जब, पड़ा है वास्ता जब वक्त के यजीदों से, पड़ा है वास्ता जब वक्त के यजीदों से। तवज्जो का तालिब है, शेर समाप्त करें। पड़ा है वास्ता जब वक्त के यजीदों से, तो ख्वाब किस तरह हम आबे ज़र के देखेंगे, तो ख्वाब किस तरह हम आबे ज़र के देखेंगे, तो ख्वाब किस तरह। गजल का आखिरी शेर समाप्त करें। सुना है खबर पे आएंगे वो दुल्हन बनकर, सुना है खबर पे, सुना है खबर पे आएंगे वो दुल्हन बनकर, ये बात है तो चलो हम भी मर के देखेंगे,
ये बात क्या है बात तो चलो हम भी मर के देखेंगे, ये बात है तो चलो हम भी मर। बहुत बहुत शुक्रिया आपके समातों का, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत गजलों से नवाज रहे थे मोहतरम शेख हबीब साहब। और आइए दोस्तों, आप की मोहब्बतों का एहतराम करते हुए बेंगलोर से मुंबई चला जाए। बहुत खूबसूरत लबो लहजा की शायरा मोहतरमा अलका शरर साहिबा हैं। कुछ दिनों पहले पाकिस्तान से एक वबा चली थी जो शायरात सिर्फ मर्दों को गाली देने का काम करती थी। ये उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, हक बयानी करती हैं। आप उनकी सच्ची और अच्छी शायरी से मुस्तफीज होंगे। समात फरमाएं। अलका शरर साहिबा, मुंबई। बहुत शुक्रिया, आदाब, नमस्ते। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। सबके ही वास्ते दुआ करना, अच्छा होता है यूं शिफा करना। क्या बात है। इसके बावजूद मैं आप सबके रोशन मुस्तकबिल के लिए दुआ करती हूँ। तहत की शायरा हूँ, तहत में ही पढ़ूंगी, इसलिए तरन्नुम के नारे न लगाइएगा। आप तहत में भी पढ़ती हैं तो तरन्नुम का एहसास होता है। बहुत शुक्रिया। आज सदन में बेटियों की संख्या ज्यादा है, उन्हीं के लिए मैं पहले 2-3 शेर पढ़ देती हूँ कि न ये दुश्वारियां होती, न ये दुश्वारियां होती अगर रास्ता बदलती मैं। न ये दुश्वारियां होती, न ये दुश्वारियां होती अगर रास्ता बदलती मैं। तने सर झुक गए होते जरा लहजा बदलती मैं। क्या बात है। न ये दुश्वारियां होती अगर रास्ता बदलती मैं। तने सर झुक गए होते जरा लहजा बदलती मैं। और हिसारे जात से बाहर अगर मैं आ गई होती। हिसारे जात से बाहर, हिसारे जात से बाहर अगर मैं आ गई होती तो अपने जिस्म से कुछ रूह का हिस्सा बदलती। क्या बात है। तो अपने जिस्म से कुछ रूह का हिस्सा बदलती मैं। मेरी बाजी नहीं आई मुकद्दर की विसातों पर। मेरी बाजी नहीं आई मुकद्दर के बिसातों पर। मेरी बाजी नहीं आई मुकद्दर की विसातों पर। अगर मौका मिला होता तो एक मोहरा बदलती मैं। अगर बहुत अच्छे, फिर पढ़िए अलका साहिबा। मेरी बाजी नहीं आई मुकद्दर की विसातों पर। अगर मौका मिला होता तो एक मोहरा बदलती मैं। और गिला हर रोज ही करती रही दुनिया की फितरत का। गिला हर रोज ही करती रही दुनिया की फितरत का। जहां सारा बदल जाता मिजाज अपना बदलती मैं। क्या बात है। जहां सारा बदल जाता मिजाज अपना बदलती मैं। 2-3 शेर ये भी मुलाहिजा फरमाए कि जिसने अक्सर मुझे हराया था। जिसने अक्सर मुझे हराया था। मुझे हराया था मेरे अपने ही डर का साया था। क्या बात है। जिसने अक्सर मुझे हराया था मेरे अपने ही डर का साया था। और सुन सुना कर ही आंख ली कीमत। सुन सुना कर ही आंख ली कीमत। दाम पूरा कहाँ लगाया था। क्या बात है। सुन सुना कर ही आंख ली कीमत, कीमत। दाम पूरा कहाँ लगाया था। और लाख थी उसमें खूबियां फिर भी। लाख थी उसमें खूबियां फिर भी। भीड़ में वो भी बिकने आया था। जिसने अक्सर मुझे हराया था। क्या बात है। मेरे अपने ही डर का साया था। और कुछ अशारिये भी मुलाहिजा फरमाए आप लोगों के मतलब के हैं कि साथ है तन्हाइयों का बदमजा मत कीजिए। साथ है तन्हाइयों का बदमजा मत कीजिए। साथ है तन्हाइयों का बदमजा मत कीजिए। फिर नजर हमसे मिलाकर सिलसिला मत कीजिए। वाह वाह। साथ है तन्हाइयों का बदमजा मत कीजिए। फिर नजर हमसे मिलाकर सिलसिला मत कीजिए। और आपका टूटा जो दिल तो सब नहीं है एक से।
आपका टूटा जो दिल तो सब नहीं है एक से, आप हर एक फर्द को यूं मुब्तला मत कीजिए। क्या बात है। आप हर एक फर्द को यूं मुब्तला मत कीजिए। और दिल से दिल को है तलब तो मत रखो इसका हिसाब। वाह। दिल से दिल को है तलब तो मत रखो इसका हिसाब। यार की यारी में तो घाटा नफा मत कीजिए। वाह। यार की यारी में तो घाटा नफा मत कीजिए। साथ है तन्हाइयों का बदमजा मत कीजिए। और दो तीन शेर ये भी जी मुलाहिजा फरमाए इरशाद। कि तेरी अंजुमन से उठकर बड़ी दूर आ गए हम। तेरी अंजुमन से उठकर बड़ी दूर आ गए हम। तेरी अंजुमन से उठकर बड़ी दूर आ गए हम। अभी तुझ में हम है बाकी, यूं गए तो क्या गए हम। वाह 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 वाह, अभी बहुत अच्छे। फिर पढ़ दीजिए। बहुत खूब। तेरी अंजुमन से उठकर बड़ी दूर आ गए हम। अभी तुझ में हम है बाकी, यूं गए तो क्या गए हम। और तुझे भूलने का दावा हमें तब लगा है झूठा। तुम्हें भूलने का दावा हमें तब लगा है झूठा। सुना नाम जब तुम्हारा वहीं सक पका गए हम। क्या बात है। सुना नाम जब तुम्हारा वहीं तक पका गए। वहीं सक पका गए हम। और तेरा हाथ थाम कर ही हमें चलने की थी आदत। तेरा हाथ थामने की। तेरा हाथ थाम कर ही हमें चलने की थी आदत। चले दो कदम जो तुम बिन वहीं लड़खड़ा गए क्या हम। बात है, क्या बात। चले दो बहुत खूब। कदम जो तुम बिन वहीं लड़खड़ा गए हम। या हवा को तोहमतें दें या दियों पे रखते पहरे। या हवा को तोहमतें दें या दियों पे रखते पहरे। जिन्हें आंधियों का डर था वो दिए बुझा गए हम। क्या बात है। जिन्हें आंधियों का डर था वो दिए बुझा वो गए। दिए बुझा गए हम। सरे राह हम खड़े हैं हुए दोनों हाथ खाली। सरे राह हम खड़े हैं। सरे राह हम खड़े हैं हुए दोनों हाथ खाली। कहाँ कारवा लुटाया कहाँ धोखा खा गए हम। वाह। कहाँ कारवा लुटाया कहाँ धोखा खा गए हम। और ये दो तीन शेर ये भी उसके बाद ज़हमत तमाम कि इश्क में कोई तिजारत का मसौदा ही नहीं। इश्क में इश्क में कोई कोई तिजारत तिजारत का का। मसौदा ही नहीं। और यूं भी न था कि ये कहीं बिकता ही नहीं। इश्क में कोई तिजारत का मसौदा ही नहीं। और यूं भी न था कि ये कहीं बिकता ही नहीं। और दर्द फरियाद भी क्या करता लबों पर आकर। दर्द फरियाद भी क्या करता लबों पर आकर। उससे हमने कभी नजरों को मिलाया ही नहीं। वाह। उससे हमने कभी नजरों को मिलाया ही नहीं। और रात भर तेरी ही तस्वीर पर सर था मेरा। रात भर तेरी ही तस्वीर पर सर था मेरा। मेरी आंखों ने तेरा ख्वाब दिखाया ही नहीं। वाह। मेरी आंखों ने तेरा ख्वाब दिखाया ही नहीं। और रूठने वाला वो किस हाल में होगा जाने। रूठने वाला वो किस हाल में होगा जाने। एक मुद्दत से उसे हमने मनाया ही नहीं। वाह। रूठने वाला वो किस हाल में होगा जाने। एक एक मुद्दत मुद्दत से उसे हमने हमने मनाया। मनाया ही नहीं। उसको मिलने का सलीका तो नहीं आता था। उसको मिलने का सलीका तो नहीं आता था। उसको मिलने का सलीका तो नहीं आता था। हाय ये क्या कि बिछड़ने का सलीका ही नहीं। क्या बात है। हाय ये क्या कि बिछड़ने का सलीका ही नहीं। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब, माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत कलाम से नवाज रही थी मोहतरमा अलका शरर साहिबा। और हजरात, आपने जिन मोहब्बतों से बाहर वालों को सुना है, मुझे उम्मीद है कि आप अपने को भी उसी तरह सुनेंगे। मेरी मुराद है डॉक्टर अरशद जमाल सारिम साहब से, जो अपने कलाम से हम सबको नवाजे। बहुत शुक्रिया हाजरीन। मुझे इस बात का इल्म है कि लज्जत कामो दहन के इंतज़ार में आपकी समाअतें थक रही हैं, लेकिन चूंकि मेहमान हमारे दरमियान मौजूद है, बस चंद ही लोग रह गए हैं, थोड़ा और सब्र का मुजाहिरा करें तो इंशाल्लाह खाने का जायका मजीद बढ़ जाएगा। सब्र का बिल्कुल मुजाहरा मत करिए, दादो तहसीन से नवाजिए।
कुछ अशार मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं। मोहब्बत में हमारी काश एक ऐसा भी आलम हो, मोहब्बत में हमारी काश एक ऐसा भी आलम हो, मेरी आंखों में दरिया हो, तेरे होठों पे जमजम हो। क्या बात है। मोहब्बत में हमारी काश एक ऐसा भी आलम हो, मेरी आंखों में दरिया हो, तेरे होठों पे जमजम हो। सरहदे जां में जो एक आलमे हू ठहरा है, सरहदे जां में जो एक आलमे हू ठहरा है, मेरे मैखारे मोहब्बत को सुबह ठहरा है, मेरे मैखारे मोहब्बत को सुबह ठहरा है। और ये शेर देखें कि एक खयाबार सरापा था निगाहों का नसीब, एक खयाबार सरापा था निगाहों का नसीब, आज तक मेरी बसारत का वजू ठहरा है। एक एक हयाबार सरापा था निगाहों का नसीब, आज तक मेरी बसारत का वजू ठहरा है। और अब ठहरती ही नहीं मुझ में कोई गर्दे मलाल, अब ठहरती ही नहीं मुझ में कोई गर्दे मलाल, दिल के आईने में जिस रोज से तू ठहरा है। अब ठहरती ही नहीं मुझ पे कोई गर्दे मलाल, दिल के आईने में जिस रोज से तू ठहरा है। ये शेर देखें कि कफसे जां से थी दुश्वार रिहाई मेरी, कफसे जां से थी दुश्वार रिहाई मेरी, बांध रखी थी मोहब्बत ने कलाई मेरी। कफसे जां से थी दुश्वार रिहाई मेरी, बांध रखी थी मोहब्बत ने कलाई मेरी। और सरे सहरा जहां थम जाते हैं वहशत के कदम, सरे सहरा जहां थम जाते हैं वहशत के कदम, रक्स करती है वहां आबला पाई मेरी, रक्स करती है वहां आबला पाई मेरी। और शेर देखें कि ख्वाब कुछ आंख की दहलीज पे धर जाते हैं, ख्वाब कुछ आंख की दहलीज पे धर जाते हैं, और हम रात के मलबे में उतर जाते हैं। ख्वाब कुछ आंख की दहलीज पे धर जाते हैं, और हम रात के मलबे में उतर जाते हैं। ये शेर देखें कि एक पहलू भी मुकम्मल नहीं होने पाता, एक पहलू भी मुकम्मल नहीं होने पाता, जिंदगी हम तेरी तौजीह में मर जाते हैं। एक पहलू भी मुकम्मल नहीं होने पाता, जिंदगी हम तेरी तौजीह में मर जाते हैं। और मैं अभी अपनी तरफ पांव बढ़ाता भी नहीं, मैं अभी अपनी तरफ पांव बढ़ाता भी नहीं, रास्ते नित नए खदशात से भर जाते हैं, रास्ते नित नए खदशात से भर जाते हैं। और ये शेर देखें कि तू तो वाकिफ है, उसे सोचने बैठूं भी अगर, तू तो वाकिफ है, उसे सोचने बैठूं भी अगर, मेरे जिब्रीले तखय्युल तेरे पर जाते हैं। तू तो वाकिफ है, उसे सोचने बैठूं भी अगर, मेरे जिब्रीले तखय्युल तेरे पर जाते हैं। और एक गजल के कुछ अशार की, रात के हाथ पे रखा गया छाला मुझको, रात के हाथ पे रखा गया छाला मुझको, सुबह करती है बसत शौक दोशाला मुझको। और होता रहता हूं मैं खुद अपने मकीनों का शिकार, होता रहता हूं मैं खुद अपने मकीनों का शिकार, एक अजब फिक्र लगा बैठी है ताला मुझको। होता रहता हूं मैं खुद अपने मकीनों का शिकार, एक अजब फिक्र लगा बैठा हूं ताला मुझको। और हामिद भाई के लिए ये शेर कि अब लुटाते हैं वही कासनी लहजों, अब लुटाते हैं वही कासनी लहजों के गुलाब, जिनके अल्फाज थे जख्मों का हवाला मुझको। अब लुटाते हैं वही कासनी लहजों के गुलाब, जिनके अल्फाज थे जख्मों का हवाला मुझको। और ऐसा जुल्मात का आदी हूं कि डर जाता हूं, ऐसा जुल्मात का आदी हूं कि डर जाता हूं, गर कभी छू के गुजर जाए उजाला मुझको।
ऐसा जुल्मात का आदी हूं कि डर जाता हूं, गर कभी छू के गुजर जाए उजाला मुझको। और आखिरी शेर शेरवानी सर के नाम। शक्लन अगर कोई शायर नजर आ रहा है तो आप हैं। आप आपके खिदमत में कि झूलता मैं भी बसद शान सरे शाखे हवा, झूलता मैं भी बसद शान सरे शाखे हवा, वक्त करता जो तेरे कान का बाला मुझको। हाजरीन, बस 2 या 3 हमारे फहरिस्त में 2 या 3 शुरका और रह गए हैं। अभी अभी तक हम मोहतरम जनाब गुफरान अमजद साहब से उनकी निजामत समात कर रहे थे। आपने महसूस किया बंगलोर की अदबी फ़ज़ा का सबसे ज़िम्मेदार शख्स अगर कोई है तो वो गुफरान अमजद साहब हैं। मैं वक्त की किल्लत है वरना मैं बहुत कुछ उनके हवाले से कहता। मैं एक शेर से आपको दावत दे रहा हूँ कि उस कम सुखन की बात के पहलू हज़ार हैं, उस कम सुखन की बात के पहलू हज़ार हैं, गालिब की गुफ्तगू है तो लहजा है मीर का। आपके हुजूर मोहतरम गुफरान अमजद बेंगलोरी साहब। साहब से इजाजत चाहते हैं। डायरेक्टर साहब, सदर मोहतरम और ये इदारा और मेरा मतला, मुझे फरमाया कि आंख देते हैं कान देते हैं, आंख देते हैं कान देते हैं, पत्थरों को जबान देते हैं। आंख देते हैं कान देते हैं, पत्थरों को जबान देते हैं। और एक शेर मुझे फरमाया कि खूं पसीने में डूब कर मजदूर, खूं पसीने में डूब कर मजदूर रोटी कपड़ा मकान देते हैं। क्या बात है। खूं पसीने में डूब कर मजदूर रोटी कपड़ा मकान देते हैं। और उनको मेरा सलाम है जो लोग, उनको मेरा सलाम है जो लोग सरहदों को जवान देते हैं। उनको मेरा सलाम है जो लोग सरहदों को जवान देते हैं। और एक शेर मुबारक फरमाए कि हम जो रहते हैं शहर में उनके, हम जो रहते हैं शहर में उनके लम्हा लम्हा लगान देते हैं। हम जो रहते हैं शहर में उनके लम्हा लम्हा लगान देते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। हम जो रहते हैं शहर में उनके लम्हा लम्हा लगान देते हैं। और शेर मुजाहरा फरमाए कि मस्जिद इश्क में बराए नमाज, मस्जिद इश्क में मस्जिद इश्क में बराए नमाज चल मुअज्जिन अजान देते हैं। वाह 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 वाह। मस्जिद इश्क में बराए नमाज चल मुअज्जिन अजान देते हैं। और इसका मक्ता भी समाप्त फरमा लें तमाम हजरात की नजर कि वो तकल्लुफ में गर्क हैं अमजद, वो तकल्लुफ में गर्क वो हैं तकल्लुफ में गर्क हैं अमजद, हम मोहब्बत में जान देते हैं। वो तकल्लुफ में गर्क हैं अमजद, हम मोहब्बत में जान हम देते हैं। मोहब्बत में जान देते हैं, हम मोहब्बत में जान देते हैं। एक गजल के 4-5 शेर आप रहमत सबको तमाम। हौसला मिल रहा है कि इस उम्र में भी मोहब्बत की जा सकती है। जोरदार तालियों से नवाजें हमजा साहब को। बल्कि मोहब्बत इसी उम्र में की जाती है। बेशक। मतलब हाजिर करता हूँ। जी करम देखें, करें, करम करें। जी जी बिल्कुल। और ये इदारा ऐसा है कि इस उम्र में भी कुछ करने के लायक बना देता है। मुजादर फरमाए मतला, कौन आया, कौन आया मेरी अदावत में, वाह, कौन आया मेरी अदावत अदावत में, सब खड़े हो गए अदालत में। हाय 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 हाय। कौन आया मेरी अदावत में, सब खड़े हो सब गए खड़े अदालत में। हो गए अदालत में। और शेर मुजादर फरमाए सिक्के हुस्न मत उछाल यहाँ, हाय 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 हाय। सिक्के हुस्न मत उछाल। वाह, सिक्के हुस्न मत उछाल यहाँ,
हम नहाए हुए हैं दौलत में। वाह 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 वाह। हम नहाए हुए हैं दौलत में। यहाँ हम नहाए हुए हैं दौलत में, हम नहाए हुए हैं दौलत में। एक शेर रात तमाम हजरात देखे कि आयते इश्क दिल में उतरेगी। आहा 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 आहा। आयते इश्क दिल में उतरेगी, आप हैं शायरों की सोहबत में। वाह 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 वाह। अगर भाई फिर पढ़े वाह 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 वाह। जिंदाबाद जी हाजिर। भाई, जोरदार तालियों से एक बार इस्तकबाल करें। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। आयते इश्क दिल में उतरेगी, आप हैं शायरों की सोहबत में, आप हैं शायरों की सोहबत में। एक शेर देख लें कि उनके चेहरे चमकते रहते हैं। अच्छा है। उनके चेहरे चमकते चमकते रहते रहते हैं, जो मुलविस नहीं है गीबत में। जो मुलविस नहीं है गीबत में। वाह उनके वाह चेहरे वाह 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 वाह। चमकते रहते हैं, वाह 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 वाह। जो मुलविस नहीं है गीबत में, जो मुलविस नहीं है गीबत में। और शेर नजर फरमाए कि रहनुमाए वतन तेरे पीछे, रहनुमाए वतन तेरे पीछे, कौम कब तक रहेगी जुल्मत में? कौन कब तक रहेगी? रहनुमाए वतन तेरे पीछे, वाह 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 वाह। कौम कब तक रहेगी जुल्मत में। और आखिरी शेर मिजाज फरमा लें जी करम करें कि सबको आसान लग रही है गजल, आहा आहा। सबको आसान लग रही है गजल। सबको आसान लग रही है गजल, यार मुश्किल है इस सहूलत में। वाह 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 वाह। सबको आसान लग रही है गजल, यार मुश्किल है इस सहूलत में। और गालिब का एक मिसरा बहुत मशहूर है कि है खबर गर्म उनके आने की। आहा। सबको आसान लग रही है गजल, यार मुश्किल है इस सहूलत में। और है खबर गर्म उनके आने की, है खबर गर्म उनके आने की, हम भी अमजद हैं आज फुर्सत में। वाह वाह है वाह खबर गर्म उनके आने की, हम भी अमजद हैं आज फुर्सत में। कौन आया मेरी अदावत में, सब खड़े हो गए अदालत में। बहुत शुक्रिया हजरात। और आज के मुशायरे में एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे शायर हम सब की खुशकिस्मती का बाइस बने हैं जो यहाँ मौजूद हैं, डॉक्टर सुनील पवार वारी साहब। आपका ताल्लुक देवबंद से है, लेकिन कर्नाटक सरकार में वो सेक्रेटरी के ओहदे पर फायज हैं। और कभी मैसूर, कभी गुलबर्गा, कभी बेंगलोर। बड़े मेहनती शख्स हैं, बड़े ईमानदार शख्स हैं, और उनकी ईमानदारी उनकी शायरी में आपको नज़र आएगी। मैं गुजारिश करता हूँ डॉक्टर सुनील पवार साहब वारी से वो आएँ और अपने कलाम से हम सबको नवाजें। आज के मेहमान खुसूसी डॉक्टर सुनील पवार साहब। सदर साहब, बहुत ही अच्छा आप सुन रहे हैं। और यहाँ पर मैं भी अब बिना किसी लाग लपेट के एक दो गजलों से एक दो शेर और एक दो मतले मैं आपको सुनाता हूं। देखिए कि सच्चा हूं, जी 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 मैं जी, सच्चा हूं या केवल सच्चा लगता हूं, आहा। सच्चा हूँ सच्चा या केवल हूं सच्चा लगता या हूँ। केवल सच्चा लगता हूं, गौर से देखो शायद अच्छा लगता हूं। वाह 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 और वाह अम्मी, वाह वाह वाह। गौर से देखो। सच्चा हूं या केवल सच्चा लगता हूं, गौर से देखो शायद अच्छा लगता हूं। अम्मी जिस शीशे में कंघी करती, हाय 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 हाय। बहुत अच्छा शेर है, अम्मी सुनिएगा। जिस शीशे में कंघी करती थी, उस शीशे में आज भी बच्चा लगता। वाह 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 वाह। अरे वाह 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 दोस्तों, डॉक्टर एक साहब और जिंदाबाद। शेर के जी 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 जी, बहुत बढ़िया कि अम्मी जिस शीशे में कंघी करती थी, उस शीशे में आज भी बच्चा लगता हूं। और देखिए कि कैसे कैसे मंजर होंगे, किस किस को समझाओगे।
कैसे कैसे मंजर होंगे, किस किस को समझाओगे, उसके सर पर हाथ रखोगे, कसमें मेरी खाओगे। कैसे कैसे मंजर होंगे, किस किस को समझाओगे, उसके सर पर हाथ रखोगे, कसमें मेरी खाओगे। पूरी बात तो सुनकर जाते, ऐसी भी क्या जल्दी थी। अच्छा, पूरी बात तो सुनकर जाते, ऐसी भी क्या जल्दी थी। जिस पत्थर से मैं टकराया, तुम भी जा टकराओ। वाह 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 और एक वाह। मतलब अक्षर देखिए कि ये जो तुमसे अदब से मिलते हैं, ये जो तुमसे अदब से मिलते हैं, जब से कुर्सी है तब से मिलते हैं। ये जो तुमसे वाह 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 वाह। डॉक्टर साहब कमाल है। वाह 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 वाह। भाई एक बार फिर से दो तालियां बजाते रहे। वाह 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 वाह। ये जो तुमसे कमाल है डॉक्टर साहब, अदब से मिलते हैं, कितना सच्चा शेर है। वाह 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 जब वाह। से कुर्सी है तब से मिलते हैं। तुमको तुमको लगता है तुम करीबी हो, तुमको लगता तुमको है तुम करीबी लगता हो। है तुम करीबी हो, वो तो ऐसे ही सबसे मिलते हैं। वो तो ऐसे ही सबसे मिलते हैं। वाह 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 वाह। और देखिए वाह, दोस्तों वाह, वाह, के वाह, वाह। इतना झुककर, इतना झुककर नहीं मिलेंगे तुम्हें, इतना झुककर नहीं मिलेंगे तुम्हें। इतना झुककर तो रब से मिलते हैं, इतना झुककर तो रब से मिलते हैं। जी 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 बहुत अच्छा। वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो कहा था कि यहाँ उन्होंने एक शेर की मुझे हुक्म दिया है जी, करम अफजल करें। साहब ने कि यहाँ जो भी अकड़ कर चल रहा है, यहाँ जो भी अकड़ कर चल रहा है, किसी कांधे पे चढ़ कर चल रहा है। यहाँ 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 जो भी अकड़ कर चल रहा है, किसी कांधे पे चढ़कर चल रहा है। वो बच्चा, वो बच्चा जिसको तुम कहते हो किस्मत, वो बच्चा जिसको तुम कहते हो किस्मत, मेरी उंगली पकड़ कर चल, पकड़ कर चल रहा है। वाह 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 वाह। देखिए कि नजर आधी खुली का क्या करोगे, नजर आधी खुली का क्या करोगे, तुम इतनी रोशनी का क्या करोगे। वो अपने आंसुओं को पोंछ लेगी, वो अपने आंसुओं को पोंछ लेगी। तुम अपनी शायरी का क्या करोगे, तुम अपनी शायरी का क्या करोगे। क्या कहने। वाह 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 वाह। जी जी, वो अपने आंसुओं को पोंछ लेगी, तुम अपनी शायरी का क्या करोगे। और देखिए क्या पिक्चर बनती वैसे है डॉक्टर कि साहब का इशारा मेरी तरफ था आंसू पोंछने पर। जोरदार तालियां बजाएं मेरे लिए और डॉक्टर साहब दोनों के लिए भी। वो सूखा फूल माँ फिर फेंक आई, वो सूखा फूल माँ फिर फेंक आई। तो अब इस डायरी का क्या करो, तो अब इस डायरी का क्या करो। वाह 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 वाह। देखिए कि दो शेर के सब कुछ भूल चुका है लेकिन, सब कुछ भूल चुका है लेकिन, ये तो अब तक करता है। सब कुछ भूल चुका है लेकिन ये तो अब तक करता है। उसका नाम अगर सुन ले तो सीना धक धक करता है। सब कुछ भूल चुका है लेकिन ये तो अब तक करता है। उसका नाम अगर सुन ले तो सीना धक धक करता है। अब समझा मैं नजरों की सरगोशी का बाइस सबकी, अब समझा मैं नजरों की सरगोशी का बाइस सबकी। आंख तुम्हारी चुप रहती हैं, चश्मा बकबक करता है। आंख तुम्हारी चुप रहती हैं, चश्मा बकबक करता है। और सारे मेरी जाके दुश्मन बिस्तर में आ बैठे हैं, सारे मेरी जाके दुश्मन, सारे मेरी जाके दुश्मन बिस्तर में आ बैठे हैं। पायल चुप भी हो जाए तो कंगन नाटक करता है। पायल चुप भी हो जाए तो कंगन नाटक पायल करता है। जवाब नहीं डॉक्टर साहब। वाह 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 वाह। जी जी बहुत शुक्रिया। सारे मेरी जाके दुश्मन बिस्तर में आ बैठे हैं, पायल चुप भी हो जाए तो कंगन नाटक करता है। अच्छा अभी जो है एक ये देखिए कि वो
वो जो मरहम था उसे उसके ठिकाने रख दिया। वाह वो जो मरहम था उसे उसके ठिकाने ठिकाने रख रख दिया। आपके रूमाल को हमने सुखाने रख दिया। वाह और अब तुझे तकलीफ क्या देनी फरिश्ते मौत के, आहा अब तुझे तकलीफ क्या देनी फरिश्ते मौत के, हमने अपनी रूह को अपने सिरहाने रख दिया। वाह वाह हमने वाह वाह अपनी वाह रूह को अपने मौत के सिरहाने रख सिरहाने दिया। रख दिया। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कि देखिए कि दरवाजे हिलते हैं सारे, सांकल तोड़ के रखी है। दरवाजे हिलते हैं सारे, सांकल तोड़ के रखी है, अपनी पहरेदारी तुमने किस पर छोड़ के रखी। हाय हाय दरवाजे हिलते हैं सारे, वाह सांकल वाह तोड़ वाह के वाह रखी है, अपनी अपनी पहरेदारी पहरेदारी तुमने किस पर छोड़ के रखी है। तुमको ये भी तय करना है, याद हूं मैं के भूल गए। आहा तुमको ये भी तय करना है, याद हूं मैं के भूल गए। मेज पे मेरी फोटो तुमने आधी मोड़ के, मेज पे मेरी फोटो तुमने आधी मोड़ के रखी है। वाह 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 दोस्तों, एक गजल से एक दो शेर और एक और गजल, फिर मैं अपनी जगह लूंगा कि पढ़ते रहिए डॉक्टर साहब। तुम्हें तुम्हें सारा जमाना चाहिए था, तुम्हें सारा जमाना चाहिए था। तुम्हें सारा जमाना चाहिए था, ये सब पहले बताना चाहिए था। तुम्हें सारा जमाना चाहिए था, वाह 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 ये वाह सब वाह वाह पहले बताना चाहिए था। वाह 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 और बहुत पहले के सारे फैसले थे, आहा बहुत पहले के सारे फैसले सारे थे, फैसले। उसे बस एक बहाना चाहिए था, उसे बस एक बहाना चाहिए था। बहुत अच्छा है डॉक्टर साहब, बहुत और बहुत वाह वाह क्या तेरी अच्छे शेर सुना रहे आंखें, हैं। तेरी आंखें भले ही खुश्क रहती, हाय तेरी आंखें भले ही खुश्क रहती, किनारा भीग जाना चाहिए था, हाय किनारा भीग जाना चाहिए था। और मुझे मुझे शिद्दत बढ़ानी चाहिए थी, मुझे मुझे शिद्दत बढ़ानी बढ़ानी चाहिए चाहिए। थी, तुम्हें भी मान जाना चाहिए, बाय तुम्हें भी मान जाना। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, 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 जी। एक छोटी बहर की एक गजल और मैं अपनी जगह लूंगा कि देखिएगा कि हम सफर हम सफर अच्छा लगेगा, हम सफर अच्छा लगेगा, बात कर अच्छा लगेगा। हम सफर अच्छा लगेगा, बात कर अच्छा लगेगा, उससे कहना खुश हूं उसको, उससे कहना खुश हूं उसको, जानकर अच्छा लगेगा, जानकर अच्छा लगेगा। रंग रंग हल्का हो या गहरा, रंग हल्का हो या गहरा, आप पर अच्छा लगेगा, आप पर अच्छा लगेगा। और देखिए कि आप पर अच्छा लगेगा। और प्यार में ऐ मिटने वाले, प्यार में ऐ मिटने वाले, प्यार कर अच्छा लगेगा। क्या बात है, बहुत खूब। बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज के बहुत ही ज़हीन सामीन को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। देखिए, कुछ लोगों को भूख भी लगी है और ये खाने का सारा इंतजाम सदर मोहतरम के हाथ में है। अब ये उनकी जिम्मेदारी कि वो आप लोगों को कितना इंतजार करवाते हैं। क्योंकि अब उन्हीं की बारी है, मैं चाहता हूं कि वो अपने तासुरात और अपने कलाम से हम सबको सरफराज फरमाएं। मोहतरम प्रोफेसर आबिद अली अंसारी साहब से गुजारिश है कि वो अपने तासुरात और अपने कलाम से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम। अब तक हमसे हमसे इजाज़त ले रहे थे, अब हम आपसे इजाज़त लेना चाहते हैं। एक दो शेर सुनिए पहले, फिर रोटियां जलाएंगे। मोहब्बत उनसियत उल्फत सभी से हो नहीं मुमकिन,
मोहब्बत उनसियत उल्फत सभी से हो नहीं मुमकिन, यह अलकाब कुर्बत मुख्तसर मखसूस होते हैं। यह अलकाब कुर्बत मुख्तसर मखसूस होते हैं, जिन्हें आंखों की पलकों में बसा कर रख लिया मैंने। जिन्हें आंखों की पलकों में बसा कर रख लिया मैंने, गो उनकी याद भी आ जाए तो महसूस होते हैं। गो उनकी याद भी आ जाए तो महसूस होते हैं। एक गजल के चंद अशार इरशाद। उनकी तस्वीर निगाहों में उतर जाने दो, गेसुए शब को शानों पे बिखर जाने दो। आसमां से भी सितारों की ज़िया आएगी, शाम का वक्त है कुछ रात गुजर जाने दो। शाम का वक्त है कुछ रात गुजर जाने दो। वक्त दीदार भला इससे हंसी क्या होगा। वक्त दीदार भला इससे हंसी क्या होगा। अय बहारों उन्हें हर तरह संवर जाने दो। अय बहारों उन्हें हर तरह संवर जाने दो। गुल से इजहार मोहब्बत पे कोई रोक नहीं। गुल से इजहार मोहब्बत पे कोई रोक नहीं। तितलियों तुम जरा कलियों को निखर जाने दो। तितलियों तुम जरा कलियों को निखर जाने दो। जिंदगी है तो मराहिल, मक्ते का शेर है कि जिंदगी है तो मराहिल भी बहुत हैं आबिद। जिंदगी है तो मराहिल भी बहुत हैं आबिद। मरहले मरहले होते हैं गुजर जाने दो। मरहले मरहले होते हैं गुजर जाने दो। उनकी तस्वीर निगाहों में उतर जाने दो। गोया अभी मजाया गजल का ये हजल है, मांग की गई है, लेकिन आपको हमें ये भी सोचना है कि भाई हमें घर भी जाना है। और ये जो मजाया गजल जो है वो शादी से पहले लिखी थी। शुक्रिया। नहीं, वो खौफ बोल रहा है। आप अपने एहसास की अक्कासी कर रहे हैं। एक मुसीबत है मेरे सर से न टलने के लिए। एक मुसीबत है मेरे सर से न टलने के लिए। कह दो रुक जाओ तो तैयार है चलने के लिए। कह दो रुक जाओ तो तैयार है चलने के लिए। दाल कच्ची थी गलाने को कहा था उसे। दाल कच्ची थी गलाने को कहा था उससे। रख दिया चूल्हे पे कम वक्त ने जलने के लिए। रख दिया चूल्हे पे कम वक्त ने जलने के लिए। चुप गए जाके हलक में मेरे कांटे दुश्मन। चुप गए जाके हलक में मेरे कांटे दुश्मन। मछलियां किसने कहा था तुझे तलने के लिए। मछलियां किसने कहा था तुझे तलने के लिए। और रोटियां तुम न जलाओ। रोटियां तुम न जलाओ मुझे कच्ची दे दो। दिल ही काफी है तेरे याद में जलने के लिए। जबरदस्त। क्या कहने सर। रोटियां तुम न जलाओ मुझे कच्ची दे दो। दिल ही काफी है तेरे याद में जलने के लिए। धुल और या खुदा गैर को भी ऐसी न बीवी देना। या खुदा गैर को भी ऐसी न बीवी देना जिसके हर काम हो जज्बात मसलने के लिए। हाथ मक्ते का शेर है कि हाथ बेसिन पे कभी धोना जो चाहूं आबिद। हाथ बेसिन पे कभी धोना जो चाहूं आबिद। रख दिया ढेर सा बर्तन वहीं मलने के लिए। रोटियां तुम न जलाओ मुझे कच्ची दे दो। एक गजल के चंद शेर। हम पे रहम करें। कोई बात नहीं है। इश्क व मोहब्बत प्यार की बातें। इश्क व मोहब्बत प्यार की बातें ये झूठे सौगात नहीं। बहती नदियां रुक जाती है रुकते ये जज्बात नहीं। इश्क मोहब्बत प्यार की बातें ये झूठे सौगात नहीं। बहती नदियां रुक जाती है रुकते ये जज्बात नहीं। हमने तुझे हर रंग में चाहा। हमने तुझे हर रंग में चाहा हर एक फूल की खुशबू में। याद तेरी मुझको ना आई कौन से वो लम्हात नहीं कि मेरे लबों से रूठे तबस्सुम फिर भी वो ये कहते हैं एक जरा सा दिल टूटा है और तो कोई बात नहीं।
नदियां गुलशन गुंचा गुंचा सब ही तेरे कायल हैं, तेरे साथ की मदहोशी में गाय क्या नगमात नहीं। तेरी नजर का मैं तालिब हूं, दिल चाहे तो अपना ले, टूट के आबिद भीगी पलके कौन सी वो बरसात नहीं। टूट के आबिद, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया हाजरीन, आपका बहुत शुक्रिया। सारी चीजें मुशायरा अपने इख्तिताम को पहुंचता है। एक रस्म बाकी रह गई थी। हमें मालूम है कि एनईबीएच को या इंस्टीट्यूट को हमारे एनईबीएच तक अप्रूवल दिलाने में डॉक्टर मोहम्मद आजम साहब का बहुत बड़ा किरदार रहा है। एक सर्टिफिकेट पेश की गई थी लेकिन उनका मोमेंटो रह गया था। मैं चाहता हूं कि आज की इस महफिल के मेहमान खुसूसी के हाथों वो मोमेंटो आपको पेश किया जाए, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप तशरीफ लाएं। हाँ, सर सर आप क्या बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। हाजरीन, चंद शायर हैं जो इस शहर में मिल बैठते हैं, चंद शायर हैं जो इस शहर में मिल बैठते हैं, वरना लोगों में वो नफरत है कि दिल बैठते हैं। आज का ये मुशायरा इख्तिताम पजीर हुआ। मैं सबसे पहले तो हमारे डायरेक्टर मोहतरम साहब का शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें ये इजाज़त मरम्मत फरमाई कि हम इस मुशायरे को मुनक्किद कर सकें। मैं बज़्म उर्दू के सेक्रेटरी जनाब गुफरान अमजद और उनकी पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि बहुत मुख्तसर सी दावत पर वो अपनी टीम के साथ इतना खूबसूरत मुशायरा उन्होंने मुनक्किद किया। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। तलबा व तालिबात का शुक्रगुजार हूँ जो दिलजमई के साथ यहाँ आखिर तक डटे रहे। उन्होंने अपने भरपूर अंदाज में शोरा की हौसला अफजाई की, उन्हें दाद तहसीन से नवाजा। मोहतरम सदर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने न सिर्फ ये कि मुशायरे के दौरानिए को बढ़ाया बल्कि बहुत ही अपनी टीम को, जो लोग वहाँ इस बात का तकाजा कर रहे थे कि जल्द से जल्द जो है वो ताम का सिलसिला शुरू किया जाए, उनको जो है वो इस बात पर आमादा रखा कि वो थोड़ी देर के लिए उसको मौखर कर सके। बहरहाल एक बार फिर तमाम लोगों का शुक्रिया। आप सभी लोगों से दरख्वास्त है कि हम तामगाह की तरफ जो है तशरीफ़ ले चलें।